Pretty, right? তাই তো বলি স্কিন এত সুন্দর কেন? Thanks, but normal tea. এখন নিশ্চয়ই পার্লারে না, ডিরেক্ট পার্টিতে। সবাই তো জিরাস হবি। রিভাইভ ময়শ্চারাইজিং লোশন, ডাবল ময়শ্চারে ডাবল কেয়ারে বিউটিফুল স্কিন। রিভাইভ ময়শ্চারাইজিং লোশন। বিকাশে ক্যাশ আউট চার্জ করছে আর সেন্ড মানি তো ফ্রি। In a row for Tim Southee, a little bit of fortune again for Butler. Big area is the Abu Dhabi ground, and it'll put a premium on the fielding and athleticism in the fielding. And New Zealand are the best outfit that I've seen in this tournament so far. Some of their catching, some of their groundwork, their speed. This is quite brilliant from Daryl Mitchell against Afghanistan. And throughout the competition they have excelled. Straight down the ground, got that one pretty well to Bairstow. Couple of bounces into the boundary for 4. Yeah, first signs of real aggression from Bairstow and first signs of a bit of timing. He's just been searching for it. Maybe a slightly slower ball or a three-quarter ball from Southee. And he's just clubbed this back over his head. To bowl 3 in a row in the power play. Batters have certainly got their rhythm, they've seen what you've got. The ball has stopped swinging, it's not easy. It's going down. Talked of New Zealand's brilliance in the field throughout this competition. Stats guys rating that they're top of the pile for runs saved in the outfield. Players with great hands. We saw that catch from Jimmy Neesham. Martin Guptill, wonderful, has been for so long in the field. Protection back there now for Tim Southee. Deep square leg and a long on. But a good start for England. One thing the teams have done poorly, batting first in general, has been lose wickets inside the power play. So far, so good from an England point of view. First time that Tim Southee's operated with 3 overs inside the power play. He's played 87 T20 internationals and done it 7 times. What about those outfits? They're on a spying mission, those boys, ahead of a potential final. Just a little punch to mid off. Single off the last ball for 37 without loss. ডেলিভারি নেওয়ার পরই লাইফ বয় হ্যান্ডওয়ার দিয়ে হাত ধরে থাকুন সুরক্ষায় 10-এ 10। দাঁতের শিরশির অনুভূতি থেকে আরাম পেতে ডেন্টিস্টরা সেন্সোডাইন ব্যবহারের পরামর্শ দেন। একদম চাঙ্গা। Well, it may have been a slightly nervy start from England's point of view with the bat, but so far so good. 37 on the board, and that is a very, very strong batting lineup, even without Jason Roy.
not too surprised that Bairstow was promoted up the order. There might have been a little bit of worries amongst England fans as to whether or not they could take advantage of the power play. But so far, going at just over 7 to the over. Not a bad start. After an expensive over from Trent Boult, we're now going to see a change in the bowling. Le Monde, how will he go on the surface of his extra pace? And just a bit of movement behind the bowler's arm. Good evening, Nat. Good evening, Natalie. Even start, isn't it? Bairstow's looked a bit frenetic, which is a bit understandable the way he's been moved around the order, so just getting himself going. There'll be some wheels here, some pace from Adam Milne. And players know him well. Oh, brilliant! Kane Williamson showing yet again how good New Zealand are in the field. How valuable will that be? Umpires just having a little chat. What's going to be the verdict between the two umpires? We had a little conversation. So signal is out. Yes, please. Fair catch, sir. Fingers are underneath. Can you keep it rolling? Keep it rolling, please. Fingers are still underneath. Outstanding. Yes, keep it rolling. Fingers are still underneath. Thank you. I'm ready with my decision for the big screen. Yeah, excellent from Kane Williamson. They needed that. Johnny Bairstow was almost off anyway. He knew it'd been caught. He's gone for 13, 37 for 1. ইতান তোমাদেরকে লেবুর গুরুত্বটাই বোঝাতে পারলাম না। ত্বকের জন্য লেবু যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝেই আমরা মেরিন পেট্রোলিয়াম জেলকে তৈরি করেছি লেবু নির্যাস আর ভিটামিন সি তাই ত্বকের সম্পূর্ণ সুরক্ষায় ভরসা রাখুন শুধু মেরিন পেট্রোলিয়াম জেলকে। I didn't do it. I told you to slow it down, Slick. It was an accident. I was there, but I had nothing to do with it. Sure, yeah. Give me a full দেশে একমাত্র 100% পিওর কার্বন পেট্রোলিয়াম জেলি ত্বকের চাটনি মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ। I'm sorry. I feel bad for you, but you don't threaten me. This movie's happening, all right? So let's just calm down and try to be friends again. Oh, Absolutely, Slick. Forgive and forget. Namaste. Hey, we're here. Yeah, they needed a wicket, didn't they? They bowled really well without much reward, and here was their reward. Kane Williamson, brilliant. Diving forward to his left. We've highlighted how good they've been in the field. On the up, Johnny Bairstow. Now he's worried. He's worried because it's Williamson. Maybe I shouldn't shoot sex scenes in a green screen environment. Yeah, it's that probably said house fun, I suppose. Thanks, Antonio. Fielding can make such a difference, and it has for New Zealand right through this tournament. Who knows how effective it'll be tonight. Pressure on the England batters as well, with such a strong batting lineup. Perfect for New Zealand as well. After this power play with Milan in, I reckon they'll go to spin, and probably the spin of Sodhi. Pretty sure that Paul Rifle really knows that it's not the place he should be. There's just a few issues behind bowlers on at the moment from the sea. It's called the crash. Really modern stuff. Pervert. Lying, okay? I never New Zealand have been so good in the power play right throughout this tournament. So economical. And they've, in 5 out of the 6 games,
taken at least one wicket in the power play. That could be crucial going into the end stages. How much resources do you have? England generally have a lot of resources with the bat. How many more wickets can they get? Still a problem around the bowler's arm. Really is ridiculous, to be honest. Not the first game of cricket ever played here. Not difficult to solve. Just waiting, he's ready again. So much power in the shot. Just a lot of control as well. He's in such good form. Not using that short ball. We will use that a lot because of the dimensions of this ground. England will do the same. They want Buttler to be pulling it for 6 and 4. They don't want to put it on a tee where he just hits through the line straight. So expect some short balls. We gotta get to the house. What happened? I don't know. This rich asshole's pissed off at me because I didn't shit-can the movie. And then his lawyer died, and he just told me he's gonna hurt your mom. You killed his lawyer? And now he's gonna kill Mom and Tracy? He ain't gonna do anything if I gotta say it. You fucking killed his lawyer? No, I didn't. It was an accident. We've seen that. I would never do anything to put you in danger. Shit. Struggled of late. Last 10 innings, he averages 21. This is Strike just a rate of movie guy, 109. right? He's not a gangster or anything. Stand up here, No, England. he's not a gangster. He's just extremely rich. He says he's got all these connections. I'll start with I'm the power sure play it's belongs just to New talk. Zealand. It's a brilliant finish for them. 44. Come on, Dad, drive! দেশের একমাত্র 100% পিওর ভার্জিন পেট্রোলিয়াম জেলি ত্বকের যত্নে মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ I'll go get the girls. ডেলিভারি নেওয়ার পরই লাইফ বয় হ্যান্ডওভার দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন পুরোটাই বাকি ঠিক আছে খরচ কমতে গ্যাস হাউস 1014 টাকা 90 পয়সা Done. So now fielding restrictions change. We have 5 outside the 30-odd circle. It's slowly coming on straight off to the power play. New Zealand haven't been a team that's used a lot of spin within the power play in this tournament. They prefer to use it later. Unlike England, who've used spin in the power play quite a lot. Will they change tonight? We'll wait and see. But for now, New Zealand should feel very happy with this last over or so. Look up the net run rate, and they've also picked up a big wicket too. Just stay there. Keep your heads down. Be safe. Don't worry about me. Clear the house! All occupants! मेरी भी दर्द होगा मेरी भी Fire in the hole! Not yet. Stay put. Clear the building! No one leaves! Neither do I. Just keep calm. Skip! I'm fine, Tracy. Just stay down, sweetie. No one's gonna kill you. Daddy's got this. What the fuck is this? Get down!
はいはい。It's not. What was that? Someone there? I'm gonna start shooting. Hey, you like that, don't you, huh? Take it off. Fuck off me. I thought I was on that guy. So you sit on his face? It's called teabagging? I really fucked him up good, though, huh? Listen, I'm gonna make a call. It's all gonna be okay. Stay put. はい、ちょっと早めから押した。手が出なくなるかな。チェックポイントでしょ。はいはい。あ、もう感じなかったですよね。Came to my house, Lester. My house. So I asked Amanda and the kids about it. I hate to say it, but Meriwether isn't short on excuses to come and kill you. It was Devin Weston. I ain't looking for perspective, Lester. They came after my family. All right. I don't know what to say. Does this change where you stand on the Union Depository? Hell no. We move on that right away. Before it gets any harder. That's smart. Meet me at the strip joint. I'll work with Frank and Trevor. Michael, did you find them? Who? The person who sent the mercenaries to our house. I'm working on it. Are we safe? You said we would be safe. He's not gonna try that again. I'm on top of this, Amanda. Trust me. Really? You're sure? I'm positive. Look, I love you. মলে আসছে এখন তো খেলা দেখতে But they got a reverse sweep away against Santner. He tried it against Sodi, and it looked pretty straight, to be honest. Fabulous tournament by well to right-handers. He's got the big wicket. That's the one they wanted. Sodi's been pretty good to the right-handers through the tournament. He's picked up 7 wickets to right-handed batters, an average of just under 10. So 2 left-handers now at the crease. And they may have discussed how to negate the 2 spinners. Maybe that's with a left-hander, 2 left-handers at the crease at the same time. Fantastic few overs New Zealand have had. Looked pretty good after 5 overs for England. If
matches of the tournament, really. With the ball and in the field, they've been outstanding. They just keep the opposition to below par, and they know they've got the batting line up to chase that. England have to try and get above par. Squeeze is on from New Zealand. So what would New Zealand, do you think, be happy chasing then? 160, anything above that in the semi-final, and the pressure is on, and their strong suit is obviously bowling, so England will have to go to get there 10 and over, but they've got plenty of batting to come. Driving in the air, but into a gap. Bolt can't stop it this time around. And turns into a good finish to the over for England. 60 for 2. Really good shot from David Milan. Just went over wide extra cover. আমাদের ব্যাটসম্যানদের আছে কিছু সুপার পাওয়ার, বেস্ট ইনগ্রিডিয়েন্টস, বেস্ট অটোমেটিক মেশিন, উদ্দেশ্য একটাই, ঘরের ব্যাটম্যান অসাধারণ কিছু মুহূর্ত তৈরি করা। ইটস আ ব্যাক ইন্সপিরেশন। বিকাশে খরচ কমছে, ক্যাশ আউট 1014 টাকা 90 পয়সা। Such a good opener, especially in this format. Tony Bairstow opened batting today. He's done it before. He does very well opening the batting as well. Well, we discussed it. 2 lefties in, take Santner off. It is so scripted nowadays, captaincy. They know what they're going to do, and they bring their 6 bowler on, Jimmy Neesham. It's all planned. Darren, we've spoken a lot about the batting for England, haven't we? Yes, we have. You know, the injury to Jason Roy, the captain would have told Bairstow he would be opening in the semi-final. So you could see the batting against the new ball, trying to do what Jason Roy did so good for England. It was not the case today. You could see he's in the dugout. New Zealand worked him out, got the breakthrough. You look at Bairstow, the way he batted, desperately trying to emulate what Jason Roy brought to the table. He tried to be aggressive, had some luck, but New Zealand was equal to the task. Bairstow couldn't get his innings going. A stroke of luck here, good shot, and then trying to be ultra aggressive. Brilliant catch by New Zealand. Has that been put down? It was a big swing. Spoke earlier about Conway behind the stumps and how good a job he's done, considering it's almost sort of a makeshift keeper. Yeah, just carried, didn't it, to his left hand as well. He backed himself to take that. He was done a little bit by pace. And the change to Neesham very, very nearly worked. Just to finish what I was talking about, Bairstow, he's been so well, he's done so well for England in the middle over stage. Now they bring in billions. Look at that strike rate, only 120 compared to Bairstow's, almost 150. That's why over the years England been able to chase down big totals and set big totals. Today, that was not the case. Bairstow has a job to do. Billings just saw that stat you put up there, Darren. He was just turning to everyone in the dugout going, thanks a lot to Darren Savvy. Bilbo, I back you, mate. You are top draw, yeah? I'm your man. Yes,
it's a crucial game to come in, especially knowing the position you're going to be batting. The job has been done brilliantly by Bairstow. And that's what Kane Williamson and his men will be discussing. Get wickets early, get into the middle order of England. What a fantastic shot. That is superb timing. Oh, hopefully he's going to be all right. He's gone over the boundary. Does end the over. 67 for 2. He looks all right. Phillips is such a good fielder. He does move quite quickly as well. And he looks like he's okay. With that, we are going to have a drinks break. ঘরের বাতাসেও জীবাণুরা পৌঁছে কেউ নেই। আরে যদি থাকে গ্রি, নো চিন্তা ডুবছে। গ্রি এসি, এতে আছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ফিল্টার যা প্রতিরোধ করে 99% জীবাণু। গ্রি এসি একটু বেশি যায়। বিকাশে ক্যাশ আউটসোর্স করছে আর সেট মানে তো গ্রি। এই কেন তোমাদেরকে লেবুর গুরুত্বটাই বোঝাতে পারলাম না। ত্বকের জন্য লেবু যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝেই আমরা মেরিন পেট্রোলিয়াম জেলকে তৈরি করেছি লেবুর নির্যাস আর ভিটামিন সি এর গুণ দিয়ে। তাই ত্বকের সম্পূর্ণ সুরক্ষায় ভরসা রাখুন শুধু মেরিন পেট্রোলিয়াম জেলিতে। দেশের একমাত্র 100% পিওর ভ্যাসলিন পেট্রোলিয়াম জেলি, ত্বকের যত্নে মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ। Well, good to see Glenn Phillips is on the field. He is brilliant in the outfield. This was quite an effort. Is that a long change? You can just see him there now. Oh dear. And up and over. Oh, incredible commitment in the field from Glenn Phillips. There are not many quicker across the ground in the whole tournament than him. But he just got his hands caught in the kind of LED boundary boards there and cut the little finger and the third finger, but he's okay because he's coming on to bowl. He bowls off spin. Of course, he offers so much to New Zealand in the middle order as a hitter. Off spinner, can keep wicket as well, and brilliant controlling the boundary, quick across the ground. And because of the left-handed Moeen Ali, he's going to have a bit of a bowl now. Moeen says, doesn't matter, I'll go downtown. He's one of the characters of our game, Glenn Phillips. I asked him some time ago, I said, how does a keeper start to bowl? He said, I used to get bored in practice. I had to keep doing something because I got bored, so I just started bowling. You find these super talented athletes just able to do almost everything in the game now. Take Liam Livingstone, who bowls off spin and leg spin. You'll see that developing more and more in T20 cricket.
He's good at this shot. So the timing on this is exquisite from Malan. He's playing his role to perfection here. Well, that's the third cover drive that Malan has played to the fence. This is his signature stroke, really. If you think of David Malan, you think of maybe the cut shot, and you think of this extra cover drive. When he holds that shape, keeps a beautiful shape and times it away. It's 19 of 14. He's holding the innings together at the moment. Classic Malan, really, a slowish start and then gradually upping the rate. He's not somebody who's quick out of the blocks as a rule. Oh dear. An exquisite shot followed by one rather less so. Maybe that man out in the deep cover has gone straighter because of those cover drives that Malan has played, and therefore is looking to hit the ball square for his boundary option. Now he'll still find the gap. I think it's almost like he's threading the needle here. Well, this is Malan, who will show you a selection of his cover drives, and they're all very similar. He gets in a beautiful position, he times the ball. He's not somebody who looks to club it or overhit it, he's just a timer of the ball. Four boundaries for David Malan. How can they get two here? That was the objective. Moeen says no. I think it might have been on, actually. Been wary of both fielders, actually. Phillips, bowler, tracking after that ball because, as I mentioned, he's very, very quick. This was the last of those cover drives from Malan. It's the way that he gets into position, where he gives himself room, gets his body shape to enable him to thread that ball over extra cover. Admired by Devin Conway, who plays those shots rather well himself. Cover drive platter that. I think you could say that the idea was good in theory, but it hasn't worked because 11 came off the over. 78 for 2. কেউ ভাবুক আর না ভাবুক, নিজের এবং পরিবারের সুরক্ষার দায়িত্বটা রাখুন নিজের হাতে। ব্যবহার করুন সেপ্রির স্যানিটাইজিং হ্যান্ড ওয়াশ। সেপ্রি, সুরক্ষার পাওয়ার আপনার হাতে। Goes around the world playing cricket, David Malan. Now he doesn't need to. He's got a permanent spot with England. But he's earned his spurs just playing cricket all around the world, and sometimes that makes you tougher. It's needed to be. His place has always been under scrutiny in this England side. But this is a good comeback now from England. They've gone over 7 and over. A good matchup this for New Zealand. Milne to Moeen Ali. So tempting to take the mind back to when these two teams played, isn't it? 50 over game, one of the greatest games ever played. And now it's easy with the recency factor. It was a big occasion. But whatever parameter you look at, it was just a great game then in 2019. Yes, Mill, only surprised if he bowls few short. More to Moeen, I suspect, than Malan. Oh, another. Oh, he's put it back this time. Brilliant. Fantastic fielding. Given another opportunity to hammer that ball through extra cover again. Malan is on the drive, but Glenn Phillips here, running around from cover point. He is so quick and so committed. A fantastic piece of fielding. I think he should audition for the 200 meters. Running around the curve, but geez, there's some quick ones in this tournament. Temba Bavuma against Glenn Phillips. I would pay money to watch that over 100 meters.
That would be a good contest. Except that this one's clockwise, though. He's running clockwise here. It's still hurting him. It is still hurting him. It would. Still suffering a bit with that injury to his left hand from the previous attempt to put off the boundary. This time he does get to the ball. Look at him go. Legs are like pistons. And it didn't have that much space to cut it off because already 3 or 4 yards inside. I don't think they're going to get a second. It is a great thing about New Zealand cricket. Every run's got to be earned. Better line from Milne, keeping it tight to Malan, giving him no room to free his hands. Like with so many sides, New Zealand came here with a lot of wicket-keeping options as well. So many teams these days seem to have 2, 3 keeping options. Seifert, he's not playing today. A slow ball. You wouldn't have minded facing a few slow bounces in your time, Michael? Well, we're going to see a lot more of this in this game because of the dimensions of the ground. Quite sizable boundary square of the wicket. So you'll see these quicker bowlers explore the middle of the pitch. You'll see them bowl their slower balls into the surface to try and bring the square boundaries into play. It's one of the best things about this tournament, in my view. Just the size of the ground. It's allowed bowlers to be different. It's brought spinners into the game. There's only one man in the field at the moment. Everything's going to him. 7 of the over, 85 for 2. ডেলিভারি নেয়ার পরেই লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন সুরক্ষায় 10-10। দাঁতের শিরশির অনুভূতি থেকে আরাম পেতে ডেন্টিস্টরা সেন্সোডাইন ব্যবহারের পরামর্শ দেন। ওরে জাগা, একটা ঠান্ডা দে না। একটা ঠান্ডা একদম চাঙ্গা। It's an aspect of our game that's changing, though. Should you be neutral in the box? Should you not be? I think you should. Always. Without doubt. These are 2 wickets that fell best. Williamson has much of a part in this wicket as the bowler. Yeah, top-class catch from the captain, and Ish Sodhi was always confident with that appeal, pitching in line and straightening fractionally. Good wickets to get. They came at good times, but they've just let Malan get away now, 28 from 19. Well, what support does he have against Moeen Ali? He's got long on, deep mid-wicket, deep backward square. There's a long off out too. Yeah, will be called wide. It's a strange line. I'm just thinking some of the smaller grounds in New Zealand, some of the smaller grounds in India, they'll come back for 2. No, they won't. This matchup will be so skewed in favour of the batsman. Yeah, it's one of those differences that New Zealand have had to accommodate. Some tiny grounds, especially Auckland down in New Zealand, a very different style of game, bringing boundary hitters into play. This is quite a sizable surface area here. I wonder how long it took for him to make that banner. Just enjoy the game, my friend. Just enjoy the game. It's such a good cricket match, this. Oh, good stop. Good stop. England might draw a little bit of inspiration from what they did in Sharjah, a different surface. Just 47 for 3 in their first 10. They had 116 in the back 10. That is one of the great innings you'd see from Jos Buttler. They want someone like Malan to go down and convert this 29 of 20 into something like an 80 from 55. Oh!
got some hitters to come for sure. Morgan will have his pads on. Livingston certainly will not want to waste Livingston. England, one of two teams that have scored at more than 10 runs and over in the last 10 overs of this tournament in all the games. Pakistan the other. So they finished strongly. It's a tricky one. How do you optimize the resources that you have in a side? Because you're also playing cat and mouse with what the opponent is doing. I think it's just a matter of flexibility, isn't it? You just have to be very flexible with your batting order. You won't always get it right because you can't always judge when the wickets are going to tumble. But West Indies in this tournament, for example, have been guilty of leaving one or two of their hitters in the shed till too late. And England won't want to do that with Livingston. Got away with a couple here in this over, Sodhi. Well, left-hander on strike, so you'd expect to see Sodhi try and flick them out of the back of the hand. Saw that incredible stat that he hasn't bowled a wrong run, hasn't bowled a googly. Oh, that'll go in the gap. It is so frustrating when a boundary comes off the last ball. That's happened 3 or 4 times now. It's 94 for 2. কেউ বুঝুক আর না বুঝুক, নিজের এবং পরিবারের সুরক্ষার দায়িত্বটা রাখুন নিজের হাতেই। ব্যবহার করুন সেপনিল ডিসইনফেক্ট্যান্ট স্প্রে। সেপনিল, সুরক্ষার পাওয়ার আপনার হাতে। যেমন না তেমন কাজ। এরা ভিড় জনতা। এনএসি ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার এসো স্বপ্ন ফলাই। In fact, the pitches haven't really turned in this tournament, which has been one of the surprises, really. So the spinners have tried to bowl rather quickly and into the surface and get the ball skidding through. 10 and over, 164. I think they'll do well to get there, but it'll be a good score, 164. What I found intriguing with Sodhi was, though, because of his high action, the googly is probably the easier ball to bowl. But he does bowl a lot of it. He's got a lot of wickets with the one that's gone straight through, and it could be what you're saying, Michael, that he was actually trying to turn it away, and it went straight through. It's been so good in this tournament for them. We're talking about that magic moment. Was a magic day. This is the moment. It's Archer to Guptill. 2 to win. Guptill's got to push for 2. They've got to go. It's got to throw. It's got to go to the keeper's end. He's got it. England have won the World Cup by the barest of margins. By the barest of all margins. Absolute ecstasy for England. And then, of course, Ian Smith promptly called 2 more super overs. I wonder if the great man is listening right now down in Hawke's Bay. He'll have a very nice bottle of red open, and he'll be settling in to watch this game, and let's hope it gives us just half as much drama as that magnificent game of cricket 2 years ago. It was one of those where were you that day moments, wasn't it? 10 years later, where were you when the final of 2019 was being played? Shot. Might be a bit early for Smithy, but I don't think he'd mind. It's never too early for Ian Smith. Well, this was firmly hit back, wasn't it, at Adam Milne by Malan, and Milne just stuck out a hand, really. Just a reaction attempt. Those balls sometimes stick in, but very firmly hit. I remember the first time I was watching Jofra Archer, and one of those stuck, and he's just like, it's meant to be, completely nonchalant. How much they're missing him here.
I think these two should just play a game all by themselves, Malan and Phillips. It's surely where you want your quickest fielder for Milan. It's the crucial position really, out on the cover boundary. It's been a good over this though. 5 from it. He's got to ensure he doesn't do what a couple of his teammates have been guilty of in the past, which is letting it all go with the last ball. Because everybody in the dugout, they'll all be on the edge of their seats and get a good one in this over well. And it reasonably well. 6 from it. 100 comes up with 6 left to play. ওরে জাগা একটা ঠান্ডা দে না একটা ঠান্ডা একদম চাঙ্গা। আমাদের বেকম্যানদেরও আছে কিছু সুপার পাওয়ার, বেস্ট ইনগ্রেডিয়েন্টস, বেস্ট অটোমেটিক মেশিন, উদ্দেশ্য একটাই, ঘরে ঘরে এমন অসাধারণ কিছু মুহূর্ত তৈরি করা। ইটস আ বেকম্যানস ক্রিয়েশন। বিকাশে খরচ কমছে, ক্যাশ আউট 1014 টাকা 90 পয়সা। Open seating anyway. If you think this game evokes lots of memories, this one will produce a lot of passion. Pakistan versus Australia. Maybe a few Aussies watching, but I think they'd be completely outnumbered. They will. We've seen a fair few Pakistan fans here actually tonight, enjoying tonight's game before their team make an appearance tomorrow. Australia coming into some kind of form. Pakistan, one of the 2 best teams so far in the tournament, without question. He bowled an expensive over, Trent Boult, especially the one 5 wides. 5 wides is the worst thing that can happen to you when you're fielding. Got to bowl the ball again. He's conceded 5. Now he's in his 3rd. Moeen wants 2. He should get those. Well, I made mention earlier in the day that New Zealand had been the outstanding fielding side in the competition. Good catch from Williamson in the opening power play to get rid of Bairstow. Unbelievable commitment in the deep from Glenn Phillips, who has saved a number of runs on the cover boundary. Not sure he's timed that well. I think he got away with the fact that he didn't time it too well. Just fell short of Tim Southee. It's in the air for a while, but these are long boundaries. He had to run in a long distance. Yeah, completely mistimed from Moeen Ali. It was a knuckle ball from Trent Boult, beautifully bowled, and you can see the ball slightly wobbling on its path down to Moeen Ali, and that's why he mistimed it so badly. It meant that it fell way short of Southee coming in from long off. That's falling in no man's land as well. I just had the impression before that ball, it's about time that Moeen Ali went for the runs, because the idea is that Malan bats through, I think. Well, pace off, that's what New Zealand are about at the moment. Change of bat for Moeen Ali, maybe a sign of frustration from him that he's finding the boundaries hard to come by. Oh, he might have found the gap there. He has, and this will be frustrating. I think it's a good shot though. Forget the frustration, it's a shot that's well played. Yeah, and generally earlier in the over, Boult has taken pace off the ball. This is delivered normal pace, if you like, and just gives Moeen Ali therefore a bit to work with. And that combination of the line and pace on the ball brings a precious boundary. I think Moeen's decided. His time has come. They've got Livingston, Morgan, everybody's in there. One batsman's got to go for it from here if they need to get to 170. How does someone hit a 6 as big as Livingston hit the other day? That was an incredible blow. Rarely heard a sound like that from a ball come off a bat. Moved so much, and the ball just went to short fine leg. 10 came off the over. It's 110 for 2.
ক্যাপসিকাম মশলার ওয়াইল্ড ব্লাস্টিং ফ্লেভারের ডিটোস পাতে হবে জোস যদি থাকে ডিটোস। শিরশির অনুভূতিকে দ্রুত হার মানান সেন্সোডাইন র্যাপিড রিলিফের সঙ্গে। বিকাশে ক্যাশ আউট চার্জ কমছে আর সেন্ট মানি তো ফ্রি। Good graphic if you're a Kiwi, this one. The best economy in the death overs from those in black. Pakistan not bad. India, South Africa and Australia make it the top 5. Here at Zide, coaching staff join the occasion. Now a little nervy. Two Shanes, Jurgensen and Bond. Southey has just got pumped. First ball of the 16th disappears for 6. Southey under pressure. Evening Darren. David Malan, he's been in for a while. His eyes in. Southey just rolling his fingers. Didn't get the grip of the surface. What a catch by Seifert. Little clip, yes, there we go. Southey's retort is a good one to get David Malan, who was looking very dangerous. Third one down. Southey adjusting his length. A touch fuller. Getting the bottom edge. Good comeback by Team Saudi. David Malan goes for 41. England 116 for 3. Luxurious silky finishing ও antibacterial property সমৃদ্ধ Berger Luxury Silk Emulsion শুধুই গ্ল্যামারাস দেয়াল নয়, আমার স্মৃতি আঙিনা। কিন্তু প্যানেলের গ্যারান্টি শুধুমাত্র কঙ্কা এলইডি টিভি দিচ্ছে প্যানেলের 4 বছরের গ্যারান্টি। বুঝতেই পারছেন কি হবে স্মার্ট ডিসিশন। কঙ্কা শান্তির মধ্যে সবটুকু। The tall, languid figure in this England lineup, Liam Livingstone, 28 years of age and very, very good strike rate. Anything over 135 your tape, he's over 150. And colleagues were just going on about how much he strikes it, how hard and long he hits it. England fans will be hoping he could get a wriggle on now. Perfect time for him to come in, really. Here's Southey. And running straight away. There's the wicket. Just scramble seam a touch fuller from the ball before. If you look at David Malan trying to repeat that shot he played before. Yeah, can't blame him, Darren. He said, get on a roll, you start with a good 6 off the first delivery, then you get that roll and that momentum in T20, and Malan was seeing it beautifully. So a little change in the field here, given that it's Moeen Ali. Third man's gone back, square leg out from the fence. Yes, shrewd, smart. And that's why New Zealand, the bowlers are so skillful. Could see that 6. Saudi was trying to take that wicket. A touch fuller. Didn't get the bounce from the first ball. Getting the bottom edge. No timing. And again, it just underlines the versatility of this New Zealand attack and how long they've been together.
particularly Southee, Bolt. You're throwing a bit of Ish Sodhi and now Santner, Neesham as well. Fairly useful list. Yeah, it's a good comeback here from Tim Southee. All his experience, as you're saying, Darren Sammy, that subtly slow, a little bit fuller, and that scramble scene that he's renowned for, Tim Southee. Tries to catch it, little splice, he gets away with it. Does Livingston, living dangerously, 16 done, 119 for 3. ওরে জাগা এত ঠান্ডা দে না একটা ঠান্ডা একদম চাঙ্গা। আমাদের বেকম্যানদেরও আছে কিছু সুপার পাওয়ার, বেস্ট ইনগ্রেডিয়েন্টস, বেস্ট অটোমেটেড মেশিন, উদ্দেশ্য একটাই, ঘরে এমন অসাধারণ কিছু মুহূর্ত তৈরি করা। ইটস আ বেকম্যানস ক্রিয়েশন। বিকাশে খরচ কমছে, ক্যাশ আউট 1014 টাকা 90 পয়সা। Zayed, and this will feel good for Tim Southee. Yeah, second to the great Lasith Malinga in terms of wickets taken in T20 internationals. Even Stevens, but a Shakib who went home injured. Time for a Sodhi again. Have to reload this one. You could see Kane Williamson. This is where he earns his money as a captain. He knows how strong Livingston is against the fast bowlers. Get his wicket-taking leg spinner, spinning the ball away from him. Yeah, it's his last one for Sodhi. Start of this, it's 1 for 22. He's milked him nicely in a way. They didn't want to really get out to him and lose wickets against Sodhi. Such a wicket taker. And you get Southee bowl out, 1 for 24 with 11 dots. Superb. Livingston has done the right thing. The matchup, the leg spinner bowling to the left-handers. Moeen Ali needs to get a move on. This is very crucial right now. This over from Ish Sodhi. Heading to the bigger side, but guess what? It doesn't matter. Got this and a bit more at Mullen. That's exactly what I'm talking about, Danny. Ish Sodhi just fighting this one right into the arc of Moeen Ali's bat. Yeah, it sounded so good. Very clean. Says it all. And as captain, you make a decision, you take a risk. Because you know the matchup, how dangerous Livingston could be to your fast bowlers. So you take the gamble to get him out with the leggy. But then you also have to consider the left-hander who's at the crease. And that's what Kane Williamson would not want. Bowl a little flatter. I understand the intent from Moeen Ali. Here's a real time. Watch this. Dancing shoes on and so easy and so clean. Just loving the seating pods on the grass banks here at Zayed for this ICC World T20. Again, a bit more flight, different pace, different line, different trajectory. I think it's a wonderful initiative, particularly if you've got a young family who've only just started to learn to walk, and hem them in. Not if you have kids like me, Danny, they're not staying in that. They're going to be running all over the place. Yeah, saw him coming, just pushed it. Sodhi thinking it too. Big boundary, hustle. A little bit quicker and a little bit more accurate with the throw. Took it on. Came back all right, did Moeen Ali. As you look at what's left for Williamson, Bolt got one, Milner got one. He's going to hold on to the strike here.
It's Molinelli. So 11 off, 130 for 3. এনএসি সুপার কোয়ালিটি হাইব্রিড ধান বীজ জনকরাজ। যেমন নাম তেমন কাজ। এনএসি ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার এসব সতর্ক লাইন। বিকাশে ক্যাশ আউট সার্চ করছে আর সেন্ট মানি তো ফ্রি। Wasn't too bad a power play. That thing was a 1 for 41 there for England. The Houston that ticked along and it lost too many wickets, so you can see the strategy conserving wickets in the bank to try and go big now in these overs. And they got the guys to go big. Milner, you got one. Bolt will bowl another one. I assume Nisham, he's done a good job in the games before. Will bowl the other over. But it's the business end right now. Moeen Ali set, Livingston at the other end. Oh, slower. Centre good. And as sweet as from Molinelli. That's right in the slot. It's not through, but for Moeen Ali who hangs back. Look at that. Right in the slot. Did not get it high enough. Boom! Out of the park. Oh, the modern blades of the modern athlete. Biggest boundary going around in the UAE, and it cleared it rather comfortably. It's a big straight here at Zayed, and then those pockets are sort of long on, long off, but square. That's the smallest side here tonight. Thinking it too. Thought about it, but thought better of it. It'll be interesting, that penultimate over, Darren Sammy, your 19th, that second one is so crucial, let alone your last one. Short chopper. 81 meters. Monster. Just had some hang time, really, like you'd say. Yeah, wings on it. Yeah, you can see what was Molinelli was trying to do against that. It was just that slow tennis bally one. Just hung in the pitch, just fractionally a bit longer. Now, Milner got to be careful here. You don't want that length ball into the arc of Livingston. Keep the ball away from him. Oh, and he did. Now he holds on. Good stuff. Good experience from Mishodi. Nothing outrageous. Don't need any more overthrows. And a chuckle between batter and bowler. They know each other well. Milne, he backed himself. This. Oh, he's got away with that, you reckon? Definitely got away with that. Molinelli's best score in T20 World Cups. Oh, so easy. Yeah, he just held it there. Just checked the stroke there, Molinelli. He wasn't trying to lift it completely for 6. Nice and sensible. Sometimes as fast bowlers, I was never one, Danny, but the guys who bowl quick, something about bowling a bouncer plays with their ego. The batter and his strength says keep the ball away from him. You got to swallow that pride, maybe even bowl a slower ball outside the off stump, but do not go again, do not bowl into that arc. Now he heard you, there's that slower one, but he doesn't quite get it right. Now, as captain, I wouldn't mind that. He's trying to execute the plunge, keeping the ball away from the batter. They've done their homework. Gary Stead doesn't look as cool as you. I didn't want to say it. I helped you out. But when I look at the 10 and over gets them to that 163, I think England would take that in a bit more. Particularly if Livingston can get a couple of those out of the screws.
at that delivery. That's what I'm talking about. It's not the best ball, but look at the line. You've got to fetch it outside the off stump. You want to be a touch wider than that to Livingston. Well, we've got one to go here in the 18th. It's gone for 10. New Zealand have disappeared off the last ball too often for I think Williamson's liking. Can't close it out. Catch this, Darren Sammy. Boom. Oh, it's a monster to win the 18th. 16 from the 18th. It's 146 for 3 now. Oh, slides back in the box. Oh, Darren. I warned him. Don't ball it in the slot. দেশের একমাত্র 100% পিওর ভ্যাসলিন পেট্রোলিয়াম জেলি ত্বকের যত্নে মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ। আমাদের বেকম্যানদেরও আছে কিছু সুপার পাওয়ার, বেস্ট ইনগ্রেডিয়েন্টস, বেস্ট অটোমেটেড মেশিন, উদ্দেশ্য একটাই, ঘরে ঘরে এমন অসাধারণ কিছু মুহূর্ত তৈরি করা। ইটস আ বেকম্যানস ক্রিয়েশন। ডেলিভারি নেওয়ার পরই লাইফবয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন, সুরক্ষায় 10-এ 10। বিকাশে খরচ কমছে, ক্যাশ আউট 1014 টাকা 90 পয়সা। Rather outrageous time of it. I think very good in the 100. I think about T20s all around the globe and all the franchise cricket that players play now. Evan Lewis, what he's about, and Nicholas Pooran. Here's Bolt. So, looking to go Yorker. Yeah, mentioned England that's at 164.5 and some. Want to keep going? Well, this is the guy to do it. That's a good distance. And it not only went the distance, it went a long, long way up. That's the plan against Livingston, certainly. A wider, fuller one. It'll be fascinating if New Zealand can't hold England to around that 170. This is what I'm talking about. Got Seamers to Livingston this tournament. They've tried to keep him wide, keep the ball away from him, look at the boundaries. And I'm telling you that last 6 was probably right at the bottom here of the screen. Swatted. Oh, he had a lot of work to do, Marty Guptill. If he can't get it, not many can. Boundaries flowing here for England. That brings up the 150. New Zealand known to be the most economical bowling team in the last 5 overs. But they're up against it today. The line was good. He executed the plan, but Livingston was just better. What's Bolt got here? To come back, as bowlers do with the challenge in T20. Pump down the ground or hit for 6 out of the ballpark. What's your retort? Yeah, trying to go block hole. So 8 from 4, and it's back to Moeen Ali, who's 44 from 32, 2 and 2, 4s and 6s that is. Striking not bad at all in England. Dearly love these two to finish things off here. I think they will want more than 169. Couple maximums will get them there. Well, bold, Trent Bolt. Yeah, good thinking, smart, brave, and well, you have to be. Back yourself with your variety as a bowler at the death. Well done. Yeah, such a go-to delivery in 2020 at this time.
Doesn't need to come out Owen Morgan at all. Yeah, take one and be happy. So 9 off, it's 155 for 3. ডেলিভারি নেওয়ার পরই লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন, সুরক্ষায় 10-এ 10। দাঁতের শিরশির অনুভূতি থেকে আরাম পেতে ডেন্টিস্টরা সেন্সোডাইন ব্যবহারের পরামর্শ দেন। ওরে চাঁদা, একটা ঠান্ডা দে না। একটা ঠান্ডা একদম চাঙ্গা। Partnership 39 from 24. And English fans loving this partnership and enjoying the entertainment with the DJ. So that 19 wasn't too bad an over. So I went for 9 of the penultimate. What do we got now? With the last 6 balls is going to have to be bowled by Jimmy Neesham. Pressure on him. Yes, so you could decide who goes in the break with the momentum. 100%. It's crisp. Think about 2. It's not going to be there. Southey does well. With the tension of it all, maybe another tight finish right at the end of this one. Jimmy Neesham normally goes the ball in the wide line. This will be fascinating. This will be really fascinating because he doesn't often bowl the last over. Jimmy Neesham. And he has a golden arm sometimes. Oh yes, Jimmy Neesham goes his way. It's a dot ball and a wicket. Santner gets in the way. It's the end of Livingston. Look at the length and line of that delivery, taking him wide. Livingston goes for 17, England 156 for 4. Captain's out, but he's at the non-striking end. So we've got the 2 left-handers now out there. Moeen Ali. So played a lovely hand here. 46 from 35. Striking at, well, let's call it 132. 4 to go on this over. The last of the innings. Southey's not going to stop this, and here's a half century to Moeen Ali. Brings up his first World Cup 50. Last World Cup semi-final, he said he would have loved to contribute. Well, today he has given England a chance in this semi-final. Neesham missing his length. Moeen not trying to overhit this one, just placed it. 160 the score. Another full toss. Can't get the gap. He can't get all of it. Both the bowler and the batter miffed. He's missed his spot here as Neesham, and so is Moeen Ali. Yeah, good numbers. England needed an inning like this. New Zealand kept them honest. But what a time to come up with the goods. Semi-final, big match, all the pressure. Moeen Ali delivers.
Time for the captain. And just pushed it a little. Come upstairs here as a wide, but I think Rasmus won't have to. Yeah, breached 160. England, I suppose at the toss, would you say, okay, you're going to get 160, let's say 168. And you take that at the toss. Get back, Marlin. Still 2 to go. And Morgan just eyeing up that onside. It is the smaller side here, Zayed, for the semi-final. He gathers, and here we go. Well, they're going to get 2. There's the parry. Bolt couldn't hold it cleanly. I wonder if that was deliberate, just to get Morgan back on strike. Have a look at this from Spider Cam. Just, hey, have another one. Or have another burger, as the case may be. Come on! Passion to the max here. Yes. That's what you call supporting your team. I want to see him lay it down. Last one of the innings for England, barring a wide or no ball, from Neesham. Sliced. Taken. Oh, a little slip. No, he's put it down. Phillips ended up on his heels and he's lost his footing. So it means they get to 166 for 4 in 20 overs. And a little life there right at the end. Should have been taken by Phillips, but wasn't. There you go. Morgan trying to get to that maximum. Glenn Phillips been awesome in the field, lost his footing, did well to keep his eye on it. But you know, last 10 overs, 99 runs for England. Yeah, they'll be pleased, particularly from Moeen Ali getting to a half century. 51 not out from 37. Very timely knock and a great contribution from the off-spinning all-rounder Moeen Ali. Kiwis, well, I think they'll take that as well. Good surface, under lights. Neesham at that last over, 1 for 18. Now should have been 2, probably for 16. So scorecard in terms of their 20 overs. Butler 29, unlucky 13 for Bairstow. Milan got into the 40s and couldn't kick on a bit more. Livingston a little cameo, 17 from 10, and then Moeen Ali, that 51 from 37, the standout with 11 extras to get through to 166 for 4. So the New Zealand bowling, 1 for 24 for Saudi with 11 dots. Very, very useful indeed. Mill, 1 for 31. Sodhi, 1 for 32. And Neesham, 1 for 18 with the wicket takers here for the Black Caps. We're going to go sideline and have a little interview. Glenn, in the wars out there, how's your hand first of all? Yeah, it's all right. Got a few cuts and bruises, but that's all good. It's going to be all right for batting. What happened? You just got it caught in the LED lights there? No, there's a metal thing that was sitting on the other side, and as I went over, my hand went straight into it. So a little bit niggly, but it's all right. Unbelievable commitment out there, I must say. Dare I ask, what do you do 100 metres in? Not as fast as I used to, but I'm trying to get there once again. Now, what about this total that England have put on the board? How do you evaluate it? I think for us, it's about going out there with a real positive mindset and also trying to keep up with the rate. For us, we want to be able to try and finish it with an over before the end of the game, and that's the way we want to go about our business out there today. It looked as though pace off the ball was the way New Zealand liked to go. Is the pitch a little slow?
It was a little bit hard to tell from square leg. There was a bit of mixed feedback. Some held and some went through all right. So we'll have to assess it once we get out there and play accordingly. Key man for you, second half of the game? Yeah, absolutely. Hopefully we can hit a few bombs. Thanks for your time. Cheers. Thanks. Yes, hang in there. Glenn Phillips has a hand all bandaged there. Couldn't quite take that catch on the boundary. Yeah, 40 for 1. Wasn't bad from both sides. Just circumspect, having a good look. England. 70 for 1, but there, the last part of the second half of the innings, 10 overs, going for 99. So good comeback from England, and particularly Moeen Ali and David Malan. Target is 8.35 runs per over from 120 balls. New Zealand, to win the semi, have got to get up to 167. Take a break and check out the reply. I recommend MRF ZLX for sheer comfort and long life. MRF ZLX, you can bet on it. They say that our cricket rivalries divide us. Yet millions of us travel to share our passion for cricket. We say where we go as rivals, we stay as friends. Wide mid innings and back at the Zayed Stadium here in Abu Dhabi. This is England versus New Zealand. There's always drama, isn't there, when it's England versus New Zealand and England. Of
gone and put on 167. A lot of drama. At one time we thought they might go more. Then New Zealand kept pulling it back all the time. These are two excellent teams. Yeah, they'll be telling themselves, I think we are ahead in this game, but it's not a done deal yet. Very, very few teams have chased 167. Only one has in this tournament. Sri Lanka versus Bangladesh. Well, now they come the New Zealand openers. Darren Mitchell, Martin Guptill. $167 then to get 8.35. Nasser Hussain alongside me. First thoughts on 167, Nasser? I think it's slightly above par, and I think Guptill is the absolute key wicket. If Guptill gets off to a flyer, then New Zealand have got that sort of dependable middle order that can get them over the line. If they lose Guptill early and the run rate builds, who's going to play that explosive innings? So the match-up with Guptill, absolutely vital. England always going with the extra batsman, New Zealand with the extra bowler. So they need that one batsman set. Bowls well up front, does Chris Woakes. I won't be surprised if he bowls a majority of his overs up front. The economy is just under 7, as we had one magic game. He's been around for a while, Martin Guptill. Keep your eyes out, we will for you as well, to see if there's any towels around. None so far. Just find it a bit worrying if games are decided on that, so hopefully there will be none. And let's see if Woakes gets some movement. Both Southey and Boult, I thought, were excellent with the new ball. The first 2 or 3 overs. And so there's a slip in place to 167, 8.35. Chris Woakes. He's off and running straight away, Martin Guptill. Yeah, toe into the bat, and he just got it over Owen Morgan. That extra cover, you can't give Guptill any width. England would have discussed this in the meeting. He stays leg side of it, you see his feet don't move across. So anything wide, he's going to throw the kitchen sink at. Got to be tighter. I see what you're saying, even though the kitchen sink is not the easiest thing to throw. Strike rate 133, but just so crucial. It's getting movement, there's no doubt. Just wonder whether he wants to start it straighter. Yeah, a bit of shape there, and that's why I think this is a decent score, because with that seam position, it's just done a little bit for Southey up front. Oh, look to go straighter, but this might be enough. This might be the dream start for England, and Chris Woakes has delivered it. Yeah, he did go straighter, and you can see England are absolutely ecstatic with the big wicket of Guptill. It just sat in the pitch a little bit. England's openers struggle with that. Guptill's gone. He made 4 for 1. You feel unlucky there. It was going way down the leg side. Easy catch for Moeen Ali. Chris Woakes again with the wickets. That is a big, big wicket. Guptill's gone for 4 for 1. এইটা নেন তোমাদেরকে লেবুর গুরুত্বটাই বোঝাতে পারলাম না
ত্বকের জন্য লেবু যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝেই আমরা মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলিকে তৈরি করেছি লেবুর নির্যাস আর ভিটামিন সির গুণ দিয়ে। তাই ত্বকের সম্পূর্ণ সুরক্ষায় ভরসা রাখুন শুধু মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলিতেই। ওরে চাঁদা, এত ঠান্ডা দে না। একটা ঠান্ডা একদম চাঙ্গা। দেশের একমাত্র 100% পিওর ভ্যাসলিন পেট্রোলিয়াম জেলি, ত্বকের যত্নে মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ। Not the start New Zealand wanted at all. Not at all. He's always walking into a crisis. I look at Ken Williamson, sometimes I think he should be a world leader. He's always walking into a crisis. He's managing it well. Gupta was a big player, Nas, as you were saying. Yeah, because he can destroy you in a power play, really. Leading edge straight to Moeen Ali. You can see the England players and fans in the background. Just to keep the momentum going of her above par score, batted pretty well. And that's an early wicket. And that's what it means to the two injured lads. They're up, Mills and Roy. Great to see. Sometimes it's just one of the little things going your way. I think when Bolt and Southey were bowling early on with the new ball, just a couple of things went England's way. Now you think, is this a sign of things to come? Do you believe in all that? They want to go their way now. There's a little net from Williamson. Yeah, you've sensed that. Probably New Zealand from that World Cup final sense that it went a little bit England's way. Beautiful seam position, really is. Slip and a gully for Williamson. The gully more for that run-down shot that he plays to get off strike, but he's catching as well. He's got that in the gap. Not sure he's got enough for it to get to the boundary. It's got to be a photo finish, this. Get it back in. So mixed over this. They got a wicket which was important, conceded 8 for it. পাপরিকা আর মেক্সিকান মশলার মাইন্ড ব্লাস্টিং ফ্লেভারে টিটোস, মাইন্ড হবে জোস যদি থাকে টিটোস। শিরশির অনুভূতিকে দ্রুত হার মানান সেন্সোডাইন র্যাপিড রিলিফের সঙ্গে। বিকাশে ক্যাশ আউট চার্জ কমছে আর সেন্ট মানি তো ফ্রি। He's a fine player, Devon Conway. He's made such a big impact in international cricket. Just rule that one lapse going to his left as the stand-in keeper. I think they would have considered Phillips as a stand-in keeper too. Just went with Conway eventually. Yes, Jordan. He's been excellent for England in this series. Economy rate very good. Always find 2 overs for him left to the death. Because we've got so used to seeing him bowl at the depth, sometimes you forget he's pretty nippy up front. Kumar Dharmasena from Sri Lanka knows what it is to win a World Cup. Away Erasmus. Very good umpire. Always there, he's smiling again. He's always smiling. You tense, Nasser? No, not at all. I think England have played some good cricket so far today. In a good, healthy, strong position. They want to get this man. Just got the impression. I want to tell you, 14 fours, 4 sixes in case you're counting in that innings, but there is no count back anymore. You've just got to go on playing super overs. No more than 2 allowed outside. Where do we have them? 1 at deep square, 1 at third man. Fascinating how England's pre-plans, they'll be bowling it into the surface here, especially now they've seen this pitch.
do a little bit. There won't be any freebie drive balls. Try and hit the splice of the bat as often as possible. You see that. That's what they've done consistently. They've come here and they've got their seamers to hit the splice. They believe some of these pitches have been too paced. There'll be no floaty drive balls. There shouldn't be anyway. He's not been at his best in this T20 World Cup. I don't know if it's the elbow that's bothering him, or another day that's going straight into the stumps. Just a single. He's been good for England. Chris Jordan, especially with Tymal Mills going away, he's had to shoulder a load. He stand that mid off when the others are bowling. 3 wickets against Australia. Good support in the deep, not neither in the last one. Yeah, England have fielded well in the deep as well. They've taken some good catches. We've seen Chris Woakes there at mid-on take that catch against Australia. Had an excellent tournament. Calls for 2, it could be more than that. Should be. And while he saved the boundary, he's ensured there'll be 3. Yeah, interesting. I went down there in the interval. There was no dew at all, actually. We saw New Zealand slip with that drop catch for the last ball of the New Zealand innings, or England innings. Just sliding there a little bit, Livingston. I don't think there's that much dew out there. And England will want it to stay away. No, you might have seen it on the slide otherwise. Tall man in the deep ball was a good idea, as we saw with Jason Holder pulling off that remarkable catch.
Let's allow Williamson just to play that. Williamson. 2 big wickets for Woakes now. Guptill and Williamson. The scoop didn't work. 13 for 2. He missed out the ball before when he didn't get it past Rashid, so he tried something funky. And he just scooped it in the air to Adil Rashid. And England continued to catch well. 2 huge wickets. Guptill gone, Williamson gone, 13 for 2. সবুজ বিপ্লবের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি দিয়ে তৈরি বিশ্বের সর্ববৃহৎ শস্যচিত্র এবার স্থান করে নিল গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে। বাংলাদেশের এই গৌরবময় অর্জনের অংশীদার হতে পেরে ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ার গর্বিত। এনএসসি ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ার, এসো স্বপ্ন ফলাই। কিন্তু প্যানেলের গ্যারান্টি শুধুমাত্র গঙ্গা এলইডি টিভি দিচ্ছে প্যানেলের 4 বছরের গ্যারান্টি। বুঝতেই পারছেন কি হবে স্মার্ট ডিসিশন। গঙ্গা, শান্তির মধ্যে সবটুকু। Fine player Devon Conway. Got to a stage in New Zealand where they were just waiting for him to fulfill his qualification to be able to become a black cap. 30 years old, lovely story. Like Luke Ronchi. Luke Ronchi went over from Australia. Devon Conway's come from South Africa. He's got a lot of work to do along with Daryl Mitchell. Oh, the goal. It's a good spell from Woakes. Williamson just trying to get enough of it. Wasn't brave enough, he didn't stay on the shot long enough. Adil Rashid was not dropping that. It was such a big wicket. Woakes 2 for 8 and just about to finish his second over. And he does finish it at 2 for 8. It's excellent from him. It's 13 for 2. ওরে জাগা, একটা ঠান্ডা দে না। ঠান্ডা। ঠান্ডা একদম চাঙ্গা। আমাদের বেকম্যানদেরও আছে কিছু সুপার পাওয়ার। বেস্ট ইনগ্রেডিয়েন্টস, বেস্ট অটোমেটেড মেশিন, উদ্দেশ্য একটাই, ঘরে ঘরে এমন অসাধারণ কিছু মুহূর্ত তৈরি করা। ইটস আ বেকম্যানস ক্রিয়েশন। বিকাশে খরচ কমছে, ক্যাশ আউট 1014 টাকা 90 পয়সা। Well, a second over now for Chris Jordan. Only he's going round the wicket because he's got a left-hander in front of him. He's trying to get it for 133, average 25. They need him to do much more. Oh, he's flirting with danger. So tough being a parent. Right, how high did that go? Just 14 meters. It was in the air long enough and Rashid didn't have to do much. Most days that'll clear the fielder there. Pitches worked perfectly for England throughout this tournament. They haven't really moved away from test match lengths. Where you just bang away at length. They've not had to really go to their variations. And in Woakes in particular, they have that test match type bowler. And Jordan's doing that as well. Right, Captain Nasser, how are you playing this? Now Woakes has bowled 2.
it's his strength. You keep Vokes going. What if Jordan gets a wicket? Do you keep him going as well? Do you want to pull them back? I'd give Vokes one more, definitely. Get another wicket, and you're nearly there. Jordan you may need at the depth of the innings, so you have to think with no Tamal Mills, you have to think of your depth bowlers. Could go Wood straight up. It does seem to be doing quite a bit for the seamers, so I would follow with Wood. Give them anything, no freebies at all. Keep the pressure on, only change when they've reacted. I know Conway well. He played some cricket down at Somerset in the Blast, but also he got a shed load of runs against them last summer before the World Test Championship final. Test cricket, but this is completely different. For a while, these two New Zealanders have got to get a partnership going. You'll be aware too that the required rate's already 9.3. No timing. No timing at all. England tightening the screws very, very early in this game. A lot of the batters have struggled with their timing. It tends to suggest that 166 is a pretty good score on here. Maybe too paced. Some are hitting a bare patch and dying, some in a green patch and zipping through. Only once has a total bigger than this being chased down. Sri Lanka versus Bangladesh. What an over. Not a run of the bat so far. He wants to finish it well. 11 semi-final appearances for New Zealand. For a reason, they're a wonderful side. Not one of them's got converted into a title. And it looks like it's getting tougher and tougher by the minute for them at this T20 World Cup. Right now, has he broken the shackles? One bounce into the boundary for 4. Not enough, but it's a big inning, 18 for 2. Oh, green tea, right? তাই তো বলি স্কিন এত সুন্দর কেন? Thanks, but normal tea. এখন নিশ্চয়ই পার্লারে? না, ডিরেক্ট পার্টিতে। সবাই তো জিরাস হবি। রিভাইভ ময়শ্চারাইজিং লোশন, ডাবল ময়শ্চারে ডাবল কেয়ারে বিউটিফুল স্কিন। রিভাইভ ময়শ্চারাইজিং লোশন। বিকাশে ক্যাশ আউট সার্চ করছে আর সেন্ট মানে তো ফ্রি। Such an asset when you have someone like Vokes who can bowl so effectively up front. The white ball hasn't moved a lot this World Cup, but it has today. Perfect for Vokes. Oh, he's gone through with a shot. Just 2. Timing wasn't quite there. 2 wickets already for Vokes. Both big wickets. Guptill with a leading edge, just through the shot early, and then trying something different. Kane Williamson trying the scoop, but scooped it straight to Adil Rashid. They can't afford to lose any more wickets, but they can't let the asking rate go up. It's a dilemma. They have no option but to keep playing shots. This will become an handy. There's just one field in the deep. He was in another pin code. Yeah, because we're in the power play, we need a third man because the pitch is doing a little bit and Billings is out a deep square. Mitchell moves into double figures, his first boundary. Call it postcode in England, don't you? Pin code in India, zip code somewhere else. There's a postcode. One there is that middle one, bowls back of a length. England have discussed this at length in this tournament. They feel the pitches are a bit too paced.
and just keep bowling back of the length unless someone suddenly gets on top of that length, which no one really has managed. This is perfect from Mitchell. Last ball getting a boundary without taking a chance. 7 of the overs so far. We mentioned Moeen Ali a little while back. I just think it's been a fantastic tournament for him. He's done everything the captain's asked of him. Some of us were sitting making a team of the tournament, as we always do, and Moeen was one of the easiest picks. .131 strike rate, average 46. You ask him to bat at 3, he'll say yes. Ask him to bat at 6, he'll say sure. Yeah, he's a good fielder, and obviously in the power play and in general, he's been quite brilliant with his off spin as well. Ooh. Most points for England, Moeen Ali. No surprise at all. He gives you points with 2 skills. Chris Woke 68, Malan 57, and the lone New Zealand win there so far is Sodhi. Oh, he needed to hurry. Luckily for him, he ran with the shot. You have to be careful because he found England's best fielder in Chris Jordan at mid-off. Outstanding athlete, Chris Jordan, had 3 stumps to aim at. He had to just run round Wokes. That was the problem for Conway. I think he would have got home anyway. Let's look. Yeah, just had to run round Wokes. You're right, if you're someone like Chris Jordan, you don't get much batting to do. You still contribute 2 ways. That's so important for everybody who plays this game. That's a bare minimum, that's a given. 2 for 16 after 3 for Wokes. It's 26 for 2 from 5. ডেলিভারি নেয়ার পরই লাইফবয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন, সুরক্ষায় 10-এ 10। দাঁতের শিরশির অনুভূতি থেকে আরাম পেতে ডেন্টিস্টরা সেন্সোডাইন ব্যবহারের পরামর্শ দেন। ওরে জাগা, একটা ঠান্ডা দে না। ঠান্ডা। একটা ঠান্ডা একদম চাঙ্গা। One more to go in the power play. We will see some spin from England. Used spin a lot in the power play through this tournament. Slight change in plans by the England captain this time around. The 2 seamers opening up together up front. So now we will see some spin. Moeen Ali has done such a good job through the tournament in the power play. And it'll be Adil Rashid. How does New Zealand approach this? They found themselves in a bit of a hole. They've got to find a way out of it. As I would say, really, that they need a partnership. Pressure on that man who may be feeling it. And next to me might be feeling the nerves as well. Good evening, Simon. Natalie, to you, no nerves here. Best sider on top. So well placed. Very nicely done by Conway. And the boundary that's been needed. So one of the keys for New Zealand and having Mitchell at the top, and one of the reasons for it is also to have Conway in the middle. They say that he plays spin as well as anything. Reads spin very well. Got a tough ask here with Adil Rashid bowling a lot of wrong ins. Moeen Ali, I'm sure, will enter the attack shortly. This is part of the reason New Zealand went with Conway in the middle. Gotcha. Conway has made the move to New Zealand a few years back, and it's really paid dividends for him. His family's enjoying it.
And John Mitchell there as well, I can see. Former All Black coach, former number 8 as well in his playing days. It's a long ask from Adil Rashid. Thought about it initially. Sort of stuttering appeal in a way. Don't seem to even be considering it. John Mitchell was England assistant coach as well. Not that he'll have any affiliation to England tonight. The All Whites there as well, New Zealand's football team over in this part of the world. A bit of training going on. Maybe just got away with that a little bit. His leg side. Just a small opportunity there to get some more runs in this over. So crucial. New Zealand have a good few overs. Oh, that's just what was needed. And what a way to finish the power play for New Zealand. 36 for 2. দেশের একমাত্র 100% পিওর ভ্যাসলিন পেট্রোলিয়াম জেলি ত্বকের যত্নে মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ। আমাদের বেকম্যানদেরও আছে কিছু সুপার পাওয়ার, বেস্ট ইনগ্রেডিয়েন্টস, বেস্ট অটোমেটেড মেশিন, উদ্দেশ্য একটাই, ঘরে ঘরে এমন অসাধারণ কিছু মুহূর্ত তৈরি করা। ইটস আ বেকম্যানস ক্রিয়েশন। ডেলিভারি নেওয়ার পরই লাইফবয় হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে থাকুন, সুরক্ষায় 10-এ 10। বিকাশে খরচ কমছে, ক্যাশ আউট 1014 টাকা 90 পয়সা। Power play's done. 6 overs gone. New Zealand had a little recovery towards the end of the power play. Need quite a bit more. The field can spread now as well. And that means Morgan is going to Wood. Wood's couple of overs the other night were very expensive against South Africa. All the ball here. So far we've seen bowlers, in particular the seamers, going into the pitch hard. What is he aiming for? Look at the field that they're setting up at the moment. You'll see the fielder going down to third on the boundary. They've got a sweeper on the offside as well. On his back. Spinning leg is back as well. So he's finding. Saying that partnership goes without saying, but they cannot dawdle. They can't afford to have a partnership that takes time. And these two has to still be relatively aggressive. Can't leave those to come 13, 14, 15 and over from a long way out. New Zealand have to find a way to pick up a boundary and over and be relatively aggressive. Mitchell, 49 off 35 against India. Was powerful up the top, was dismissed just before the game was won by New Zealand. Part of the reason for Mitchell at the top. He plays the quick bowling very well. Spent a lot of his younger years learning his trade in Perth in Western Australia. Does like to run at the spinners as well, particularly the off spinner if Moeen Ali gets an opportunity. Was 2, and he was always going to come back. Conway was very quick to turn,
There's a nice early call as well. Those twos can be important. A few dot balls racking up means that the run rate required just keeps going up. And one of the things that New Zealand will know is that England have struggled with the bowling and the closing overs its last 5. They have also already used Jordan for 2 overs as well, so something maybe to look forward to for New Zealand at the back end, but how much do they want to score in those last 5 overs? Cries of catch it. Is this another one? Nope, this time around the luck goes with New Zealand. Just too high for Mitchell on that occasion. Well above the head. Still went at it. Top edge. Just eluding Butler. Look how high that is. Can't control it. Can't keep down. Swivel on top of it. So fortunate for Mitchell. So far in this over, Wood has just about touched the 150 mark. 149 the second delivery. Rest 144, 140, 139. His pace has been up there. The thing that, well, what hasn't been up there is the ball. Everything's been halfway down from Mark Wood. This was against South Africa. He just went short, just continued to bowl short, used the big sides of the ground, and looked to ruffle feathers with that genuine pace. You see 1 full toss and everything else was short. 1 or 2 maybe on that good length. A lot of teams employed that in Sharjah into the surface. And it was expensive in the end. Wood's done well in this over. He's not gone for much. He was expensive in his previous game. His first over this time, just 5. পাপরিকা আর মেক্সিকান মশলার মাইন্ড ব্লাস্টিং ফ্লেভারে টিটোস বাকি হবে জোস যদি থাকে টিটোস। শিরশির অনুভূতিকে দ্রুত হার মানান সেন্সোডাইন র্যাপিড রিলিফের সঙ্গে। বিকাশে ক্যাশ আউট সার্চ করছে আর সেন্ট মানি তো ফ্রি। Well, New Zealand know what they're chasing. They did have a real stuttering start. They struggled in terms of putting runs on the board, lost a couple of wickets, and hence why they dropped away from what England were doing at the same stage. Now they've caught up again. Can they have a good finish? How much do they also want to leave towards the back end as well? It's first over, expensive. Conway played him well. New Zealand have got a little bit of power, and Phillips, Neesham, Santner can certainly play. Question will be, what can they do in the last 5? If you're looking from a New Zealand point of view now, 60 runs in the last 5. They can go at 12 with wickets in hand, so they need to be 106, 107 with 5 to go. That in turn means 8 and a bit and over for the next 8. So 8.5 and over for the next 8. Through to the 15th, target 60 off the last 5 with wickets in hand. That'll be something that New Zealand will be thinking about now. Well, right now they're struggling to even go to run a ball, so they've got to find a way to get a move on, obviously, in these next few overs. Who takes the risk? Against the spin, I think Mitchell's got to take a risk. But for me, it's Devon Conway's job now to try and bat through the innings. He's that sort of player. He's not as powerful as Mitchell, but does time the ball well. So to me, his job is probably to anchor the innings a little bit more, bat through at a strike rate of that 120, 115. Mitchell's got to take a few more risks now, I think.
You speak about what New Zealand might want in those last 5 overs, what they think they can chase. What would England be happy with having in the bank? Well, for them it's all about wickets. They pick up 2-3 more wickets. If New Zealand are all of a sudden 4 and 5 down leading into that last 5, then it becomes so much tougher. At the moment, even the bad ball is not getting put away. That's a rank short ball, and it's not getting put away. Well, that's between Nathan Lemon and the skipper, Owen Morgan. They've got this little code worked out. All right now, it's a good recovery from Rashid's point of view, just 4 off that over, 45 for 2. এইটা নেন তোমাদেরকে লেবুর গুরুত্বটাই বুঝাতে পারলাম না ত্বকের জন্য লেবু যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝেই আমরা মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলিকে তৈরি করেছি লেবুর নির্যাস আর ভিটামিন সির গুণ দিয়ে তাই ত্বকের সম্পূর্ণ সুরক্ষায় ভরসা রাখুন শুধু মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলিতেই দেশের একমাত্র 100% পিওর ভ্যাসলিন পেট্রোলিয়াম জেলি ত্বকের যত্নে মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ Well, New Zealand might need some firepower tonight if they are to get to this total. They're falling behind the run rate. So will it come from the bat of Glenn Phillips? He's hit the most sixes in T20s this year. Will it come from the bat of Phillips? He had a tough time in the field. Threw his body around, got a few bruises, I would imagine. Saved a few runs for New Zealand. Did drop a catch towards the end. He might be wanting to make up for that. And he certainly can do it with the bat. Back-to-back good overs from an England point of view with the ball. Speed of that. There's been some quick ones over the course of the tournament. Yeah, a couple of teams have used their paces to good effect at this stage of an innings. Heinrich Nortje did a good job for South Africa, hold a good pace, hold consistently a good pace as well. Average speed. It's very similar to what an Heinrich Nortje would do in terms of average speed. It was expensive in Sharjah, but they might be enjoying the slightly bigger boundaries and certainly the situation here as well. Keeper was interested. Still having a chat as well. Morgan's going to have a chat now with Butler. Yeah, I think he's all right. One for the over. Mitchell was interested for a moment. Well, that's above the head. So how's that not a wide? Oh, yeah, well, I don't know. Yeah, players joke about appealing just to make sure it doesn't get called wide. Not to say that that happened that time, but who knows? Well, at the moment, just struggling. Daryl Mitchell can't hit it off the block. Timing is not there. England are bowling brilliantly. They're a little bit behind, but that won't bother them at this point in time. They've been exceptional in the last 3 overs in particular. Moeen Ali, when he started his innings, also just struggled to time it and adapt to the pitch. Once he had got his first boundary away, then he started to flow. He had a very good undefeated 51 with 37 balls. It's good fielding again. Putting pressure on the batters all the time, and the pace is really up there from Wood's point of view. He's bowling with gas. Yeah, another one at 150. He has every effort, Mark Wood,
Love watching him bowl. That is seamed away from Conway. Difficult to play at 150 k's per hour. England on top here at the moment. They have looked a fantastic outfit throughout the tournament. Wondered about the loss of Tymal Mills and Jason Roy. They've been superb again tonight. See, they're trying to change the situation, but the timing is not there. There'll be another run here for New Zealand, which brings up then the 50. 50 for 2. ওরে জাগা একটা ঠান্ডা দে না একটা ঠান্ডা একদম চাঙ্গা আমাদের বেকম্যানদেরও আছে কিছু সুপার পাওয়ার বেস্ট ইনগ্রেডিয়েন্টস বেস্ট অটোমেটেড মেশিন উদ্দেশ্য একটাই ঘরে ঘরে এমন অসাধারণ কিছু মুহূর্ত তৈরি করা ইটস আ বেকম্যানস ক্রিয়েশন বিকাশে খরচ কমছে ক্যাশ আউট 1014 টাকা 90 পয়সা From a comparison point of view, after 9 overs, New Zealand already find themselves 10 runs behind. Talk about scoreboard pressure. Well, in the semi-final, their target is probably now looking quite far away from New Zealand right now. They've got to find a way to change the situation. England, oh, they should be very happy, the fans, that's for sure. So right now, they've got control. Here's an interesting move from Morgan. He's done all right through the tournament with the ball. Yeah, and you saw what David Milan did to Glenn Phillips as soon as he came on. The not so much a part-time bowler, but the lesser of the 5 or 6. They have to go at Liam Livingstone here. It's not easy, I know. Bowls off spin to the lefties, leg spin to the right-handers, which makes them tough to play, but they have to find a way to go at him. It was a very similar stage as well. Phillips came in and bowled the 11th over just after the drinks break. Now Livingstone bowling just before the drinks break. Didn't really work from New Zealand's point of view, having Phillips come in. Will this work for England? Might just buy a few overs towards the back end as well for other bowlers. They've got resources in the bank. Everything's about matchups nowadays, and sometimes I wonder whether they go overboard and too far. If your best bowler is still your best bowler, why does he not bowl? I've never known the history of a game that a left-arm spinner can't bowl to a left-handed batsman. It is not as easy, I understand that. But for New Zealand just to completely leave out their best spinner and bowl him only 1 over was quite interesting. Well, some people might be hoping for that. Ones who enjoy those heart-in-the-mouth situations. I think New Zealand wouldn't mind, because it would mean at least they've got to this total. But right now, it's looking very, very far away. He has to go for it. He has to try something. Still, the boundaries eluding New Zealand. Options right, execution just not quite in that extra cover area from Devon Conway, but I love the option, I love the intent. Just held in the surface a touch, which meant it went slightly squarer than he wanted. Quiet rate. This will help the runs a little bit from New Zealand's point of view. That was desperate. Yeah, because of that last shot, the man at long off was moved a little bit more to his right. So it was quite wide there for that one. Normally, a long off might have had an opportunity for this to cut it off, but he was quite wide because of Devon Conway's ability to play the ball inside out over that extra cover area, much like David Milan. Oh, it's just missed out there. Nearly able to take advantage of the Livingstone over. It goes for 8. 58 for 2. Halfway through in terms of overs, it's now time for a drinks break. ভাবছেন এসি চালালেই বাড়বে বিদ্যুৎ বিল?
আরে যদি থাকে গ্রি নো চিন্তা ডুচিল গ্রিএসি ইনভার্টার টেকনোলজি বাঁচায় বিদ্যুৎ খরচ আর পরিবেশ বান্ধব গ্যাস বাঁচায় পরিবেশ গ্রিএসি একটু বেশি ঠান্ডা বিকাশে ক্যাশ আউট চার্জ কমছে আর সেট মানে তো ফ্রি এইটা নেন তোমাদেরকে লেবুর গুরুত্বটাই বোঝাতে পারলাম না ত্বকের জন্য লেবু যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝেই আমরা মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলিকে তৈরি করেছি লেবুর নির্যাস আর ভিটামিন সির গুণ দিয়ে তাই ত্বকের সম্পূর্ণ সুরক্ষায় ভরসা রাখুন শুধু মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলিতে ওরে জাগা এত ঠান্ডা দে না একটা ঠান্ডা একদম চাঙ্গা দেশের একমাত্র 100% পিওর ভ্যাসলিন পেট্রোলিয়াম জেলি ত্বকের যত্নে মায়ের স্পর্শের মতোই বিশুদ্ধ হ্যাঁ বল নাইর বাসায় আসি নাকি না জিজ্ঞেস করছিলি কেন খেলা তো দেখতেছি আমি বাসায় আছি ফাইনাল পর্যন্ত বাসায় থাকবো কথা কথা শুনতেছি না একটু ঠিক করে বল নো ক্লাস কালকে শুধু 5টা থেকে 7টা ঘরে ক্লাস বাসায় একটু দাঁড়াতে নাই তোর কথা একদম বাজে আসতেছে দাঁড়া এখন বলতো খেলা দেখবো কোথাও মানে বাসায় খেলা দেখবো তুই কি এক্সপেক্ট করছিস হ্যাঁ তুই কই ঢাকায় কালকে তুই ঢাকায় আসলে কালকে তোরে কি আর আসতে দিবে আমার এখানে যদি পারিস যদি পারমিশন দেয় তাহলে এসে পড়িস খেলা 8টায় এই শোন তারপর আসবি তারপর কি থাকবি না চলে যাবি আবার পরের দিন কখন যাবি মানে তুই তো আবার তাড়াহুড়া করিস আসলে আমার কোনো ক্লাস নাই রবিবার পর্যন্ত বাইরে কোনো ক্লাস নাই আমার খালি শনিবার দিন বাইরে যেতে হবে ওই রিপোর্ট আনতে না শুক্রবার কিছু নেই যদি পারিস তাহলে কালকে আসবি কালকে তুই কি বাসার থেকে আসবি কালকে হ্যাঁ এখন বাসার থেকে আচ্ছা আমার কল দিস কালকে কল দিস অনলাইনে হ্যাঁ না পরীক্ষা হচ্ছে নভেম্বরের শেষে এখন মানে অনেক চ্যাপ্টার 1 2 3 অনেকগুলো চ্যাপ্টার ওই জন্য পড়তেছে মার্ক দেয় না কিন্তু করছে ভালো লেখছে ভালো মানে এখন একটু হোল্ডে আসে শুরুর দিকে কেমন ছিল না কিছুই পারতেছিল না মনে আছে অনেক সমস্যা ছিল না আমার পড়াইতে এখন আবার নরমাল হয়েছে ওই সেজুতিরা আসছিল সেজুতি পিন্টু আর শেরি খালাম্মা আর নানা এরা আসছিল তো পুবলিকে দেখতে এই জন্য তখন খাচ্ছিলাম কথা বলতে পারতেছিলাম একসাথে না আমি জাস্ট নাম বললাম না না আরে
একসাথে আসে না, বুবলিকে দেখতে আসে। করায় এই যে যেখানে আমার বাসার সামনেই করায়। বাইন্ডিং ও 30 থেকে 40 টাকা। Brave captain here in UAE with the তো নেটওয়ার্ক আজকে তো বাজে কেন? তোকে সিমে কল দিব? ফাইট হচ্ছে, শেষের দিকে ফাইট হবে, যদি উইকেট ধরে রাখতে পারে শেষের দিকে ফাইট হবে। হ্যাঁ এখন ঠিক আছে। আমি এখন কথা বলার জন্য বেডরুমে দেখতেছি, আমার রুমে, আর এমনি খেলা বাইরে দেখি। পাকিস্তান আসতেছে বাংলাদেশে, এই নেক্সট উইকে আসতেছে। দুবাই থেকে ডাইরেক্ট চলে আসবে বাংলাদেশের খেলা T20। তুই থাকলে আমার জন্য ভালো হইতো, তোর তো সমস্যা। তুই থাকলে ভালো হইতো, মুভিটা দেখতাম রবিবারের পরে। শুক্রবারে যে ভিড় থাকবে। এখানেও আসে নাই, দেখি একটু লাইনে থাক। এত বাংলা সিনেমা এগুলো সরাই দিয়ে আসলে ইংলিশ সিনেমা দিলেই ভালো। ও রাইট, এটা অবশ্য নাই, আমি চেক করি এবার, ফাইনালি ভালো মতো চেক করি। এই ওয়েবসাইটটা বেশি একটা ভালো না তো। নো টাইম টু ডাই আর ডিউন আর ভেনম। আচ্ছা কামিং ইটারনালটা দেখি কবে আসবে। আমি জাস্ট কামিং সুনটা দেখি, ওয়েবসাইট ভালো না, কামিং সুনে একটা ছবি দেওয়া থাকে। রেসিডেন্ট ইভিল আসবে, স্পাইডারম্যান আসবে, গোস্টবাস্টার, তুই না এগুলি আসবে কামিং সুন। ডেট বলে নাই, জাস্ট কামিং সুন। তাইলে তো তখন জেমস বন্ডটা থাকলে কিছু না, বুবলিকে দেখলো, গল্প করলো, চলে কে আলবির ফ্রাইডে তো বুধবার। ফ্রাইডে বিকালে। কোনটা রে? ওই যে র্যাবিট হোল। তো র্যাবিট হোলটা আমি আরো কয়দিন ইউজ করব, আমারটা বন্ধ করে দিব আজকে। তোরটা যেহেতু কালকের থেকে ইউজ করবি না, আমারটা বন্ধ করে দিব। তোরটার ইমেলটা মনে আছে তোর? কেটলিব 20 KATE। হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে ওইটাই দেখবো তাহলে। বাংলাদেশে খেলা আছে তো, অনেক সময় পড়াতে যাবো, রাস্তায় থাকবো 2 ঘন্টা, তখন দেখবো। কালকে না, মানে বাংলাদেশে খেলা যখন 20 তারিখ থেকে হবে তখন। র্যাবিট হোল, সব র্যাবিট হোল অফিসিয়াল পার্টনার। জিটিভি, গাজী টিভি বাংলাদেশ। ভালোই, এখন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগও দেখাচ্ছে লাইভ। হেভি ইনকাম।
কথা বললাম সন্ধ্যায় আসে, সন্ধ্যার শুরুতেই আসে, সন্ধ্যার একটু আগে। কিলোর আন্টিরা চলে যাচ্ছে আমেরিকা 20 তারিখ, ওর জামাই কাগজ হয়ে গেছে। এটা তো বলতে পারি না। এখানে ঢাকায় কি করতো, বিল করতো না, বিল্ডার্সকে বাসাতে ছিল। তোরা দিছিস উত্তরাটা বিল্ডার্সকে? বিল্ডার্সকে দিলে তো লাভ, অনেক টাকা পাবি। বিল্ডার্সকে দিলে লাভ আছে, অনেক টাকা পাবি, 1-2 কোটি টাকার উপরে পাবি। হ্যাঁ, সাইনিং অ্যামাউন্ট অ্যাটলিস্ট 1 কোটি টাকা তো পাবি। হ্যাঁ, উত্তরাতে সব কিছু দাম বেশি এখন, আর ওই জায়গাটাতে এখন আরো উঠতেছে। আশরাফুল মিছিলে গেছে, আশরাফুল মিছিলে যাইতেছে, এত বছর পরে মিছিলে যাইতেছে। ওদের বাসার সামনে একটা স্কুল হবে, ওই স্কুলটা যেন না হয় ওইটার জন্য প্রোটেস্ট করতেছে ওরা সবাই। ওর বিল্ডিংটার পাশের বিল্ডিং এ স্কুল বানাচ্ছে বিরাট, তো স্কুলটা বানাইলে ওদের ওখানে অনেক গ্যাঞ্জাম হয়ে যাবে, রাস্তাঘাট জ্যাম হবে ওই দিক, মানে ওদের কম্পাউন্ডের ওই দিক। ওই জন্য হ্যাঁ, ওটার ভিতরে পাশের বিল্ডিং, পাশে খালি জায়গা ছিল, ওটা স্কুল না। ওই স্কুলটা ওরা অনেক পাওয়ারফুল, ওরা সিস্টেম করে বানাচ্ছে। রাইট, ওই পুরা বিল্ডিং, পুরা তোর কম্পাউন্ডে তো অনেক বাচ্চা, ওদের জন্য সুবিধা হবে। ও মিছিলে গেছে, ওর মা বলছে ইট মারতে, কি সব করতেছে, উপরে থেকে ছাদের থেকে ইট মারতে বলছে। ইট মারলে যদি মানুষের মাথায় পড়ে, কোন কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কারের, কেসে ভাইসে দেবে পুরো। হ্যাঁ, কথা প্রায় কথা। ওই আজকে আমার নক দিছে, ইটারনালসটা কবে দেখতে যাবা প্লিজ, আমার জন্য একটু মিরপুরে করো, আমি বাসার থেকে খেয়ে যাব। এই আবার লেগছে, এই একটা মার্বেল মুভি দেখার জন্য আমি আগ্রহতে বসে আছি। দেখলে ইয়াতে আসো, সীমান্ততে আসো, না হলে কোথায় আসো। আরে আসবে না, আমরা দুজনে দেখবো। ও এদিকে আসতে চায় না, দেখতে দিবে না তো ওই সময়, মাত্র অপারেশন হবে না, তখন দেখতে দিবে না। বিকালে ওই সময়টা আর দেয় না, ভালো হসপিটাল তো আরো দেয় না, কারণ ইনফেকশনের সমস্যা থাকে। তো ও যখন বাসায় যাবে তখন দেখতে পারিস, অথবা যদি হসপিটালে থাকে তখন বেটার সবসময় বাসায় চলে যাওয়ার পর, কারণ ওই সময় হয় কি তোর ওই সময় ইনফেকশন থাকে, বাইরের মানুষজন না দেখা ভালো। শনিবারে আমি যে কালকে আমার গলার একটা ফ্লুইড দিচ্ছে না, ওইটা রিপোর্ট দিব, ওইটা রিপোর্টটা নিব ইনশাল্লাহ। আর একটু ওই পাশেই রাইফেল স্কোয়ারে যে আমি আমার গেমটা চেঞ্জ করবো, মানে আমি একটা জিটিএ ফিজিক্যাল কপি কিনছিলাম, তো ওই সময় ওইটা চেঞ্জ করে অন্য একটা গেম নিব। জিটিএ তো আমি কিনছি অনলাইনে, মানে আমি তোর আমেরিকানটা কিনছি আর কি, রিজন 1, নাহলে সমস্যা হবে পরে অনলাইন খেলতে গেলে। একই দাম, 200 টাকা মনে বেশি অনলাইনে। হ্যাঁ, আমি ধরি নাই, ওটা ইনট্যাক্ট আছে, ওইভাবেই আছে। একটু ক্যাচাল করবে, কিন্তু রিকোয়েস্ট করবো, রিকোয়েস্ট না মানে বলবো ভালো মতো, কারণ আমি তো অনেক কিছু নিছি না। আনটিল ডন অথবা আনচার্টেড, যদি আনটিল ডন না থাকে, আনটিল ডন আমি অনলাইনে কিনবো নি, আনচার্টেডটা কিনতে পারি প্যাকেজ। হ্যাঁ, রামি যেটাই বলছে একসাথে, যেটা রিমাস্টার করা 1, 2, 3। আনটিল ডন, আর যদি ওইটাও না থাকে, অনেক সময় তো গেম থাকে না, ফোর্জা হরাইজন একটা আছে, ওটা কিনবো এক্সবক্সে। এই এক সমস্যা, আগের মতো হবে না। তুই আর কি বলবি, তোরে আমি কবে থেকে বলতে বলছি, তুই এতদিনও বলিস না। জিটিএটাই আসলে এত মজা, এত কিছু, মানে অবাক লাগে মাঝে মধ্যে খেললে, আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই কি হইতেছে। মানে গেমাররা
না সবই খেলছি, কিন্তু এটা 2013-তেই বাইরেছে, তাই এত অ্যাটেনশন টু ডিটেল মানে কি নাই, শেয়ার বাজার পর্যন্ত আছে, এটাই আমি বুঝতেছি না। তারপর দেখ আমি এখনো অনলাইনে যাইনি, আমি ভিডিওগুলো দেখছি তো অনেকের বলতেছে যে অনলাইন মানে অফলাইন যেটা খেলতেছেন এটা কিছুই না কম্পেয়ার টু অনলাইনে যেটা আসবে। আর অ্যাডিকশন অলরেডি বাইরে গেছে, আমি প্রতিদিনই খেলি। মানে কথা হলো ওরাই বলতেছে যে অনলাইনে যেটা আছে অফলাইনে কিছুই নাই ওইটা তুলে, আমি তাই অবাক, আমি অফলাইন খেলে আমার মাথা নষ্ট হয়ে যায় যে এইটার মধ্যে সবই আছে, কোনো কিছু মিসিং নেই। অনলাইনে নাকি অনেক কিছু আছে, মানে নতুন নতুন মিশনও আছে, আর মানে মিশনগুলোও একটু ডিফারেন্ট টাইপের, মানে মনে হয় মাঝে মধ্যে মনে হয় যে মুভি দেখতেছি এরকম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই শুরুর থেকে তিনটাই ক্যারেক্টার নিয়ে তো খেলেই না, মানে তিনটাই তো থাকে যেটার সময় যেটা খেলতে মন চায়। অনেক সময় একটা ক্যারেক্টার মিশন সব শেষ হয়ে যায় ওই মোমেন্টের জন্য, তখন তো অন্য ক্যারেক্টারে সুইচ করতেই হয়। ওটা থাকেই, হ্যাঁ এইটাই, তোর তো মনে নেই। যেমন এখন আমি যারই বলি না, শোন না, যারই বলি জিটিএ সবাই তো মানে খেলে একদম শেষ পৌঁছে ফেলাচ্ছে, বলে হ্যাঁ আছে বোরিং এরকম বলে, বুঝছিস, মানে এত খেলছে না ওরা এখন বোরিং। আমি তো জীবনে দেখেই নাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জিটিএ 4 পর্যন্ত লাস্ট খেলছি, তো তখন পিসিতে খেলছিলাম আমি। এই জিটিএ ট্রিলজিটা বেরোচ্ছে, ওই যে ভাইস সিটি ওগুলা মানে রিমাস্টার PS4 এর জন্য, PS5 PS4 বাইরে, মানে কোথাও কোন বাইরে। ও না ভাইয়া এখনই বলে খেলতে, কিন্তু আমি খেলবো না, কারণ এইটা একবার আপনাদের অ্যাডিকশন লাগিয়ে গেলে আমি সিরিয়াল পাবো না, আর এক বিট ঝামেলা হবে। এখনো জানেই না যে আমার এখানে একটা কিছু আছে, যে মানে জানে যে একটা মেশিন আছে, মেশিনের কাজ কেটে জানে না, ও আসলেই আমি গেম পজ করে দিই, আমি অন্য কাজ করি। আর আমি খেলি মনে করে 11টার পর, 11টা থেকে 1টা 12টা পর্যন্ত, তো ওই জন্য তখন থাকেও না। কিন্তু না বাইরে আমি একদিন নিতে যাচ্ছি, কারণ বাইরে এইটা আমি কিনছিলাম তো 4K রেজলিউশনটা দেখার জন্য, বাইরে আমি একবার নিতে যাচ্ছি যে কেমন আসে দেখার জন্য। না না না, ওটা আমার মাথায় আছে। সো এইটাই শনিবারে শুধু এইটাই প্ল্যান। এখন তুই চিন্তা কর তুই কয়দিন থাকতে পারবি, তুই প্ল্যান প্রোগ্রাম করে আয় প্লিজ। উল্টাপাল্টা যে আইসে ঘুম থেকে ওইটা আবার বলবি চলে যাই, এগুলি করিস না, ঠিক আছে? তুই দেখলে দেখবো, এখন সমস্যা নাই। আমি এখন সত্যি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, আমি গেম খেলেই কুল পাইনি। আর খেলাতেই তো সন্ধ্যার পর টাইম চলে যায়, আবার স্টুডেন্ট থাকে, তা আমি যে সময় দেখতাম ওই সময় তো গেমই খেলি এখন। না এত সোজা কোনোদিন আসতেছে না। না না না, এটা থিয়েটারে আসছে তো, অনেক ওয়েট করছে, তাও ভালোই লাভ হয়েছে মনে হয়, মানে একদম ওইরকম লাভ না হলেও মানে যথেষ্ট লাভ হয়েছে। হুম হুম হুম, আউট, হুম আউট হয়ে গেল না, আউট হয়ে গেল। আন্তিম দেখছিস, আন্তিমের ট্রেলার, ওই যে আয়ুষ সালমান খান, সালমান খান ওই যে শিখ পাঞ্জাবি, কেন হুম হুম, হুম। কালকের খেলা কিন্তু খুব মারামারি হবে, নাইতে তাহলে ঘুমা যা, তুই কালকে আসি, এসে দেখবো নি মজা হবে।
This is what today, as I said, people want you to get past the pitch. Everything is shot. Coming on last week. Others are finding it difficult to score against him. This is what the New Zealand brothers should expect. Determination. And poor. You want to score runs on these big square boundaries? Prepare to get your hook shot out. This is not last thing. Look at the speed. That's what England are going to. Yes. When you back in, 1 minute shot, is Jordan Hussein. You touch the first cooler. Who England would like to ask questions of the brothers like pulling the ball. That's going to throw this one. Slides to the right. Comes out here for New Zealand. Quite a different surface. Such a different ground. The bar, the charge, versus here tonight in Abu Dhabi. Kicking the ball.
किसी से दो नंबरी नहीं करता, किसी से बदतमीज है उसकी। बहुत खूबसूरत बना ये दुनिया के लिहाज से नमाजी पढ़ते हैं, आलिम पढ़ते हैं, तबलीग गुजार पढ़ते हैं। ज़बान पे कहूँ जन्नत में अल्लाह something about our country. Yeah. So capital Islamabad, as you all know. You guys have both enjoyed Melbourne? Yeah. There are a lot of things in Pakistan you can see, like we have diverse culture. Our Prime Minister is the best player in the world. He was Imran Khan. Now he's the Prime Minister of our country. So we've got sports, we've got all these things. So when you come for Pakistan, so I will make you. You'll make a Yeah. We'll play you in squash. Yeah. You want there's a lot of I'll sports. play you. Yeah. We've got mountains. If you want to come and see the mountains, the highest second mountain in the world. And there are a lot of things you can do. Our sports. Yeah. So our popular sports is cricket, obviously, but hockey is our national sport. So I wish you best of luck. Thank you. Just what things. These are the things. Yeah. This is Mumbai. Good on you guys. Good on you guys. Brilliant. Tranqui 8. It's like riding a bike is always a
एक मैच जीतते हैं तो 2 हार जाते हैं, 2 जीतते हैं तो 3 हार जाते हैं। तो ये जो इनकन्सिस्टेंसी का टैग है, इसको उतारना और फिर वर्ल्ड कप में जाके उतारना एक बहुत बड़ी एक इन्होंने मार्का मारा है। सो सबसे पहले तो मुबारक हो, क्योंकि ये जो पाकिस्तान इकट्ठा हुआ है क्रिकेट के पेज पे, ये इस क्रिकेट टीम की वजह से है। उसकी वजूहात क्या है कि इतना अच्छा खेल रहे हैं। देखिए, कई दफ़ा आप क्लिक करते हैं, कई दफ़ा आप डिस्परेट हो जाते हैं जीतने के लिए, कई दफ़ा आपका रिदम बन जाता है, जैसे कि हमारा 92 वर्ल्ड कप में बना था, कि इतना आप में सेल्फ बिलीफ हो जाता है कि आप समझते हैं कि दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। और फिर अगर आप सर नीचे फेंक के आजिज़ी के साथ क्रिकेट खेलते हैं तो उसके रिज़ल्ट आपको मिलते ही मिलते हैं। सो ये जो आजिज़ाना रवैया था, जिस तरह से इनका कॉम्बिनेशन बना, जिस तरह से बाबर आजम ने लीड किया इस टीम को। देखें, मैं 3 वर्ल्ड कप्स खेला हूँ। वर्ल्ड कप एज अ प्लेयर खेलना ही बहुत मुश्किल बात होती है, आप पे दुनिया जहान का प्रेशर होता है, अपनी एक्सपेक्टेशन से ही आप कई दफ़ा दब जाते हैं। मगर वर्ल्ड कप में टीम को लीड करना और इस तरह से लीड करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनकी। सो 2 मैच और रह गए हैं, मैं उम्मीद यही करता हूँ कि इसी तरह से खेलते जाएंगे। पाकिस्तान 2-3 फ्रंट्स के ऊपर इस वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी तरह से टेस्ट हुआ है। पहला मैच था भारत के खिलाफ, तो आपका टेम्परामेंट टेस्ट हुआ, उसमें आप 100 में से 100 नंबर। दूसरा मैच था आपका न्यूजीलैंड में, जहां आपकी स्ट्रैटेजी, टेक्निक, गेम प्लान टेस्ट हुआ। और न्यूजीलैंड थ्राइव करता है लिमिटेड टैलेंट के हिसाब से, मैं ये कहूँगा कंपेयर टू इंग्लैंड फॉर एग्जांपल या भारत के, इनके लिमिटेड टैलेंट था। तो आपने किसको मात दी? आपने स्ट्रैटेजी को, अच्छी फील्डिंग को, टैक्टिक्स को, पिन पॉइंट एक्यूरेसी को आपने मार दी। फिर आपका मैच था अफगानिस्तान से, जो कि इमोशनल मैच था, जो कि एक टफ पिच पे था और आपको स्पिन के अगेंस्ट अपनी प्रूव करनी थी अथॉरिटी, आपने की। सो तीनों महाजों पे पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है। अब बाकी आ जाती है बड़ा मैच, बड़ा एक नॉकआउट स्टेज में आप चले गए हैं। सो नॉकआउट स्टेज में आपको सिर्फ, अगर आप बैट्समैन हैं तो बॉल को देखना है, आपने प्रोसेस को फॉलो करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज इसी तरह से स्ट्रांग होनी चाहिए। जीत और हार जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है, और आपका जो आजाना तरीका है वही आपको आगे लेके जाएगा इंशाल्लाह। पूरा पाकिस्तान दुआएं कर रहा है। बाबर आजम के लिए मैसेज यही है कि कुछ तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से खेल रहे हैं, आपका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, फाइन ट्यून करना है, अपने आप को उठाना है। जितना बड़ा मुकाबला, उतना ही बड़ा आपका चांस है हीरो बनने का, उतना ही बड़ा चांस है दुनिया को बताने का कि हम दुनिया की बेहतरीन टीम है। अपने आप को आप यही बताएं कि आप हार नहीं सकते। और आई एम श्योर ये फीलिंग पैदा हुई है इस कैंप में कि तो कोई हरा नहीं सकता। सो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे फाइनल में कोई भी हो, आपने अपना बेस्ट अपनी क्रिकेट खेलनी है, बगैर घबराए हुए, बगैर किसी चीज़ का फिक्र किए हुए। आप वर्ल्ड क्लास हैं, आप एक ग्रेट कैप्टन हैं, आप एक ग्रेट बैट्समैन हैं, आपने इतनी मेहनत की है, आपके फैंस की दुआएं आपके साथ हैं, पूरी पाकिस्तान की दुआएं आपके साथ हैं। आप हार ही नहीं सकते। अपने आप को कन्विंस ये करें, क्योंकि एज अ क्रिकेटर मैं बता रहा हूँ, इस टीम को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इंशाल्लाह। तो आप बिल्कुल हौसले के साथ उतरें और बताएं दुनिया को कि किस ब्रांड की आप क्रिकेट खेलते हैं। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कोई और टीम हो, आप किसी को भी हरा सकते हैं। Hello, Assalamu alaikum and welcome to the pavilion. आप देख रहे हैं Sports and 10 Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup, and it's a big day. It's the first semi-final that we're bringing to your screens today. दोस्तों, आज है पहला मुकाबला, पहला सेमीफाइनल, और मुकाबला है न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड। It's England clashing with New Zealand. अबू धाबी में ये मुकाबला है, पहला सेमीफाइनल है। दिलों की धड़कनें तेज होना शुरू हो गई हैं और मामला गंभीर होना शुरू हो गए हैं। इस वक्त पवेलियन में मेरे साथ मौजूद पाकिस्तानी लेजेंड्स एंड सुपरस्टार्स। I've got with me the Sultan of Swing, the Fire King, Wasim Akram. The toe-crushing, golf-loving, and now is scuba-loving Waqar Yunus. Why you always bring golf to this? Why you always say that? With that, the cool, the composed, the calm, Misbah and back in the pavilion is none other than our young, dashing Wahab Riaz.
Assalamu alaikum, gentlemen. Welcome, Wasim. Rested? Walaikum salam. Good day off? afternoon. Yeah, great day off. And you had a perfect day. Fakar ने organize किया था हमारे लिए scuba diving Chenna Island पे. It took us an hour and a half by speedboat, and it was the first experience for Miss Pan. Don't worry, another few hours you're going to talk about it again. You're the one who likes to talk. Watch your back. It's all insane. Fuck you! Excuse me. Enough! Thank you. Okay, here's it. Well, we have two options. They're both a little out there. What do you expect? Okay, option one. Hijack the armored cars. Take the crews hostage. We infiltrate the depository. Once you're in there and you've got the score, send in a team of modded cars. Load up and get out. We need to infiltrate the transportation grid and manipulate it to aid our escape. Option two, cause a distraction up front. Make them think we're dumb. Well, we've never had a problem against people that average. The other guys will be drilling, taking what they can. We're going to be the distraction. Always the attention seeker. You know, for a guy who's always stepping on his friends to get ahead, he has an unfortunately low sense of self-worth. Okay, let me show you the board. To recap, these are our options. We try to make them give us the gold, or we drill a big old hole in the side of the bank and we take it out. If you're drilling a big old hole, you'll need a big old drill, a tunnel bore machine. I'll locate it, but you have to steal it and store it near the bank. They're excavating a new part of the metro network around there, so that's where you'll go in. We'll need choppers for the getaway, too. Trevor has one we can use, the other can be bought. The guys on the ground will need a getaway car, so get something fast and tough, and then modify it as much as you can to increase your chances of getting away from the cops. It's got to be stored in a parking garage near the UD. There's going to be a lot of heat, so think about that. I'm forgetting something. Oh, that's it. We'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse. You'll have to steal it. Again, I'll send you the details. Now, if you're interested in the more subtle approach, hijacking the armored cars and so on, we've got to get some police stingers. Only cops are licensed to have them, so that's a headache of its own. What else? You'll need to get a hold of and mod some getaway cars. Normal suspension's gonna give out under a couple of tons of gold. Whoa, man, a couple of tons? 4 tons in total. That's what I can get the system to divert into the cage we're hitting. Fuck me! Okay, last thing. You remember that underpass we saw from the helicopter? Well, that's where I'll set up the smoke and mirrors to get the cops off your scent. I've heard that before. Michael, subtle or obvious? What's it going to be? अरे No, you want him to give you the metal. First gunman comes into the bank with you. It helps you move the gold into the reinforced hot rods. Second gunman is there to take down the armored cars and bring the hostages to a safe house. Well, he's had my back on every job since I got up and running again. He deserves a shot at the big one. And driver number 1 takes the wheel, and the 4th getaway car is going to be at the... This girl, Taliana, she's supposed to be good, and she'll work for way less than she's worth, if you believe that. Okay. This one's new blood. I've seen him drive, but I haven't seen him under pressure. Now, the hacker, they're going to break into the traffic. We'll only get one shot at this thing. Is this the shot we want to take? Okay, we need those stingers and the modified getaway cars. I knew you'd like that. Sounds kind of fruity, if you ask me. Nobody asked you. This is our only hope. Control traffic in this town and control the streets. I think it could work. It will work, as long as we're ready to move now. Come on, I'll take you to the equipment. Fucking asshole. Alright, let's go. What would really turn me on
is you wearing clown base. Wow.
Lester, I got the spike strips we need. Good. Now, once we have all the modified gauntlets, we take this score. Keep coolio, baby. It's just a car. It's just an online persona. It was satire or parody or something. I didn't mean it. Jim? You're taking me up Banham Canyon in this charcoal color Landstalker to punish me for trolling you? If only someone would save me. Stalin, kid. I'll be there soon. You know, you really are funny and interesting guys. I mean, any attention is good attention, right? Front, okay? There's no reason at all to be suspicious of anyone behind us. And if there was, he would just be there to warn you. He would definitely not kill you. Definitely would not kill you. Shut up, troll! You gave up your right to free speech when you insulted a celebrity on the internet. It was a couple of comments, some colorful language. It was harassment. You're the comedy writer. Deal with the heckle. I blocked you. You started another account. I blocked you again. You started another. But what you didn't count on is me having the money and the resources to trace your IP. I count on you having better things to do. Well, I don't. I'm a lonely man, and social media is my life. It's given me the recognition I've been denied my whole life. I can make snarky comments and glib pronouncements and lap up the adulation, banishing any form of dissent. I'm a king, and Bleeder is my kingdom. Okay, that's pretty sad. Don't lose sleep of bleeding, because then you'll be in pain. Ow. I recognize those neck rolls. Jimmy! There they are. The fucks. Who is that animal? You can have your idiot son! Let me take you home. Thank you. Shit. Fuck, man. Do you think it's over? Yeah, he's gone. Are you sure? Because the dude holds like a grudge, and I'm like his nemesis. I wouldn't go that far. Look, he thought you were a fat little nobody. Now he thinks you're a fat little nobody with a badass for a dad. He'll stay away. But I'm like his troll, Pop. I'm sorry about that. You lunatic!
popular on the internet. What sort of jokes? Sort of. Watch it! Meme jokes. Like what? Like someone posts something and you're all like, that sucks, you suck, dick. Oh, so jokes that aren't funny. No, you don't get it. The humor comes with repetition. Like, you say it once, big deal. Then you say it again, and again, and again, and again. Okay. Like the other day, he posts this picture of his newborn, and I'm all like, damn, son, that right there is one ugly-ass motherfucker of a baby. And I'm all like, my balls is prettier than that baby. And then I send him a picture of my balls. I seen roadkill prettier than that baby. What the hell is wrong with your baby? And he's all like, actually, there's a problem with its chromosomes or something, and it's actually a miracle it survived birth. What the fuck out? Miracle it survived birth. And I'm all like, it's actually a miracle I survived seeing a picture of its ugly. Enough! Alright? Fucking enough! I get it. Maybe that one was a little OTT, but it's generally really good times. Yeah, good times. Great times. The fucking fun you have. I'm kind of shaken up, Dad. Could you drive like a sane person? This driving is making me wish I was still kidnapped. The troll is back in his lair. Now stay off the internet for a while. And don't wind people up so much. I learned my lesson, Dad. I did. Yeah, sure. And I'm a tax accountant.
forever. Oh, it's good to speak to you. My thoughts are with you. See, Martin, he treating you well? Have you ever? You're a sweet boy, Trevor. A sweet man. Trisha, I really miss you. I have to go.
Waqar. We all loved it. Obviously, he missed it. The good part you missed, Wahab. Yeah, no, but you know, he said sorry to me very late. If he would have said me sorry before, I would have come. Okay. सॉरी कहने के लिए कोई मुझे कोई माहौल बनाना चाहिए था पहले से. माहौल नहीं बना था. आप टीवी पे तो नहीं आवाज कर सकते ना आप. ये सूरत हाल दोस्तों. वहाब को हमें जो है बड़े महीने से तरले करके वापस आना पड़ा लाहौर से, वरना ये तो मान ही नहीं रही. तो सॉरी वहाब. It's okay. So sorry. You missed it all. Waqar Younis, your first ever experience 10 meters under the water went down. I know, it was awesome. I mean, I never thought I'd feel that good. थोड़ा डर लगा था शुरू में, जान निकली उतनी नहीं जितनी मिसबा की जान निकली थी, लेकिन हल्का सा खौफ था, लेकिन great experience. Thank you for that. I like your tweet that you said that we should promote tourism और tourism के हवाले से आपने कहा come visit Pakistan and it is definitely. हम लोग हमेशा ना नॉर्थ की बात करते हैं कि नॉर्थ इज ब्यूटीफुल. दिस इज, आई मीन, कभी डीप सी कभी जाएंगे तो then you'll see what this side of Pakistan is. I mean, it's beautiful. I mean, the water was crystal clear. मजा आ गया. Phenomenal. Yeah, that's for not first half an hour. No. Yeah, that's a concern. Misbah, आपकी पहली scuba dive, थोड़ा सा आप nervous थे शुरू में, but eventually you really thoroughly enjoyed it, huh? हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था. मेरे ख्याल में वो आप फील ही नहीं कर सकते, आप किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि वो जो फीलिंग होती है नीचे जाके आप वो एक बिल्कुल डिफरेंट लाइफ देखते हैं. जैसे जैसे आप करीब जाते हैं तो बिल्कुल सिर्फ वो पानी के अंदर है, बाकी सारी चीज़ें जैसे आप इधर नॉर्थ पे जाते हैं और आपको बाहर पहाड़ और पौधे और ग्रीनरी और वो चीज़ें नज़र आती हैं. इसमें आप पानी के अंदर होते हैं और वो चीज़ें आपको नज़र आती हैं, फिश नज़र आती हैं, वेटलेस, एंड फीलिंग इज अमेजिंग. तो साइन याद है? जी बिल्कुल याद. कौन सा है किताब कीजिए? बस ये याद होना चाहिए और दूसरा ये याद होना चाहिए. Special thanks to Divers Reef Karachi and Farhan and his team that made it all happen for us. A great memorable time. और जो वसीम अभी बात कर रहे थे कि शुरू पे जो था वो ऐसा नहीं था, तो बिल्कुल यकीनी तौर पर वसीम, बिकॉज आपने बड़ी दफ़ा आवाज़ उठाई है पहले भी कराची के साहिल के ऊपर जो गंदगी है उसके ऊपर लोगों को आगाह भी किया और गवर्नमेंट को मतवज्जो भी किया जो उसको साफ किया जाए. लेकिन कल हमने बड़ा ही एक डिसअपॉइंटिंग एंड डिस्गस्टिंग सीन देखा जो शुरू का पार्ट था जब हम कराची के बिल्कुल शहर के सामने से गुजर रहे थे. Yeah, and that was about for half an hour. Yeah. We were on a speedboat. आधा घंटा स्पीड बोट के इस तरफ और इस तरफ, he was just garbage floating for half an hour. He was floating up, right up there. हमें बोट दो जगह रोकनी पड़ी है कि प्लास्टिक बैग उनके वो प्रोपेलर से फंस गए. बिल्कुल. तो किसी ने वहाँ फेंका तो वहाँ पहुँचा, बट यू नो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी. आई डोंट वांट टू बोर पीपल, बट ये वही हाई टाइड जब आती है तो सारा गंद जो वो भी समुद्र में फेंकते हैं छुप के, वो सारा बाहर आ जाता है. वो इस बीच पे भी आता है, वो हर बीच पे आता है. सो इट्स नॉट अ क्विक फिक्स. इट टेक decades if we start now as a nation. You were telling us also कि वहाँ पे जो एक बड़ी सी एक फैक्ट्री टाइप या when you call it जो पावर प्लांट लगा हुआ था, what was that for? And तो पावर प्लांट तो लगे हुए हैं मुख्तलिफ आपके कोस्टल एरिया के अंदर. उसकी वजह ये होती है कि जो पावर प्लांट को मुसलसल कूलिंग के लिए पानी चाहिए. So they generally either you have them or you don't. It doesn't, but there is some water requirements and all that. And by default ये यहाँ पर लग गए. किसने जब प्लानिंग हुई थी कब सोचा that the power plants also and don't know कि उनका क्या बाय प्रोडक्ट है जो यूज होता है उसमें. बट हमारा जो सीरीज का पानी है कराची का वो और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सारा बदकिस्मती से हम अनट्रीटेड फेंक रहे हैं पाकिस्तान के साहिल पे. और आप तो रुके भी वो पानी पे हैं वो गोल्फ क्लब के शैली पे. फर्स्ट ऑल आई वुड लाइक टू थैंक कराची BHA गोल्फ क्लब जिन्होंने इनके शैली ऑर्गेनाइज किए. बट आई थिंक दे आर लाहौरी को यूज टू नहीं. अभी स्मेल जो आती है जब लो टाइड आती है दोपहर में ठीक हो जाता है. Yeah, evenings when it cools down. Exactly when you go back from where the we are used to it now. Yeah, we will share the videos हम आपको दिखाएंगे of our trip and show you how beautiful our Pakistan is. मसले मिसाइल हर मुल्क में होते हैं, हमारे मुल्क में भी है, लेकिन ये हम पे ही डिपेंड करता है कि हम अपने रवैये किस तरह तब्दील करके उन मसाइल का हल मिलकर तलाश करें और उनको चीज़ों को सही करें. So we'll talk about that now. Let's get to the business side of things. That's the ICC Men's T20 World Cup
semi-final number 1, and it's England versus New Zealand. It's a big game. Wasim, opening thoughts. Huge game, obviously. I don't have to state the obvious. Knockout semi-final of the World Cup. That's what the players play for. That's what the fans wait for. And I must say, gut feeling मेरी जो कह दी है वो बाद में डिस्कस करेंगे लेंथ में. I want New Zealand to win. karma भी होता है ना जो उनके साथ हुआ वर्ल्ड कप फाइनल में, कैसे बल्ले को रख के चौका हुआ, फिर सुपर हुआ, फिर वो हारे. और ये आई थिंक वाहिद टीम है जो बहुत दफ़ा सेमीफाइनल में पहुंची है वर्ल्ड कप और T20 and 50 over World Cup as well. It's a very consistent side, not just this one. Over the years, in the last 15 to 20 years, New Zealand has been very consistent. और अबू धाबी में हो रहा है ये दोनों की बॉलिंग को शूट करेगा, इवन बाउंस होगा अनलेस कोई उन्होंने बिल्कुल बिग चेंज ना कर दी हो पिच पे. तो आई थिंक दोनों टीमों का बॉलिंग अटैक हमने देखा है, क्वाइट एक्सपीरियंस भी है. मगर जो इंग्लैंड की टीम है वो आखिरी 4 ओवरों में उनका काफ़ी डाउन है. उनका 10.21 है जो है जो ऑपोजिशन करती है एवरेज उनकी. तो वहाँ पे इनको अटैक कर सकते हैं आखिरी 4 ओवर. बड़ी ज़बरदस्त बात की वकार वसीम ने कि अबू धाबी की पिच है, ये वो पिच है जिसके अपने से कोई मैच नहीं, पिच नंबर 6 या 7. अभी इसमें हम बात करेंगे डिटेल में. और दूसरी चीज़ ये है कि फास्ट बॉलरों को अबू धाबी में सबसे ज़्यादा कामयाबी मिली है इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर कंपेयर टू दुबई एंड वो. और जो वसीम आपने अभी बात की उसमें ये बताना चलूँ कि न्यूजीलैंड की टीम का जो वर्ल्ड कप के अंदर सक्सेस रेट है वर्ल्ड कप 50 overs and 20 overs is 75.86, highest by any winning जो ये percentage है वो highest है by any team around the world, 75.86. So let's talk about fast bowlers, Abu Dhabi and both these teams. अगर तो नंबर्स पे जाएंगे ना तो इंग्लैंड का कोई मैच नहीं पूरे टूर्नामेंट में. The way they've been playing cricket, they're probably best team in the tournament. लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड क्रिकेट खेल रही है वो भी they're asking questions, they're up there, they're also waiting for this time, for this day. और फास्ट बॉलिंग ऑफ कोर्स पिच फ्रेश है एज यू सेड कि 7वां मैच है लेकिन पिछले एक हफ्ते से इससे मैच नहीं हुआ. So that is really good for both teams. I would say it will favor England a touch ज़्यादा क्योंकि इंग्लैंड की जो बैटिंग है उन्होंने देखा है कि वो एक इंग्लैंड की टीम के साथ how difficult for a player is to come back into a knockout like James Wills को खिलाते हैं वो प्रॉब्लम उसी को खिलाएंगे. हम अपना कितना मुश्किल होगा अपने और बता आप दोनों से पूछ रहा हूँ James Wills के लिए to focus on this game, not playing a match. Match practice is totally different. इसीलिए हम हमेशा यहाँ बैठ के यही कहते हैं ना कि कोशिश करो चेंज ना करो. वर्ल्ड कप क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है, किसी भी यंगस्टर को या किसी भी नए लड़के को आप अंदर डालेंगे उसके लिए प्रेशर हैंडल करना मुश्किल है. एक रिदम से टीम खेल रही होती है, उस रिदम के अंदर such a fuss. He's not like you or me. Apart from you, John. Would you go and get him one of his favorite pizzas? No. Well, then I don't know what to do with him. He hasn't eaten for a few days. You've kidnapped the Major Master, okay? You can either leave him somewhere and hope he's been sufficiently scared shitless to stay quiet, or you can send him on a kind of trip he won't come back from. Oh, a trip! Such fun! Dear, oh dear, what a palaver this is. Decisions. If you could just handle this. Al is in the boot of the car. You'd be doing us such a favor. I'm really not one for What are you doing? Hello? Hey! Hello? What's happening?
उस बच्चे को आना it is tough. That butterflies, that pressure can get to him. So I mean it's a difficult one for England. यहीं पे न्यूजीलैंड भी सोच रही होगी कि ये यहाँ पे हम कैश इन कर सकते हैं क्योंकि जेसन रॉय वाज इन ग्रेट फॉर्म जी तो उसका गिरना जेम्स विल्स को वसीम भाई आई नो यू आर बिग फैन ऑफ हिज एंड ही प्लेज रियली वेल आई लव हिम आई थिंक इट्स वेरी एलिगेंट बहुत अच्छा खेलता है लेकिन क्योंकि टीम के अंदर नहीं था 15 में नहीं था बाहर से आके अचानक उसको कहना कि जाके ओपन करो इट इज़ गोइंग टू बी टफ फॉर हिम सैम बिलिंग्स भी बाहर बैठा हुआ मे बी बिकॉज वो आई सपोज वहाँ कि विकेट से रिप्लेस ओपनर विद ओपनर और रिप्लेस सैम बिलिंग्स बेस्ड ऑन ओपनर देखिए डिपेंड करता है भाई इंग्लैंड ओपनर को मेरा ख्याल है विंस को खिलाएंगे क्योंकि मेरा विंस जो है वो एक तो साथ प्रैक्टिस कर रहा है तो ही विल बी प्रैक्टिसिंग लॉट एंड स्टफ और दूसरा ये है कि दे वांट टू चेंज दे डोंट वांट टू चेंज द कॉम्बिनेशन जिस तरीके से उन्होंने बनाया हुआ क्योंकि हम पिछले कुछ अर्से से देखें तो जॉनी जो है वो नंबर 4 पे खेलता उनके बट देखो जॉनी सॉरी टू कट जॉनी का नंबर 4 पे जो परफॉर्मेंस है आई मीन नॉट एज एन ओपनर आई सपोज मिड ऑर्डर में 21 इनिंग्स में सिर्फ 472 रन और 31 की एवरेज है ठीक है स्ट्राइक रेट इज वेरी गुड 146 बट एज एन ओपनर he has scored 1770 runs, 40 averaging and strike rate of 148 with 213-50. Even वेस्ट होकर पीछे ना जाए ज़्यादा 21 गेम तो यू टॉकिंग अ लॉट तो बहुत पहले की बात है अब रिसेंटली भी उसकी फॉर्म जो है ना काफ़ी खराब है लेकिन वैसे में देखें उसको ही वॉज एन ओपनर जिसको फोर्स किया गया कि वो नंबर 4 पे खेले इस वजह से क्योंकि बटलर को वो समझते थे कि बटलर ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है अप दी ऑर्डर क्योंकि उनके पास नीचे मॉर्गन भी है उनके पास बेन स्टोक्स भी थे उनके पास क्या कहते हैं नीचे मोइन अली है लीविंगस्टन भी आ गए तो आई प्रोबेबली थिंक कि दे विल गो उसको उसी जगह पे रखेंगे क्योंकि फिर सैम बिलिंग्स आएंगे बीच में अगर वो नहीं खेलते बट क्योंकि उनकी जो माइंडसेट है इंग्लैंड का वो यही होगा क्योंकि जेसन रॉय गए हैं तो वो उसकी जगह जेम्स विंस को लाने का मकसद ही है कि जेम्स विंस को खिलाएंगे Unless, of course, you want to be returned to serve fruit cake and lady scarooloos back there. No, I promise. Take it all. Just let me go. Hey, keep making terrible movies, Al. विंड शूज उसकी रात की नींद वट विल बी उसके माइंड से एज अ बैट्समैन गुजरा होगा देखिए ओवरऑल प्रेशर होता है आप पे थोड़ा बहुत आपको एक वो फीलिंग जो है वो होती है कि आप बाहर से आके खेलें बट लुकिंग एट द कल्चर इंग्लैंड की टीम का हमारे अगेंस्ट भी बिल्कुल एक नई टीम आ गई थी वनडे में और 5 डेब्यू थे एंड द वे दे परफॉर्म उसमें आके लग ही नहीं रहा था कि ये लोग बाहर से हैं आई थिंक कॉन्फिडेंस जितना उनको होता है और जो कम्युनिकेशन है वो इस तरह से है कि वो आके वो ही रोल प्ले करते हैं जो उनसे डिमांड कर रही होती है उनकी टीम सो इन टर्म्स ऑफ दैट मुझे नहीं लगता कि वो प्रेशर होगा बट जाहिर है बाहर से आके जो आप खुद खेलते हैं और थोड़ा सा उन चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करना इन द मिडल इतने पूरे टूर्नामेंट के दौरान आपने कोई मैच नहीं खेला सडनली आप खेल रहे हैं वो जो एडजस्ट करने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होती है वो होती है बट आई थिंक विंस इन कंडीशंस में खेला है PSL भी खेला है एक्सपीरियंस भी है और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया इन एंड आउट होता है इंग्लैंड की टीम में उसकी जो फॉर्म थी अगेंस्ट अस प्लेड वेरी वेल
So overall, I think he is backing himself, but डिपेंड करता है इंग्लैंड क्या सोच रही है, बेस्टो को ऊपर लेके जाते हैं या उसको, तो विंस नीचे भी खेला है PSL में, डिपेंडिंग ऑन द अपोजिशन हो सकता है विंस को ऊपर खिलाएं, क्योंकि विंस का जो मैंने देखा था, जो ओवरऑल अगर उसके स्टैट्स देखें अगेंस्ट लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर्स और वहाँ पे बोल्ट है, हिज नंबर्स आर वेरी गुड अगेंस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स, सरप्राइजिंगली बहुत उसका स्ट्राइक रेट भी आता है, उसके रन्स भी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया PSL में भी, तो डिपेंडिंग ऑन दैट मे बी बोल्ड उनका मेन बॉलर है, they might utilize him at the top, so it's totally up to अगर वो आता है तो सेंट्रल को भी we'll talk about the bowling, but we're going to go on a break right now. You're watching the Pavilion. See you on the other side of the break. It's J Sports and Sports, and it's the semi-final day. England versus New Zealand. See you on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup, and it's a big day. It's the first semi-final, England versus New Zealand. With me in the Pavilion, Pakistani legends and superstars Wasim Akram, Waqar Yunus, Misbah-ul Haq and Wahab Riaz. दोस्तों जरा इससे पहले कि हम आगे इस गुफ्तगू को लेकर चलें, let's take a look at the success rate of T20 for different teams. ये आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं और स्टैट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको नजर आएगी. Here it is. The success rate of the teams in the last 3 years, New Zealand is not in this list. That's surprising. England, 37 matches, as you can see, they've lost 10, only one without a result. Look at that, for Afghanistan also got a great success rate, 66%, India 64%, South Africa 58%, Pakistan 57%. Now, what you're not seeing here is Australia and New Zealand. Let's take a look at the next chart. ये जो जर्नी है अभी तक इन टीमों की, ये कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं दोनों टीमें, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड अपने अपने ग्रुप से होकर. ग्रुप ए में आप देख सकते हैं, दिस हैज बीन द जर्नी फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, एंड फ्रॉम द अदर साइड न्यूजीलैंड पाकिस्तान. विल फाइंड आउट हु गोज इनटू द फाइनल. लेट्स लुक हेड टू हेड दोनों टीमों का. House, isn't it? You like it? Selling it, right? Down some. No, I'm good. I used to sell houses like this all the time. Okay? Sold dreams, lives, meaningful. I'm not sure. What you like? You like beautiful things, though, don't you? Sure. Well, I just happen to know the most beautiful woman. You know what that's into. Josh Bernstein. Yeah. I'm the Josh Bernstein. Oh, I used to be a big deal once in real estate, so I had my license. What do you call it? My meal ticket. Where's the chick? I'll get to that. See, it's not really a factor. There's just something awkward in that. Now, Lenny Avery. He was my best friend. And now, he has taken all of my clients. All of them. Do you think that you could take out all of his for sale signs? That is easy. She's more than that. I love you. I love you. Lenny Avery.
lucky miss.
जो सूरत हाल रही है अभी तक कि इनका सक्सेस रेट आपस में जब इनके मुकाबले हुए हैं तो वो क्या रहे हैं. Clearly when you see this, it will come up on your screen now as we speak. The head-to-head between head-to-head overall. There you go. 13 मैचेस जो हैं वो इंग्लैंड ने जीते हैं और सिर्फ 7 मैचेस जो हैं वो न्यूजीलैंड ने जीते हैं. अब जरा बॉलर्स का तजिया कर दें. बॉलिंग की तरफ आएंगे उससे पहले जरा बॉलिंग एवरेजेस की तरफ नजर डाल लेते हैं. आपके लिए बॉलिंग एवरेजेस आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं एंड दिस इज द बॉलिंग एवरेजेस. लेट्स ब्रिंग दैट अप ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. हियर यू गो. फर्स्ट वी सी द रेगुलर बॉलिंग. मशीन इज स्लो. वी डू अपॉलोजाइज. थोड़ी सी हमारी मिलती है. ऐसे लग रहा है कबूतर देख रहे हैं यार. लग रहा है गुड इंग्लैंड बॉलिंग जनाब T20 वर्ल्ड कप के अंदर. दीज आर देयर बॉलर्स. वहां टेक अस थ्रू the New Zealand ones. Okay, and it says England bowling on top. Interesting. न्यूजीलैंड की बॉलिंग है उसके ऊपर इंग्लैंड लिखा हुआ था. मशीन स्लो भी है. गलत पता बहुत अच्छे. इसका मतलब ये कि somebody had one job to do, just one job. मेरा ख्याल है नहीं दिखाएं आगे कुछ और तो बेहतर होगा. हम आपस में बात कर लेते हैं. वैसे वसीम आप एक्चुअली कॉन्वर्सेशन शुरू की थी आपने बॉलिंग के ऊपर तो उस पर आ जाते हैं. एक दफा का जिक्र है. We was talking about Tim Sadi on a serious note. उसका इकोनॉमी रेट इस वर्ल्ड कप में सबसे बेस्ट है 4.63. So that's really good. Being a new ball bowler, being a पहले 6 ओवरों में कराता है. एक्सपीरियंस ज़्यादा है और वो वेरिएशन से भी बड़ा वो करता है. बट इस पिच पे वेरिएशन उतनी नहीं चलेगी जितनी शारजाह पिच पे चलती है. जी बिल्कुल. मेरे ख्याल में 2 बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर हैं इन साउदी एंड ट्रेंट बोल्ट. जो सबसे अच्छी चीज़ है न्यूजीलैंड के इन बॉलर्स की विद देयर एक्सपीरियंस उनकी जो प्लानिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है. एंड देन प्लान तो सारी टीमें करती हैं, एनालिसिस भी करती हैं. इनकी जो अच्छी चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज प्लान. और इतने एक्सपीरियंस है कि जल्दी मतलब फर्स्ट अगर पहला प्लान आपका थोड़ा सा इधर उधर हुआ है दे नो कि नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है. दैट्स वाई दे आर इन पेयर. दोनों पेयर में going to show you where all 3 gauntlet locations are in Grand Theft Auto 5 for the gauntlet challenges. This first one is the Pillbox Hill gauntlet location, and I should let you know that well, each one of these gauntlets is its own separate challenge. This one's on the roof of this parking garage. You cannot damage the gauntlet on the way to Los Santos Customs if you want to get the gold medal challenge. You have to keep that gauntlet in pristine condition before getting to Los Santos Customs, or on the way to Los Santos Customs. This is the Rockford Hills gauntlet. This one's much easier to find than that first one in Pillbox Hills. This one's just out on the street, waiting to be stolen. And the third and final gauntlet in Mission Row, again, is much easier to find than the first one. It's just out on the street. Get बहुत इफेक्टिव है. सबसे जो अच्छी चीज़ न्यूजीलैंड टीम की भी है एज अ बॉलिंग यूनिट मैक्सिमाइज करते हैं और बैटिंग में भी मैक्सिमाइज करते हैं अपने रिसोर्सेज को और अगली टीम के लिए बड़ा मुश्किल कर देते हैं बैटिंग लाइनअप के लिए कैसे रन्स करने. जैसे अफगानिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने बॉलिंग की है, दे वर नॉट डूइंग दैट अगेंस्ट एनी अदर टीम. डिफरेंट ही प्लान था. बिल्कुल पीछे एकदम उनको बिल्कुल अनसेटल किया है बाउंसर्स के साथ. देन पिच्ड अप और आगे भी बिल्कुल पुल नहीं किया, थोड़ा सा दूर जिस पे उनको टांग थोड़ी निकालनी पड़े. अगर बिल्कुल आगे कर दें. If you can explain on this particular chart कि back of a length कहाँ पे आती है, because हम बातें करते रहते हैं but समझ नहीं आती लोगों को कि what is back of a length actual means. देखिए वो थोड़ा सा मैं वैसे ही बता देता हूँ. बैक ऑफ लेंथ बेसिकली वहाब ने भी ये काफ़ी दफ़े एक्सप्लेन किया है. दैट इज़
आई मीन शारजा को छोड़ के ऑन अदर पिचेस इट्स डिफरेंट. शारजा में वो 8 मीटर पे होगी, बट दूसरी तरफ वहाँ पे 5 to 6 मीटर, ताकि वो टॉप ऑफ स्टम्प्स हिट करे, मिडल ऑफ टॉप ऑफ स्टम्प्स हिट करे. ये बिग टो मतलब लेग पे भी ना है, ऑफ और मिडिल. जी बिल्कुल ऐसी जगह पे कि जहाँ ना हाथ खुले बैट्समैन के, ना ही लेग साइड पे उसके लिए आसान हो जाए, कोई यूँ करे तो लेग साइड पे इजी रन मिलते हैं. विकेट्स में उसको खुद बैट्समैन को कुछ क्रिएट करना पड़े, तो दे आर वेरी गुड इन दैट. स्लोअर वन अगर करते हैं तो वो भी बड़ा सोच समझ के करते हैं और बड़े ज़बरदस्त उसको एग्जीक्यूट करते हैं. तो आई थिंक एज ए टीम न्यूजीलैंड इज़ ऑलवेज प्लानिंग पे होते हैं और बड़ा ही कैलकुलेटेड मैच खेलते हैं. अब वहाँ भी उनके दोनों स्पिनर आर रियली बॉलिंग वेल. इंग्लैंड एंड उनकी बात बाद में करेंगे, स्पेशली सोदी एंड ऑफ कोर्स पेंशनर. वैसे में अगर हम बॉलिंग देखें न्यूजीलैंड की ना, तो उनके जो ओपनिंग बॉलर्स हैं बोल्ट और साउदी, वो इतना अच्छा क्रिएट करते हैं आने वाले बॉलर्स के लिए सारे एटमॉस्फेयर, कि आप देखेंगे कि जो प्रेशर है वो बैटिंग साइड पे ज़्यादा रहेगी. अगर हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ले लें कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी लो स्कोरिंग मैच में शारजा में जब उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने ऊपर से प्रेशर रखा. पाकिस्तान वॉजंट एबल टू स्कोर मोर देन 36 और 40 रन इन द पावर प्ले, चेजिंग 140, राइट. अब हुआ यह है कि वो इतना अच्छा प्लान करते हैं, उनकी एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी है, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं. कि जब वो 6 ओवर्स गुजरते, और हमने पूरे पावर प्ले में देखा कि 6 ओवरों से 7वें ओवर से लेकर 15वें ओवर तक जिस टीम ने एक्सेलरेशन नहीं की, उसने 140 150 के अंडर जो है वो 5 स्कोर रहा है. इनके जब बॉलर्स आते हैं और दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलर्स, इस पिच पे थोड़ा डिफरेंट नहीं होगा. बिल्कुल होगा, लेकिन देखिए उनकी जो Los Santos Customs, spend a whole bunch of cash on it, getting it upgraded and ready for the heist, and you should get 3 easy gold medals. Thanks for watching. Be sure to subscribe for more Grand Theft Auto 5. Get to Los Santos Customs, spend a whole bunch of cash on it, getting it upgraded and ready for the heist, and Final Gauntlet in Mission Row. Again, easier to find than that first one at Pillbox Hills. This one's just out on the street, waiting to be stolen. उन लोगों से दूर रहो जिसको तुम्हारी कदर ना हो. उन्हीं के घर में रहती हूँ. ऐसा उन लोगों से दूर रहो जिसको तुम्हारी कदर ना हो. उन्हीं के घर.
लाइन और की जो लेंथ है वो इतनी अच्छी है कि वो बैट्समैन को इनवाइट करते हैं. They are not taking any chances. They are asking the batsmen to take a chance. वो थोड़ा सा बॉल आगे फ्लोट भी करते हैं, थोड़ा सा फ्लाइट के साथ, फिर एकदम बॉल को खींचते हैं. जैसे वो देखते हैं कि एग्रेसिव आ रहा तो देखते चेंज देयर लाइन पे, चेंज देयर लेंथ चाहिए. अब वो जो है हमें थोड़े से सिग्नल की तरफ जाए. जो बैट्समैन उनको स्कोर कर रहा है उसके पैडों पे बॉल करना शुरू कर देते हैं ताकि वो सिंगल लेके दूसरा सामने आ जाए. दैट इज वेरी सेंसिबल एज अ बॉलिंग यूनिट कि आपको पता है कि अगर एक बंदा आपको अटैक कर रहा है तो आपने उसको कैसे बचना है उससे. तो दे स्टार्ट टू डू दैट. अब आप इनकी लाइन और लेंथ यहाँ पे देखिए. और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये एक्सपेक्ट भी कोई कर रहा है कि ये बॉलिंग जो है वो बाउंसर्स भी कर सकते हैं ये बॉलिंग लाइन. और सऊदी और जो बोल्ट है वो दोनों के दोनों स्विंग बॉलिंग के लिए बहुत जाने जाते हैं. लेकिन हमने देखा है कि जब इवन के पाकिस्तान के मैच अगेंस्ट जब आसिफ ने उसको छिक्का मारा सऊदी को, उसके बाद उसने उसे बाउंसर किया और वो एक्सपेक्ट नहीं करा था एज अ बैट्समैन कि यार ये बाउंसर करेगा. और अगली 3 बॉलें आसिफ बीट हुआ थी उसके बाद आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ देख लें. और फिर अब ये जिस बैक ऑफ लेंथ की आप बात कर रहे हैं, अगर आप ये लेंथ देखें तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि आप हमें ऊपर से मारो, सामने मारोगे. इंस्टेड केयर ऑफ द विकेट रन जहाँ पे होते हैं वो कह रहे हैं कि आप हमें सामने मारोगे. और उन्होंने जितनी टेक्निक यहाँ पे खेले उन्हें पता है कि सीधा स्कोर करना मुश्किल है. तो दे हैव टू टेक चांसेस. और आपने देखा कितने बैट्समैन को मिड ऑन और मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश की उन्होंने, वो मोस्टली आउट हुए. दैट्स अ वेरी गुड. ये जरा इकोनॉमी रेट के ऊपर नजर डाल लेते हैं बॉलिंग पावर प्ले के अंदर. ये पावर प्ले के अंदर टॉप 5 बॉलर्स इन दिस सुपर 12 स्टेज आर बोथ फ्रॉम इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड. ये जरा गौर से देखें. लुक एट दोस इकोनॉमी रेट्स इन दी पावर प्ले. इंग्लैंड एट 5.30, न्यूजीलैंड एट 5.73. दैट्स इनक्रेडिबल. एवरेज इसका मतलब है कि ये निकली कि इन्होंने अगर 6 ओवर किए हैं तो दे हैव गिवन अंडर 36 runs per power play. That is something excellent. Even Pakistan को आप देखें, that is amazing. Recipe for success. Yes, and then interestingly we see during the over number 16 to 20, New Zealand has the best economy. ये भी आपके सामने रखते हैं. Look at that. How the stats speaking है. 16 से 20 in Super 12 stages में New Zealand's economy has been the best and Pakistan right behind there. देखिए इसमें भी अगर हम देखें, हम लोगों ने पहले भी बात की, जब हम इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करेंगे तो आप इधर से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंग्लैंड के बॉलर जो कि हम कह रहे हैं कि अच्छी टीम है, एक्सपीरियंस दैट बॉलर, उनकी ऑलमोस्ट 10.5 की एवरेज है. बट डिफरेंस जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने डाला है वो आपके सामने है कि इफ यू आर गिविंग 8 runs एंड ओवर इन द लास्ट 5 overs, दैट मीन्स आप 40 रन से ऊपर स्कोर करने ही नहीं दे रहे हैं. सो दैट इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर एनी टीम. Let's go to the batting this far. Let's bring this in. Bairstow has an incredible record as an opener, and now with that change that we were talking about earlier, we don't know who comes. I mean, exactly who plays where at this time, and we'll find out. England की team किस तरह वो करती है. But how should they go about their business? How do they? I mean, they take the change in और वो फिर क्या कहते हैं कि अच्छा Bairstow आप जो है वो नीचे हो जाए, उतर जाए, पीछे हो जाए, एकदम एक नंबर आगे आ जाए. How does in a semi-final knockout stage do you get going about this business? It's difficult, but looking at England, जिस तरह वो ऑपरेट करते हैं, मेरे ख्याल में वो एडिड प्रेशर नहीं लेते और कोशिश करते हैं कि अपने रिसोर्सेज को जहाँ भी यूज़ करना है, तो जो एक दूसरी टीमों के प्लेयर्स पे थोड़ा सा प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ फेलियर, वो नहीं होता है. इनका बैट करते हैं, न्यूजीलैंड का प्लेयर है, जैसे उसको नंबर 4 पे मूव किया, हालांकि वो ओपनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. इंडिपेंडेंट है, ये मिडल और ओवर्स में स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है, जो आपको नज़र आ रहा है, अटैक कर सकते हैं. IPL में भी वो बीच में खेले आके नंबर 4 पे. उस वजह से इंग्लैंड ने देखा कि ओपनर्स अगर हमारे अच्छा कर रहे हैं ऊपर, और दूसरे जो दोनों ओपनर्स रॉय और बटलर ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं, तो चले इनको बीच में लाएंगे, ये बीच में अच्छा खेल सकते हैं, स्पिनर्स को टैकल कर सकते हैं.
So that's the reason. Talk about the spinners, Waqar. Each Sodhi, the New Zealand spinner, he's got the best record against England. इस कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले न्यूजीलैंड के बॉलर हैं. 21 उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में लिए हैं विकेट स्पिनर के तौर पे. But against England somehow he shines really well. Why is that? To be honest, I don't know because I don't know where they were playing. Yeah. Depends on अगर वो सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं, अगर ये भी नंबर्स आप देख रहे हैं तो यहाँ पे खेले हैं या इन इंग्लैंड इन न्यूजीलैंड खेले. न्यूजीलैंड फिर भी पिछले कई दफ़ा सॉफ्ट होती है तो स्पिन ज़्यादा करता है. ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल करता है लेग स्पिनर. ये है ऑल बड़े ग्राउंड होते हैं लेकिन ये होता है कि इतना स्पिन नहीं होता बल्ले में गेंद. ऑस्ट्रेलिया में कादर भाई यूज्ड टू एंजॉय लॉट मोर एंड मॉर्निंग बिकॉज दे गेट बाउंस. 100% अग्री विद दैट. अग्री. शेन वॉर्न का ये था कि ये गॉट यूज्ड टू ऑफ इट. शेन वॉर्न जैसा बॉलर आया भी कोई, ये भी याद रखे. एक सदियों में एक बॉलर कभी आता है शेन वॉर्न जैसा, तो वो ऐसा बॉलर भी कोई नहीं था. और दूसरा ये है कि आपको यूज टू होना पड़ता है वहाँ की पिचों का, इसलिए भी इट बिकम्स वेरी वेरी हार्ड अनलेस यू गो एंड प्ले फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन ऑस्ट्रेलिया. इट इज़ डिफिकल्ट स्पिनर के लिए भी और पेसर के लिए भी. तो इस सोधी पिछले को तकरीबन 2-3 साल में ही हैज़ रियली कम अप, यू नो, एक्सट्रीमली गुड. क्योंकि इसने विकेट टेकर. अच्छी बात दोनों टीमों की, ना सिर्फ बल्कि मैं न्यूजीलैंड की बात करूँगी, इनके जो दोनों स्पिनर जो है, मोइन हो गया, इस सोधी हो गया, रशीद हो गया, I mean they're all wicket taker. They're all not hesitant of giving flight. They look to spin the ball. जो बॉलर इन विकेटों पे स्पिन करता है, नॉट द तेज तेज. हमारा होता है कि तेज तेज कर लो, फटाफट निकाल लो. नहीं, दे आर द अटैकिंग बॉलर. दे विल इनवाइट यू, कम हिट मी ओवर द पार्क. वो फिर विकेट वहाँ विकेट मिलती है. Why do you think Asians had more success against English players? I know Waqar says that he doesn't really know कि क्या किन सूरत हाल में वो खेले हुए किन कंडीशंस में, but it seems to be that Asia has a liking for English batsmen. मुझे लगता है कि ओवरऑल, नॉट ओनली इंग्लैंड, ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है. क्योंकि जब भी टॉल होगा लेग स्पिनर, हाइट वाला होगा, उसको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है. नील कुंबले वाज अ बिग टर्नर ऑफ द बॉल, बट जो उसको बाउंस मिलता था उसकी वजह से आपको स्पेशली छोटे फॉर्मेट में इट्स नॉट ईजी टू हिट दैम. इवन जो आपका हाफ ट्रैकर होता है, जो आज पीछे भी लग जाता है बॉल, समटाइम्स आप उसको कनेक्ट करने जाते हैं, वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बाउंस होता है. और आप ऐसी विकेटें मैंने देखा है इस सोडी को बड़ी दफ़ा इसमें शॉर्ट मिड विकेट या बाउंड्री लाइन पे कैसे कैच हो गया. शॉर्ट बॉल गिरते हुए थोड़ा तेज आता है, इस पर काफ़ी. हाँ, तो ये जो हाइट वाले बॉलर हैं इनका ऐसे ही है कि आपका नॉर्मल लेग स्पिन भी अगर पीछे गिरा है, कहीं तो वो शाइन जब लगती है पिच पे तो वो बॉल बड़ा जल्दी आ जाता है. और आप वो वेरिएशन, नेचुरल वेरिएशन मिलती है पेस की, तो उसमें आप अट्रैक्टिव होते हैं. कट मारते हो आपको बाउंस ज़्यादा मिला, काउंट कॉट बिहाइंड हो गए या पॉइंट पे कैच हो गए. और दूसरा गुगली मेरे ख्याल में काफ़ी कॉन्फिडेंस की बात है कि बड़ा डरे बगैर वो फ्लाइट भी करता है, गुगलीज भी करता है, कोई फिक्र नहीं होती कि मार पड़ जाएगी. तो दैट्स समथिंग. जब आप एज ए लेग स्पिनर डरते ही नहीं है बैट्समैन से कि मुझे बाउंड्री पड़ेगी, तो आप ज़्यादा चांसेस क्रिएट करते हैं. दैट्स द रीज़न वो बैक कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा, और वो बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं अपनी बॉलिंग, फुल फुला के बॉलिंग में. बिल्कुल सही आपने कहा. इज बिन वेरी सक्सेसफुल थ्रू आउट. गुड हाइट, रिलीज भी बड़ा अच्छा है उनका. अब यहाँ पे देखेंगे इंडिया को इस टाइम पे सोर्स चाहिए था, बट ही वाज टॉसिंग द बॉल अप इवन टू विराट कोहली टू क्रिएट चांसेस. इट्स डिफिकल्ट अंडर प्रेशर. जब आपको थोड़ा सा भी बॉलर को लगता है कि अब बैट्समैन मेरे पे अटैक करेगा, तो आप थोड़ा डिफेंसिव हो जाते हैं, कोशिश करते हैं मैं तेज़ करके बच जाऊं. बट ये अच्छी चीज़ है. तो फिर भी आप उसको फ्लाइट कर रहे हैं और कोशिश आप उस पर अपनी स्किल पे जो है ना ट्रस्ट कर रहे हैं. जी हाँ. मैं आई जस्ट वांटेड टू ऐड ऑन समथिंग जो आप गुफ्तगू पहले हो रही थी बैटिंग के एतबार से. मैं समझता हूँ कि जो इंग्लैंड की टीम है ना, वाई वी सेइंग दे आर द फेवरेट्स, बिकॉज वो फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं. बाकी टीमें फिर भी कहीं ना कहीं हाथ रोक लेती हैं, थोड़ी घबरा जाती है. अच्छा, अगर पहली बॉल पे चौका लग गया या चौका मार लिया बैट्समैन ने, तो इनको भी लुक कि अच्छा मैं सिंगल कर लेता हूँ, मैं स्ट्राइक विकेट करता हूँ, वो लॉन्ग. इनकी टीम में ये है कि they will kill you. They will, once they hit 6, they don't mind hitting another 6 and another 6. जैसे तू कहता है really गोल मारो शिका, गोल मार. And with that, it's time to take another break right here in the pavilion. You're watching Air Sports and Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup, and it's the first semi-final coming your way. Stay tuned.
Welcome back to the pavilion. मैं फकरार आप देख रहे हैं Sports. It's a big day. The first semi-final is England versus New Zealand, and in the pavilion with me, Pakistani legends and superstars, Wasim Akram, Waqar Yunus, Misbah Haq, and Wahab Riaz. Break के जाने से पहले हम ईद सोनी की बात कर रहे थे. Now let's talk about Wasim Akram's favorite player, Martin Guptill. He's had a great tournament because इससे पहले एशिया के अंदर Wasim उनकी एवरेज भी तकरीबन 20 रन पर ओवर की थी. I know the strike rate था. All of a sudden he's just come to the party. He's a quality player. Obviously, जब वो IPSL में आया था तो कराची किंग्स से he tried his best, but he was coming from winters. So winters में वहाँ कुछ नहीं होता ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में. So obviously और पहले फिर 7 दिन हमने वहाँ वो आइसोलेशन पे भी जाना था. So he had a bicycle with him, but overall he's a class player. The way he plays, safe shot, फुल भी अच्छी मारता है. खड़े में वो सीधी मारता है ना, स्पिनर को. That's a treat to watch. A very dangerous player. लंबा जाता है. It goes deep. Yeah, he goes deep into the game. Yeah, and I think he plays. I don't know how he plays against the Adil Rashid, because again it's match between Adil and Sodhi. उधर भी है, उधर भी है. Yeah, there you have it on your screen right now. That's Martin Guptill. Waqar looks, stands, delivers. Yeah, he goes really hard at the ball. इसीलिए कई दफ़ा जब ये फॉर्म में नहीं होता तो इसका यही रीज़न है कि he gets out very early. लेकिन once he's on, he is seriously dangerous, and he can really cause problem to any team in the world. England हो, Australia हो, any surface की सबकॉन्टिनेंट में बुरा नहीं खेलता. और अच्छी बात न्यूजीलैंड के लिए ये है कि he is in good nick. He's hitting the ball straight and he is hitting out of the park. इसकी हिटिंग में उसकी एक चीज़ नोट की है. मैंने ये नोट की है कि जब ये हिट मारता है, स्पेशली जो सीधी मारता है ये डॉन या स्पिनर को, when he hits it, ये उसने मारी और नजर उसकी बॉल पे रहती है. then he looks up. तो कई दफ़ा आप हिटिंग करने जाते हैं तो ऐसे करते हैं, आपकी आय बॉल पे हट जाती है. This guy, like golf, eyes on the ball and ball is hitting the bat. He goes like this, नजर नीचे होती, and then he goes up. And that's again adds same way Hayden hit it. That's very famous. Exactly. इधर की बात कहाँ exactly यही बात है. Hayden ने भी अपना सर नीचे रखा रहता है. आपकी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हो रहा है. ये बोलेंगे. Good old memory lane. That's where we're going. लेकिन गप्पे की एक और चीज़ है जब वो हार्ड हैंड है ना, that means अर्नियों अगर बॉल हिल रहा है ना, आउटस्विंग पे जाएगा. ये क्रॉस करता है. ये उसका इशू है. हमारे खिलाफ वो छोटे समीर गुल ने क्या बॉल किया था इसको. पेशावर से मैच था, उसने बॉल किए, वो बैक ऑफ लेंथ बड़ा पड़ के सिर्फ हल्का सा बाहर निकला. Let's talk about Guptill. Guptill को किस नौयत की फील्ड सेटिंग के साथ जो इंग्लैंड के बॉलर वो किस नौयत की फील्ड के साथ है. Why don't you start our new feature here today? You and Misbah both can go in there and work. Yeah, you came after. So you can start with Guptill Wahab, and then Misbah you can straight away go to Bairstow. Let's go player to player. He was so keen to get onto that prompt कि ये 2 घंटे 3 घंटे पहले आया. And he's been really working on it कि ये कैसे चलना है. I have to show my commitment. I am here at work. Like playing golf every day. Very good question. Does not matter. Very good question. Where were you in the last game? India versus Namibia, the biggest game of the tournament. I took a holiday. अभी नई जैकेट क्योंकि इसके बाद आप लोग बेयरस्टो की फील्ड सेट करके हमें दिखा सकते हैं. And this is going to be now interesting. I think this will be more interesting. You guys using this. Yeah, I'm actually very keen on how technology is deployed on this. हो जाएगा ताकि कैमरे में नजर आ सके. नहीं, this side पे. वहाँ आप इस साइड पे हैं, मिसबा उस साइड पे होंगे, करीब हैं स्क्रीन के दोनों. तो थोड़ा इसको दोबारा बताएंगे किसकी बात हो रही थी. दूसरा यूज कर रहा है. दूसरा यूज करना. पिच के लिए या फील्ड के लिए? आपने पिच पे जाना है? नहीं, मैंने उस पे जाना. पिच पे जाना है तो इसको स्वाइप करें. अपनी तरफ करें. ये मुबारक हो, पहली पैरा मरहला मुकम्मल हुआ. देखिए गुप्तिल का इधर से थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ. 3 इधर हमारे पास एरियाज है. येलो वाला जो है दैट इज फॉर यॉर्कर. दिस इज अ फुल बॉल जिधर आप बॉल को थोड़ा सा आगे पिच करते हैं. दिस इज अ गुड लेंथ एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं. ये
स्पेशली अबू धाबी की विकेट पे इट विल बी लाइक 4 to 6 meters, राइट, और उसके पीछे शॉर्ट बॉल। अब गुप्टिल का जो सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है, अगर हम इसको अगर हम चैनल को अगर हम इस तरह इसको कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम पे नहीं चलेगा, आइडिया बता देते हैं। सो दिस इज कि गुप्टिल जो है वो जब भी आप उसको बॉल आगे करेंगे दूसरे बैट्समैनों की तरह, जब उनको आप बॉल आगे करते हैं स्विंग करने के लिए, तो वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, वो यहाँ पे अपने पास खेलते हैं ताकि जो है उसको बॉल को अच्छे तरीके से सीख सकें। गुप्टिल की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि अगर आप उसको इस एरिया में बॉल करेंगे सो ही विल गो लाइक दिस, आपको ऊपर से मारेगा या इधर ऊपर से सामने मिड ऑफ, और ये फील्ड टाइप नए बॉल के ऊपर। मोस्टली आपने देखा कि जो स्केयर लगे वो पीछे होती, स्केयर में पीछे होती, फाइनल ऊपर होता है। हाँ, तो आप वो स्विच करके इसको वापस देखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मोस्टली आपने फील्ड ली होती है कि स्केयर लेग फील्डर आपने पीछे लिया होता है, आपका फाइनल लेग ऊपर होता है, ये सर्कल। हाँ, ओके, ठीक, ऐसे कर लेते हैं। बाउंड्री पे ये आपका स्केयर लेग पे जो फील्डर है, थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि नजर आ, ये आपका स्केयर लेग पे फील्डर है। ठीक है, ठीक है। एक आपने यहाँ पे लिया होता है थर्ड मैन लिया, उसके बाद आपका पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, मिड विकेट, मिड विकेट, फाइनल लेग, कीपर, स्लिप और मिड ऑन, और यहाँ पे आपका बॉलर है। मोस्टली आप इस फील्ड से शुरू करते हैं गुप्टिल। ओके, अब मोस्टली उसकी स्ट्रेंथ है कि अगर हम दिस इज द फील्ड जिससे आप थोड़ा सा शुरू करते हैं, अगर हम वापस अब चले जाएं उसके ऊपर, इधर दिस इज द एरिया जिसकी हमने बात किया, इधर गुप्टिल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस एरिया। बेस्ट टाइम है कि अगर आपने गुप्टिल को नए बॉल से बॉल करना है, आप ये 3 विकेटों की लाइन में आप गुड लेंथ एरिया में बिल्कुल विकेट के बीच में मेक श्योर कि ये ऑफ स्टंप और मिडल स्टंप में हो। ओके, क्योंकि इधर से ही टेंड्स टू वेट, इधर से वो आगे नहीं जाता, उसकी 2 शॉट है, वो कोशिश करता है कि जिस जो उसका स्टांस है उसमें वो यूँ खड़ा रहे, थोड़ा सा बॉल बाहर दिया तो उसके आर्म्स खुले तो वो इस तरह ऑफ साइड को पैक करता है, और अगर टांग से बॉल हो तो आपने देखा कि वो इधर से फ्री करती करता है। ये एक ऐसा एरिया है कि जब अब वो तंग होता है, यू ट्राई टू गिव हिम सच मूव। उसकी अगर हम वीडियो दिखाते हैं जो शाहीन उसको बॉलिंग कर रहा था नई बॉल के साथ शारजा की विकेट में, ही वाज बॉलिंग बहुत लेफ्ट, थोड़ा सा आगे, ही हैज नो आइडिया, तो उसने क्या किया, अपने आप को रूम देना शुरू किया और ही ट्राई टू हिट द बॉल स्ट्रेट। आरएस ने उसको फॉलो किया, उसकी बॉडी में सेम लेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर शॉर्ट बॉल होगा तो दे आर वेरी गुड एट द शॉर्ट बॉल, क्योंकि अगर आप न्यूजीलैंड वगैरह में खेलते हैं तो बॉल बहुत अच्छा आता है। ये विकेट भी वैसी है, काइंड ऑफ। सो अगर रूम देके अगर आप उसकी हिट की हम बात करते हैं, इधर वेस्ट हाइट, हमने देखा आरएस ने उससे पहले यहाँ पे बॉल किया, उसको लगा, दूसरा बॉल किया, लगा और विकेट में गिरा। सो ये लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है रूम का। उस लेंथ पे गुप्टिल ये कोशिश करता है कि अपने आप को रूम दे और देन यू टेक अ चांस। तो व्हेन ही टेक्स अ चांस तो इसका मतलब है कि बॉलर जो है ही इज इन द विनिंग पोजीशन। बट अगर आप उसको शॉर्ट कर देंगे या बिल्कुल आगे कर देंगे तो दिस इज हिज बेस्ट शॉट। जैसा मर्जी बॉलर हो, 150 करता हो, जितना मर्जी स्विंग हो रहा हो, you will aim into him. Question to you, thank you, आप nicely explained. Misbah, question to you. अब ये तो इसने नया बॉल फास्ट बॉलर का बताया मैं कब से देख रहा हूँ। अगर वो मोइन से पहले 6 में कराते हैं या आदिल से कराते हैं तो क्या फील रखेगा वो एज कहते हैं आप? नॉर्मली गुप्टिल कोशिश करता है स्वीप शॉट खेलने की और स्लॉप स्वीप। जो सामने वाला शॉट है वो तो है कि अगर आप आगे गेंद करोगे तो 2 फील्डर कौन से बाहर रखोगे? मेरे ख्याल में विकेट टू विकेट बॉल करने के लिए आदिल जिस तरीके की बॉलिंग करता है, गुगलीज यूज़ करता है, आप स्क्वायर लेग और मिड विकेट पीछे कर सकते हैं या स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन कर सकते हैं।
डिपेंडिंग ऑन के प्लान क्या है उसका। स्क्वायर लेग कहाँ पे आएगा? फ्रंट आएगा कि बिहाइंड अंपायर आएगा? मतलब फाइन लेग यहाँ रखेंगे, फाइन ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाइए। स्क्वायर आप करेंगे या स्क्वायर आप करेंगे फीट क्योंकि अंदर थोड़ी जो मारता है तो यहाँ ये आप थोड़ा सा बाहर से अंदर। ओके ठीक है। और देन ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या सोच रहा है, आदिल ने ज़्यादा बॉलिंग कौन सी करनी है। अगर दूर से वो गुगली कर रहा है तो देन ऑब्वियसली ये फील्डर बड़ा इफेक्टिव हो सकता है कि स्टॉप स्वीप नहीं, बट यू कैन ओनली अलाउ 2 ना। ये नहीं रखेंगे। अच्छा, ये वाला फील्डर नहीं चाहिए हमें, जिसे ये कहते हैं टॉप कॉर्नर। टॉप कॉर्नर। ओके, आप ये दोनों फील्डर ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, ओके। एंड यू बेसिकली वांट टू यूज दैट लेंथ, क्योंकि आपको पता है कि उसको आप आगे गेम नहीं कर सकते। आगे करेंगे तो इज वेरी स्ट्रॉन्ग डाउन द ग्राउंड। तो दूर से जब गुगली होगी तो उसको ये यहाँ पे जब वो सोच रहा है मारने के लिए, इधर सोच रहा है मारने के लिए, देयर इज ऑलवेज अ चांस गुगली में करेगा, आउट होगा। तो वो जो उसकी नेचुरल शॉट है वो आपने ब्लॉक किए एंड यू आर बॉलिंग एंड गुगली लेंथ से। अब उसको कुछ और, अगर उस बॉल को दूर वाली बॉल को वो सोचता है कि मैंने कहीं यहाँ मारना है, देयर इज ऑलवेज चांसेस कि वो गेट के बीच में से बॉल निकले, बोल्ड होने का चांस है। उसका आपने देखा है आदिल का कि इसका जो स्लिपर है जो उसने रसल को बोल्ड किया था वो पड़ के अंदर आया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट विल डिपेंड ऑन कि आदिल उसको कहाँ से आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तो उसे लेग स्पिन करनी है, अगर तो उसे लेग स्पिन और सीधा बॉल करना है तो फिर देयर आर ऑलवेज चांसेस कि इस फील्डर को आप आगे ले आए यहाँ पे। ठीक है, ये आप फील्डर खत्म करें और उसकी जगह ये वाला फील्डर आप पीछे दें। ऑलवेज प्लान बी, ताकि उसको पता हो कि यार ये लेग स्पिन भी करेगा, मैं टांग रख के नहीं मार रही, दोनों चांसेस हैं। अच्छा, ये अब आप वहाँ पर मौजूद है तो जरा जॉस बटलर को भी एड्रेस कर लें या फिर थोड़ा सा फास्ट बॉलर पे भी रॉबी में भी यू कैन एक्सप्लेन के अगेंस्ट फास्ट बॉलर गप्टिल जरूरी नहीं कि स्पिनर ही गेम करेगा, हो सकता है कि फास्ट बॉलर बिफोर एंड नो हाउ टू गेट हिम आउट, हाउ टू गेट हिम आउट, हाउ टू गेट हिम आउट। देखिए मैंने जितनी गुप्टिल को बॉलिंग की है, जितना मैं बेहतर उसको जानता हूँ, मुझे ये पता है कि वो अंदर वाले बॉल पर थोड़ा सा फंसता है जो थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बॉल है, नॉट स्विंग विद लेग, क्योंकि टांग पे ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग। उसका जो फ्लिक शॉट है हमने देखे इस टूर्नामेंट में भी, उसने वो बड़ा अच्छा फ्लिक शॉट है। बोल्ड तो उनमें से किन का अंदर आता है? सर देखिए जैसा क्रिस वॉक्स है, क्रिस वॉक्स है, सो क्रिस वॉक्स जनरली मैंने ये देखा क्योंकि ही इज अ गुड सीम बॉलर, तो वो उसके लिए सेम फील्डिंग जो हमने रखी थी कि स्टेयर लेग हम उसको पीछे लेके जाएंगे और थर्ड में जो है वो स्क्वायर लेग अंपायर के उधर होगा, थोड़ा अंदर रहेगा, क्योंकि नया बॉल है, हार्ड होता है, जब वो लगता है तो वो ज़्यादा अंदर जाता है, बाहर की तरफ नहीं हो जाता, बॉल लाइन से बाहर की तरफ ज़्यादा ले जाता है अंटिल विकेट बहुत ज़्यादा स्लो ना हो, फिर आपको बाहर दिखता है। अगर विकेट स्लो नहीं है, तेज है, थोड़ा सा उसका बाउंस है, पेस है, तो फिर वो आपको अंदर वाली साइड करेगा। मेरे ख्याल में ये भी हमारे अगेंस्ट ये बहुत खेला है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ अंदर वाले बॉल पे आउट होता है। अगर आप उसको रूम नहीं देते और ऑफ स्टंप के सामने से बॉल बाहर भी निकलता है, जो कॉरिडोर होता है चौथा स्टंप और ऑफ स्टंप का, वहाँ से वो निक भी होती है उसकी, यू गिव हिम रूम, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर वो आपको नहीं छोड़ता तो वो इस साइड से बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। और फिर उसको कोशिश ये करनी है कि उसको मिडल एंड ऑफ स्टंप शुरू में बिल्कुल नया बॉल ऑफ स्टंप, और अगर आप चौथी स्टंप से उसे बॉल करेंगे तो आप अक्सर उसे देखेंगे कि जो क्योंकि वो यहाँ पे खड़ा रहता है, टांग ज़्यादा लंबी टांग के साथ नहीं खेलता है हमारे, तो जब आप उसको थोड़ा सा इधर बॉल करते हैं तो आप उसको अक्सर देखेंगे कि वो ऐसे बॉल छोड़ देता है, ही लीव्स दैट बॉल, लेट इट गो टू द कीपर। हमने जितनी बॉलिंग उससे की या मैंने जितनी उससे बॉलिंग किया, तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं इसको विद इन द स्टंप मिडल एंड ऑफ, नॉट ऑन द लेग स्टंप, मिडल एंड ऑफ पे इसको रखूँ और लेग बॉल जरूर खींचा। एक क्या है आपकी पेस है, प्लस यू बैक ऑफ लेग जब आप बॉल करते हैं तो उसके पास चांस ये है कि उसको वो जबरदस्ती जमानी पड़ती है, ठीक है। उधर से बॉल बाहर निकले, उधर से बॉल अंदर आए तो फंसता है। जिस तरह PSL में आपने देखा मोस्टली टीमों ने जब उसे ऑफ स्टंप पे रखा ही है, नो आइडिया अंदर आगे जो या पीछे कर दिया। So Josh Butler, let's that we are there on the board already.
Rispa, take us through Josh Butler. कि जॉस बटलर के लिए क्या प्लान होना चाहिए न्यूजीलैंड का, कीपिंग इन माइंड न्यूजीलैंड बॉलिंग अटैक, व्हाट शुड हैपन देयर? वो खेल में तो उसको नहीं कराएंगे थोड़ी देर, पहले खेल में उसी को कराएंगे क्या है उसके खिलाफ। सेंटर को करा सकते हैं, बट हमने काफ़ी इस पर बात की है, वहाब ने बहुत ज़्यादा ये डिस्कस किया जॉस बटलर को। नंबर 1 2 फील्डर आपके पास से उठाए हैं, तो स्पेशली जिस तरीके से जॉश ने रैंक शॉट खेलता है, वहाब हमेशा यही कहता है और हमारे मोस्टली बॉलर की ये फील्डर आप कोशिश करें नॉर्मल में, तो फाइन लेग फीचर है, फाइन लेग फीचर। ओके, इसमें मैं थोड़े सा ऐड कर दूंगा। असल में जब नया बॉल होता है तो हम लोग मोस्टली स्केल लेग को कवर करते हैं। जॉर्ज एक ऐसा बैट्समैन है जिसके लिए जब शुरू में, क्योंकि ऑब्वियसली 2 फील्डर जब आपके बाहर होते हैं, तो आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि उसको इस विकेट की जो ये चीज़ है यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे करके, ओके, थोड़ा वाइड, दिस इज नॉट इवन योर स्केल लेग, दिस इज नॉट इवन योर फाइन लेग। होता क्या है कि जो शॉट खेलने जाएगा स्केल लेग से, तो वो आप इधर से, क्योंकि ये लाइन अगर हम देखें तो ये इधर से इसलिए बनती है और ये इधर से इसलिए बनती है, तो इफ यू हैव अ फील्डर इन बिटवीन, तो अगर अंटिल इट्स वेरी फाइन, तो बॉल मोस्टली आप देखेंगे यहाँ पे ही जाता है, और बुरा बॉल फाइन जाएगा, और बुरा बॉल जो है टांग पे जो होगा वो दैट विल गो फाइन लेग, खींचेगा वो मोस्टली बाहर जाएगा। तो पहले 6 ओवरों में आपका यहाँ पे आई प्रेफर के फील्डर यहाँ पे थोड़ा बाहरी साइड पे, और उसके लिए आप थर्ड मैन लेके स्टार्ट करें। ओके, जॉश एक ऐसा प्लेयर है कि अगर आप उसको ये बता रहे हैं फील्ड चेंज करके कि मैं पहले से ही प्लान एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ विदाउट लाइक खेले में, सो यू नो एज अ बैट्समैन ही विल बी इन मच मोर कंट्रोल कि यार ठीक है ये फाइन लेग भी ऊपर ले आए, ये थर्ड मैन भी ऊपर ले आए, तो ये डरे हुए हैं, देन ही हैज मोर चांसेस टू स्कोर। ओके, बट नए बॉल से यू बॉल हिम विद इन द स्टंप एग्जैक्टली, थोड़ा सा आउटस्विंग करें, थोड़ा सा वो फंसता है, कितनी बार देखा अर्ली ऑन जैसे ही वो आता है, अगर आप उसे ऑप्शन से थोड़ा सा बाहर 30-34 स्टंप से बॉल आगे करें, he tends to drive or die in the set, but he's a quality player, he's a game player, so Misbah उसके पैर नहीं हिलते ना, थोड़ा सा आगे आप आगे करें, ही हैज गॉट, मैंने उसको आउट किया था काफी बार इसी तरीके से। और फिर वंस जो हम मैं नेचुरली बात करता हूँ जॉर्ज के बारे में, अगर फील्ड फिट करते हैं, ठीक है, बिकॉज ही इज एन अटैकिंग प्लेयर, आई वुड डेफिनेटली जिसका मिश्रा भाई कह रहे थे कि वी शुड कीप दिस फाइन लेग, ठीक है, वी शुड कीप दिस स्केल लेग अ लिटिल बिट वाइडर, ये अंपायर के इस साइड थोड़ा सा अंपायर से इन फ्रंट ऑफ बाहर नजर आ रहा है, ये तो बॉल बिल्कुल मुंह में है ना, बिल्कुल मुंह में, वो अंदर something back deep into the crease, एग्जैक्टली, लेकिन जब बॉल नया होता है आप उस टाइम टू बॉल इट फ्रॉम अ गुड लेंथ जिसकी हम बात कर रहे हैं, उससे बॉल स्विंग करने के। सो अगर फील्ड खुल जाती है, साउदी है, बोल्ट है, मिलने क्विक है, सो आई विल ऑलवेज कीप दिस विकेट अप सर्कल के बाद, आई हैव दिस फील्डर, फिर मैं ये वाला फील्डर मिड ऑफ वाला ऊपर रखूंगा, पॉइंट और कवर आपको ऊपर होता है, आई टेक 1 दिस बैक स्वीपर और ये। अच्छा, अब इस फील्ड में आपके पास चांस ये है कि इधर से आप उसको जब तक बॉल आगे नहीं करेंगे मुंह में, वो आपको इधर से शॉट नहीं मार सकता थ्रू दिस गैप, इस गैप के बीच में से जॉर्ज जो है वो आपको इस गैप के बीच में से शॉट नहीं मार सकता जब तक आप बॉल बिल्कुल आगे नहीं करेंगे। ओके, ठीक है, राइट, अगर जबरदस्ती मारने जाएगा ऑफ द लैंड तो ठीक है। ये जब फील्डर इधर है तो आप उसको टेंड कर रहे हैं कि वो इंडिया में बॉल की कोशिश करें मिड विकेट मारने की, जो कि उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। विद हैविंग दिस फील्डर ही ऑल्सो नोज कि आपको मुझे बाउंसर आएगा, एंड ही इज नॉट कंफर्टेबल विद द बाउंसर। ये हमें शमीरा ने दिखाया अपने आखिरी ओवर में, इवन दो व्हेन ही वाज बैटिंग ऑन 80 ऑड प्लस, शमीरा ने दिखाया कि अगर आप उसको वन डायमेंशनल बॉलिंग नहीं कर रहे तो ही हैज नो आइडिया एज अ प्लेयर कि मुझे बॉल कहाँ आएगा, और शमीरा ने एग्जैक्टली यही फील्ड की। अब आप इट्स इम्पोर्टेंट फॉर जॉस बटलर, जो हम बार बार बात करते हैं कि उसको आपने डेथ बॉलिंग पे नहीं जाना, उसको नॉर्मल फील्ड रख के, इवन अगर वो सेटल हो भी जाता है तो उसको सरप्राइज रखना है आपने, सरप्राइज बॉलिंग करनी है, तो बाउंसर भी हो सकता है, लेंथ बॉल नॉर्मली आगे उसको ज़्यादा नहीं करना, कोशिश करना है कि उसको क्लैम्प करना। और अगर उसको वेरिएशन करनी है गाइस, तो किस तरह की वेरिएशन करनी तो पड़ेगी, 6 की 6 तेज तो नहीं कर सकते। वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक वेरिएशन आप उसको बिल्कुल करें, बट विद दिस फील्डिंग अगर
मैं बॉलर हूँ, विद दिस फील्डिंग आई आल्सो नो कि द बैट्समैन इज स्टिल गेसिंग कि मैं क्या करूँगा, ओके बॉल क्या करूँगा। अगर मैं ये वाला फील्डर पीछे ले जाता हूँ यहाँ पे जिसका मिडविकेट रहता है फाइनल ऊपर जाता है, फिर आप उसको जितनी मर्जी वेरिएशन कर दें, उसका ये शॉट इतना अच्छा है कि वो उसको 90% कनेक्ट करता है। सो उसको वेरिएट आप जरूर करें। इवन विद दिस फील्ड अगर आप उसको स्लोअर रन वगैरह करते हैं तो यू कीप बॉलिंग दो स्लोअर रन, लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर थर्ड मैन ऊपर आ जाती है। आमिर ने उसको ऐसे आउट किया था वर्ल्ड कप में। आमिर टेंस के ये वाला फील्डर पीछे ले जाता था और ये वाला फील्डर ऊपर ले आता था, फिर भी आमिर उसको बाउंसर एक और बाउंसर जरूर करता था और स्लोअर वन करता था। और देन ही एज एन आइडिया कि अगर स्लोअर वन लेंथ पीछे है तो वो उसके इन डायमेंशनल पे ओके ये फील्डर आपका यहाँ पे आया, ऊपर आ गया, देन वी कैन टेक दिस वन बैक। यहाँ आपके पास ये भी ऑप्शन है, इफ यू आर हिटिंग द हार्ड लेंथ और स्लो पीछे करना लेंथ, तो यू कैन जस्ट ड्रैग दिस फील्डर। और ये वाला फील्डर आप ऊपर ले आए, फाइन लेग पीछे ही रखनी चाहिए, फाइन लेग आप पीछे रखो उसके लिए। आप स्क्वायर लेग ऊपर ले आए। मैं आपको दोबारा से एक डिफरेंट जो इसका वो है वो बना देता हूँ। अगर हम आफ्टर 5 ओवर्स बॉलिंग करें, अगर हम मैं प्रॉब्लली जब उसको लास्ट ओवर में बॉलिंग करता हूँ, वसीम भाई मिड विकेट बायर है, ठीक है जी, आपकी मिड ऑन बायर है, और जो दो घर पे देख रहे हैं ये हम जॉर्ज बटलर के लिए बात कर रहे हैं कि उनके लिए किस किस्म की फील्ड सेट होनी चाहिए, किस तरीके से उनको अटैक करना चाहिए या फंसाना चाहिए सो दैट यू गेट हिज विकेट, तो ही इज द की प्लेयर फॉर इंडियन। तो वहाब इस वक्त पे ये फील्ड सेट करके बता रहे हैं हमें, मुख्तलिफ हमने ऑप्शन देखे हैं वकार अभी तक। There you go. So yeah, there is the peak. वहाँ पे कर फाइन लेग है, स्क्वायर ऊपर है, मिड विकेट पीछे है, लॉन्ग ऑन है, मिड ऑफ ऊपर है, ये ऊपर है, कमर है, कीपर पीछे है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक चीज मैं बता दूं कि स्क्वायर लेग ऊपर लेने से मैं कंफर्टेबल मैं क्यों, क्योंकि उस वक्त ये है कि आप उसको अगर लास्ट ओवर में हम अक्सर देखते हैं जब हम शॉर्ट ऑफ लाइन बॉलिंग करते हैं या बैक ऑफ लाइन बॉलिंग करते हैं ज़्यादा, तो बैट्समैन क्योंकि इतनी अच्छी फॉर्म में होता है तो वो बॉल को यहाँ से कनेक्ट करता है। जब वो यहाँ से कनेक्ट करता है तो चांस है कि वो मिड विकेट जाएगा और मिड ऑन जाएगा, या वो थोड़ा सा मिड विकेट से इस तरफ आएगा। उसमें ये होता है कि अगर आप बाउंसर तेज बाउंसर है तो एज होगा और वो पीछे फाइन लेग जाएगा। अगर वो शॉर्ट बॉल है और आप उसको आगे से पिक करें तो वो मिड विकेट जाएगा। इसलिए जो स्केल ड्राइव वाला फील्डर है उस पर आप अक्सर देखेंगे कि एंड में बाउंड्रीज बहुत कम मिलती है। इवन कि अगर आप स्लो वन भी कर रहे हैं और बैट्समैन पिक कर लेता तो इट विल गो दैट वे और इट विल गो दिस वे। स्केल ड्राइव पे चांसेस बहुत कम होते हैं और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था कि जब 2015 के वर्ल्ड कप में आई स्टिल रिमेंबर कि जब हम बॉलिंग प्रैक्टिसेस करते थे या इवन मैचेस में करते थे तो मिसबा भाई साथ थे, उसके बाद स्टार्ट फील्डर बैरल आउट, तो उसमें फिर हम ऐसे करते थे कि मिसबा भाई ये कहते थे कि यार तुम लोग स्केल लेग ऊपर लो, वो वाला फील्डर और फाइव लेग वो पीछे लो, तो उसमें फिर आप बॉलिंग करो। तो उसका फिर मुझे आइडिया हुआ कि वाकई जब हम पीछे करते हैं या थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं तो अक्सर हमें स्केल लेग की जरूरत नहीं होती। इवन तो अगर आप यॉर्कर्स भी मारने जा रहे हैं तो स्केल लेग पे बॉल बहुत कम जाएगा अंटिल वो इनसाइड एज होता है। क्योंकि एज ए बैट्समैन इस फील्ड का मकसद ये भी है कि मुझे जब लगता है कि यहाँ मेरे पास गैप है नंबर 1 और यहाँ गैप है, तो मैं कई दफ़ा अपनी बहुत सारी जो अकॉर्डिंग टू द बॉल उस टाइम पे मुझे बॉल होना है रेस्ट करना है, मैंने बहुत सारी ऑप्शन में पहले ही अपनी जो है वो हो सकता है रेंज में मेरे एक चीज़ चल रही है तो वो मैं वैसे ही छोड़ दूँ। ओके, तो होता क्या है कि उधर ही बॉल अगर आ गया मेरी टांग पे, आई एम ट्राइंग टू हिट इट स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, होता नहीं है, थोड़ा इधर बॉल होता है तो मिड विकेट चला जाता है, मिस हो जाता है, थोड़ा सा इधर आप खेलने जाते हैं तो 90% जो है वो बॉल फाइन लेग की तरफ चला जाता है और बाकी ऑप्शन आपने वैसे ही छोड़ी हुई है। तो अगर आपको कोई और बॉल ऑप्शन पे मिलता है तो उसके लिए आप मेंटली कई दफ़ा तैयार ही नहीं होते, तो वो बॉल भी आपका जो है ना वो, तो ये मेरे ख्याल में ये इस किस्म की जो फील्ड है स्पेशली बटलर जैसा बैट्समैन जिसके पास बहुत सारे शॉट्स हैं, बहुत ऑप्शन हैं, उसको थोड़ा सा उसके माइंड से खेलना बहुत ज़रूरी है बॉलर को। एक्सीलेंट गाइस, थैंक यू। ऑलराइट, सो ये हम जॉर्ज बटलर की बात कर रहे थे, इस वक्त जॉर्ज बटलर हमारे साथ मौजूद है, आइए सुनते हैं। You have Josh Butler there, clearly saying we've got plenty of guys in backup.
and whoever gets a chance is going to relish it. And definitely that is how it's going to be, क्योंकि आज जिसको मौका मिलेगा उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो अपनी स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी जरूर लगाए इस मैच के ऊपर। आप देख रहे हैं द पेविलियन और ये है ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स एंड वी आर गोइंग टू सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। Welcome back to the pavilion. Now, आप देख रहे हैं Sports and Sports, and today is a big day. It is the first semi-final, England versus New Zealand. England का preview package आप देख रहे थे. We've seen interestingly, we all know that they back really deep. आदिल रशीद तक जो है वो 10 first class सेंचुरियां बना चुके हैं. And so as you get rid of one batsman, there is another one waiting. Well, I suppose I can understand a batting का 11 तक जब पहले 6 भी नहीं किया तो आखिरी 4 में भी नहीं करना I suppose. But yeah, they have a good all-round side. And that's why they are one of the favorites even before the World Cup started. Why don't you take us through what the New Zealand bowlers should be doing? Because this is the deep batting, the opposition. अभी इन्होंने explain किया वो तो हम बटलर की फील्ड का कर रहे थे. But I suppose I have to talk about Trent Boult. What I like about him, the way he swings the ball early on, like Shaheen, I mean experience है उसे अंदर लाता है, कोशिश करता है, बड़ा सिचुएशन अवेयरनेस पड़ी है इसको जी किस तरीके से अगर जैसे हमने देखा अफगानिस्तान के खिलाफ दोनों बॉलर जिसने और शादी ने वो शहजाद को पीछे ही रखा है जब उसको पीछे रखा है तो उसको समझ नहीं करना क्या तो जब चेंज प्लान का प्लान ए प्लान बी दोनों होते हैं और बड़ी हार्मनी में दोनों जो बॉलर हैं जो फास्ट बॉलर जो पहले दो करते हैं आई थिंक बड़े सिंक में है दोनों एक्सपीरियंस भी है दोनों के बाद Why did he show us what he should be doing? Let's take you to the board. Now that we have it, इसको इस्तेमाल भी करना चाहिए उसे. Sure. So we are going to talk about the New Zealand bowling क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग बहुत डीप है and we've got the Sultan of Swing explaining what should be up. आप पिच मैच पे भी आ सकते हैं अभी तो भी आ सकते हैं. Over to you, Wasim. Thank you guys. You've seen this is the pitch obviously जब वो bowling करेगा 9 गेंद से वो कोशिश करेगा फर्स्ट अगर वो बटलर खेल रहा है या विंस के लिए तो डेफिनेटली एक स्लिप जरूर रखेगा यहाँ पे दैट्स अ स्लिप एंड ऑब्वियसली दैट कीपर आ जाएगा थर्ड मैन पीछे होगा उसका एंड देन आई सपोज इस बटलर के लिए वो फाइन लेग पीछे रखेगा कि ऊपर रखेगा है वहाँ फाइन लेग ऊपर होनी चाहिए ऊपर रखेगा ना बटलर के लिए और बाहर पहले शुरू में बाहर लेटिंग गो like there in the middle you were saying and then point will come here extra cover will come here and of course mid off will come here ये बहुत बड़ा gap कर दिया extra cover थोड़ी यहाँ पे आएगी and then mid off is over here और फिर आपका you know एक fielder extra इधर आ जाएगा but overall वो उसका जो area होगा एक मिनट आपको बताता हूँ बता के तुरंत करेगा cancel and then या बेसिकली वो कोशिश करेगा जो इसने आपको लेंथ बताई है उसके खिलाफ इस लेंथ पे बॉल करेगा ये and you mean just outside off stump the thing yeah within middle and off just first slip के थोड़ा अंदर और मिडल स्टंप और ऑफ स्टंप के दरमियान नया बॉल जब वो कोशिश करेगा अंदर लाने की वो ये करेगा अगेंस्ट बटलर एंड विंस के खिलाफ आई थिंक वो कोशिश करेगा कि क्रॉस जाए ताकि मिसवान एक्सप्लेन के कि अगली ओवर जब वो शॉट मारने जाता है ऑफ स्टंप के बाद थोड़ी अगली गेंद की तो वो उसका एज उधर जाता है इट बी अ गुड कॉन्टेस्ट बिटवीन बैट एंड बॉल दोनों स्ट्रॉन्ग साइड्स हैं और आई सपोज नॉकआउट मैच में वो टीम जीतती है इन दी एंड जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होती है इससे एक चीज़ मुझे पूछती है क्योंकि आप खुद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर रह चुके और आपका बॉल बहुत अच्छा अंदर आता था इनस्विंग बहुत अच्छा आप करते थे बोल्ट इज द सेम एज वेल उसका बॉल भी अंदर आता है ये तो हो गया कि हम सोचे क्या आइडिया अगर आप बॉलिंग कर रहे होते बेसिकली अगर आप बोल्ट हैं और आपको इन दोनों को बॉलिंग करनी होती जिस तरीके से आपको पता है ये लोग जिस पड़ते हैं आपका क्या प्लान होता है इसके लिए देखो विंस के खिलाफ तो आई वुड हैव बीन वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज एक तो वो मैच प्रैक्टिस उसको नहीं है इज अ वेरी गुड प्लेयर वी स्पोक अबाउट हिम क्वाइट अ बिट इन लेंथ अभी थोड़ी देर पहले बट बटलर के खिलाफ मैं थोड़ा सा बैक फुट पे होता साइकोलॉजिकली जैसे हम होते थे आई सपोज अगेंस्ट स्पेशली नई गेंद पे अगेंस्ट गिलक्रिस्ट या जैस सूर्या किसी ऐसा बॉलर जब ऐसा बैट्समैन आता है आप कई दफ़ा प्रेशर में या ओवर कॉन्शियस होकर गलत बॉल कर देते उसको अगर पता है जयसूर्य ने कट नहीं खानी
तो आपका कट का बॉल चला जाता है. तो दैट्स वेयर आई थिंक bowlers have to be very strong nowadays. मैं उसके लिए शुरू में कोशिश करूँगा कि अंदर लाऊं और फील्ड में उसके लिए वही रखूँगा. या फील्ड में उसके लिए वही रखूँगा. मेरा फाइन लेग पीछे होगा इन द मिडल जो उसने एक्सप्लेन किया, और थर्ड मैन पीछे, और मेरा जो बाहर फील्डर होगा वो थर्ड मैन होगा, और फाइन लेग जो मैंने स्क्वायर लेग और फाइन लेग के दरमियान रखी है, ये मेरी फील्ड होगी. अगर अंदर शुरू में अच्छा नहीं आया तो मैं कोशिश करूँगा क्रॉस जाऊँ और फील्ड में एग्जैक्टली यही रखूँ, ताकि वो अगर इधर मारने भी जाएगा तो जब क्रॉस जा रहा हो तो कोशिश है कि वो खड़ी होगी. से स्टार्ट करेंगे, और अगर बहुत स्विंग नहीं हो रहा जिस तरह आपने बात की, आप स्लिप वाला फील्डर कैसे यूटिलाइज करेंगे? उसको एक्स्ट्रा फील्डर लेके आएंगे कवर्स में, या आप इसको जो है वो नॉर्मल? मैं आई सपोज आई फील कंफर्टेबल कि मैं उसको कवर्स में लेके आऊँ, ताकि आई गेट बिट मोर यू नो, बिकॉज वो इधर उसके हाथ बड़े तेज चलते हैं, तो मैं एक्स्ट्रा फील्डर कवर पे लेके आऊँगा. बिकॉज अगर लास्ट में उसने हमारी शॉट और आप क्योंकि वसीले यॉर्कर हैंड में बहुत अच्छे करते थे, और आप लोग उसको बैटिंग करते भी देखा, उसको काफ़ी ज़्यादा मोमेंटेटर भी रहे जब वो खेल रहा होता. बटलर, व्हाट इफ इन द एंड डेप्थ में आपको बॉलिंग करनी पड़ी है, तो उसके लिए आप वही करूँगा कि मैं अपना वही पीछे पहले शुरू में फील्ड फाइन लेग रखूँगा, वही थोड़ा वाइड, बिकॉज उसकी मैंने ये शॉट होती है उसकी स्ट्रेंथ है, और मैं कोशिश करूँगा अगर वो ये अगर वो मारता है, अगर फील्डर पीछे भी है तो ये शॉट ज़रूर मारता है, वो रुकता नहीं है. बिकॉज जैसे रिजवान है, वो उसके लिए पीछे दो फील्डर रख लो, वो अपनी रिस्पॉन्स से कहे कि स्टिक टू योर स्ट्रेंथ. अगर तुम्हें स्ट्रेंथ समझ लो ये तुम्हारी शॉट है, गो टू शॉट है, गो आफ्टर इट, डोंट वरी अबाउट द फील्डर. तो मैं कोशिश ये करूँगा जब वो क्रॉस जाए तो मैं उसको स्लो बॉल करूँ, ताकि स्लो बॉल को ये शॉट मारना पूरी मिडल होगी तो पीछे जाएगी, नहीं तो अगर हाफ वाटिंग की लगी तो चांसेस है कि जो फील्डर मेरा फाइन लेग स्क्वायर लेग के दरमियान है वहाँ कैच होना. राइट, आई ऑल्सो वॉन्ट वकार भाई भी यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि आप लोगों का बड़ा एक वो कॉम्बिनेशन रहा है थ्रू आउट. तो आई वुड लव टू नो कि आप लोग जब बॉलिंग करते हो, प्रॉब्लम पीपल लव टू नो जब आप लोग बॉलिंग करते हैं, हाउ यू गाइस नीड टू डू दैट. लाइक आप लोग क्या सोचते थे उस क्रिकेट में किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, या यॉर्कर करने हैं, किस बैट्समैन को कैसे, और फील्ड में उस वक्त फील्ड में स्लो वन कितना आप लोग यूज़ करते थे, अपने दौर में यूज स्लो वन का कितना यूजेज था? देखो मैंने एज अ बॉलर मैं और वकार आई थिंक मैं दोनों की साइड बता सकता हूँ. हमें यूज टू लुक फॉरवर्ड टू बॉल इन लास्ट 5 years, बिकॉज हमें पता था कि हमें विकेटें मिल सकती है. तो यू नो उसमें बिकॉज बैट्समैन ने मारना है, चांसेस हम मार भी पड़ जाए, पर हमें ये भी पता कि हमें विकेटें भी मिलेंगी. सो आई यूज टू एंजॉय बॉलिंग इन लास्ट 6 to 7 years. तो मोस्ट ऑफ द ईयर्स हमने 5 ओवर एक घंटे की. T20 में तो आप एक ही देखो ना, उसका स्ट्रेटजी ऐसी है बिकॉज आप चाहते नहीं कि बैट्समैन आपको अच्छी तरह देख ले और आपको यूज टू हो जाए. दैट्स व्हाई हैंस टू चेंज ओवर आफ्टर ओवर टू बॉलर. मेरे ख्याल में हुसैन भाई जैसे बटलर वो ऐसा बैट्समैन है, सारा सब लोगों को हम बता रहे हैं कि यहाँ पे उसको बॉल करना है, यहाँ पे बॉल करना है. तो बेसिकली ये समझना ज़रूरी है कि बटलर एक ऐसा बैट्समैन है कि जब तक उसको आप कोशिश नहीं करेंगे कि आउट करें हम जल्दी, या जब वो सेटल हो जाएगा, जितने मर्जी आप प्लान एग्जीक्यूट कर लें, प्रॉपर फील्ड भी रख लें, वो उसके पास वो स्किल है, स्किल वो आपको डैमेज करेगा. तो अर्ली ऑन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लीग का अगर वो आगे से थोड़ा सा चौथी स्टम्प पे ऑफ स्टम्प पे अर्ली ऑन प्रॉब्लम होती है उसको, तो वो कोशिश करता है सिट बैक, पीछे रहता है, बैकफुट में बहुत अच्छा खेलता है थ्रू कवर, और बहुत ज़्यादा बीच में भी आप आते हैं तो सामने ये वाली शॉट अच्छी मारता है. तो उसको आपने वहाँ पे कोशिश करनी है चांस लेने की, आउट करने की. इसी तरह वो सेट हो जाता है, स्पिनर उसको डैमेज करता है. नो मैटर कहाँ आप बॉल कर रहे हैं, इतनी शॉटें हैं. रिवर्स स्वीप आपके अच्छे बॉल को, खिंची हुई लेंथ वाले बॉल को रिवर्स स्वीप मार देगा, 2 फील्डर उसके ऊपर से मार देगा. इसी तरह स्लॉट स्वीप अच्छी मारता है, अंदर स्वीप छोटी स्वीप मारता है. फिर वो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लेंथ कितनी जल्दी पिक करता है, फीट यूज करके सामने भी छक्का आराम से मारता है. एक्स्ट्रा कवर रीजन बड़ा स्ट्रॉन्ग है उसका, रेंज स्पिनर. एंड इफ यू ड्रॉप इट शॉर्ट, बहुत कम बैट्समैन है जैसे सेल मले जैसे पीछे डेप्थ ऑफ द क्रीज यूज करके आपको बैक फुट से छक्का मार देगा मिड विकेट की तरफ. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके खिलाफ आप थोड़ा सा एग्रेसिव पॉजिटिव माइंड सेट पे जाएँ और कोशिश करें, जैसे वहाँ में बात करें कि नॉट ओनली टू
स्टॉप एंड स्कोरिंग रन एग्रेसिवली उस पर बाउंस करें और यूज करें और कोशिश करें उसको कि जहाँ भी उसको आउट करें, वरना वो खड़ा रहेगा तो आपने मैच पे 100 कर दिया शायद इस पिच पे जहाँ 12-13 ओवर तक समझ ही नहीं आ रही थी बिकॉम देयर ऑन और उसने गेम ही चेंज कर दी। बता आपकी अभी चूँकि आप पॉइंट आउट कर रहे थे कि आप लोगों की क्या साइकिल होगी, एक चीज़ तो बड़े वाले तौर पर डिफरेंट है कि उस जमाने में बैट्समैन इतनी ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन नहीं करते थे, ये स्कूप ये रिवर्स स्कूप और हमको रिवर्स ये भी आ गया फास्ट फॉरवर्ड करना था। ऐसे मौके पर आप लोग किस तरह यंगस्टर्स को क्या सजेस्ट करेंगे, हाउ शुड दे अटैक बैट्समैन काफ़ी बहुत चीज़ क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन नहीं थी। स्लोअर वन आप लोग कितने यूज़ करते थे उसके बाद क्या नॉट एज मच आप लोग ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं और वेरी आप लोग करते थे तो वो तो हमें पता है रिजल्ट सर्विस से बड़े आउट किया स्लो वन मैं इसीलिए पूछा उनसे लेकिन जो फील होते थे वो इस वक्त क्या फील देते थे क्योंकि उस वक्त इम्प्रोवाइजेशन तो ज़्यादा नहीं थी, इतनी नहीं थी, लेकिन लाइक द लाइक्स ऑफ मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट, एंड्रू साइमंड, इसी तरीके से दूसरी टीमों में भी हमने देखे हैं। एंड्रू साइमंड में 2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा पहला मैच था and Australia 99 for 4 and you know when you're in the opposition in 99 for 4 opening day of a World Cup at Joburg, उसके बाद भाई आए हैं सिविल भाई आए हैं उन्होंने लाइनअप भी तो है उसने मुझे छिक्का मारा, मैंने कहा कैच इट, तो वो छिक्का इस एंड से बैटिंग जा रहा है, बॉल फाइनल ना वहाँ से बैटिंग जा रहा था, तो भाईजान ने कवर में मारा मुझे छिक्का, बॉल आउट हुई। We got the third one of them cars last. Excellent. I'll let the others know we have everything we need. We'll meet at the strip club. ओके आप कुछ पढ़िए तो फिर वो उसको निकाल सकते हैं। पता है कि जोबर्ग में इट्स अबाउट सी लेवल सर्टेन हाइट है उसकी, या वहाँ पे एयर स्पिन है तो वहाँ पे छक्का चौका नहीं लगता, गेम नहीं मिलता, ग्राउंड छोटी है इतना बुरा ना बनाया, ग्राउंड छोटी है आप तो चक्कर मारना चाहिए नहीं आप देखेंगे ना ये क्या का सवाल आई थिंक ओवरऑल क्रिकेट बदल गई, डोंट फॉरगेट दैट, बैट्समैन को खेलने का तरीका बदल गया। T20 में क्रिकेट में आकर रेवोल्यूशन बेसिकली लेके आए क्रिकेट में, क्रिकेट इधर इंटरटेनमेंट हो गई है। पहले एक बड़ी जेंटलमैन गेम जो हमने जब शुरू की तो बिल्कुल ही टोटल जेंटलमैन थी, 220-15 रन कर लो वनडे में यू विन द गेम। तो उसके बाद स्लोली हमारे ज़माने में एंड पे 280-300 भी होने शुरू हो गया था, एक मैच में 365 भी हुआ था नॉटिंघम में, तो वो ऐसा उस दौर में आना शुरू हो गया था, तो इतना मुश्किल नहीं था बॉलिंग करना। बट अब टीम भी हमारी 2 ऑल आउट से पहले 10 ओवर के 15 ओवर इसके बाद 15 ओवर का बॉल भी होता था एंड फिर देन इट वाज नॉर्मल। इन्होंने ओवर द ईयर्स बहुत सारी चेंजेस आई हैं। इन्होंने एक दफ़ा ये भी हो गया था कि आप 15 ओवर के बीच पे कुछ ओवर उन्होंने पावर प्ले कर दी, फिर एंड पे कर दी। अब उन्होंने मॉडर्न नौ रूल है, वो ये है कि आपके पहले 10 ओवर पावर प्ले और फिर आखिरी 10 ओवर पावर प्ले, वो मुश्किल हो गया। तो आखिरी 10 ओवर में जो होता है ना, अगर उसको बंदा सेट हो ना बटलर की तरह का बंदा, तो फिर वो जो एक बंदा ऊपर आते हैं ऐसा लगता है सारा ग्राउंड खाली है, इट फील्स लाइक दैट, यू डोंट हैव एनफ फील्डर्स। हाँ ऐसा लगता है। Very slow run from New Zealand camp. Sorry बताना आपकी बात आपकी slow run कितनी रह गई प्लीज उधर से गल करिए। I was dying to hear my version के slow run कैसे, वहाँ भी हमारे ज़माने में slow run उधर होता ही था, बहुत कम होता था क्योंकि इतनी डाटाबेस नहीं होती थी, इवन बैट्समैनों को भी नहीं पता होता था बॉल, वो सिर्फ यही डाल रहे होते थे जो करते हैं इससे पैर कैसे दिखा, यू नो एट पेस अगर आप उस तरह का बॉल कर सकते हो उस ज़माने में, प्रॉब्ली अगर हम अभी कोशिश करेंगे तो प्रॉब्ली हमें भी मार पड़ेगी। दैट्स माय फीलिंग कि आपको यू नो रन होंगे, लेकिन उस ज़माने में क्योंकि यू नो बॉल एक होता था, वो पुराना जल्दी होता था, रिवर्स होना शुरू होता था, इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर अस। तो स्लो रन बहुत रेयर होता था, जब बहुत ही समझ नहीं आती थी कि जैसे मारी जा रहा है और बीच में स्लो रन करते थे लेकिन फिर भी मार देंगे।
really doing this shit. Frank, come on, next door. Ah, our network hacker. They don't be fooled by the CRT and the fax machine. The hardware here is state-of-the-art. Cool. Hey, the rest of the crew. Outside. Hey, good luck, homies. I'll see y'all at Mission Pro, all right? Oh, we'll see you there with approximately 8 tons of gold. More tons. Got it. All right, people, let's go. Get in the car, baby. We are about to make history. Come on, we're on the clock. Let's get to the tunnel. This the best you could do? What are you talking about? These fucking guys? They're cool. Look, we pulled that thing with them. It went fine. It went down okay, didn't it? You don't want me on board? I can walk. You setting these guys up for a fall? Huh? Is that what this is about? If they're the diversion, maybe it makes sense. This whole treachery thing is new to me. Don't listen to this asshole. It's all good. No one is being set up. I've heard that before. Shut it, Trevor. This is the big one. And fuck me if we don't need any doubts in the back of our heads. All right, the trucks aren't here yet. Let's sit tight. No need to panic. We weren't panicking. Something wrong? Nothing's wrong. We just gotta wait. You saying don't panic makes me want to panic. All right, here we go. This is it. All right, all right. See the bands. Rock and roll. Rock and roll. Seriously? Let's go. Deploy the Stinger. Now keep driving. They should go... Out! Out! Come on! Get out of the vehicle! Get out of the vehicle! Let's go! Oh, shit. Move your ass! You do not want to die for this shit! Shit. Oh, shit. Your move, buddy. No, 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 no! Get a fucking move on! Come on, move! Hurry up! Just hold on! Hey! Get these ready! Please. Let's go! Let's go! And we got a 1-minute window before the GPS starts reading abnormal. Then let the slaughter commence! What do you like? This one. Oh, shit. No shit. We need you. No. What's your name? Casey. Casey. Get in the fucking truck. Let's go. Go, get in. Let's go. Come on. Go, move. For welfare. Whip. Union Depository. Here we come. Shit. Relax, man. I'm the one who should be crapping myself. I'm about to rob the biggest bank on the planet. Fuck. Look, Casey, I need you calm. You're no use to me when you're freaking the fuck out. What you want to be right now is useful. Yeah, right. Cool. Onion 86 in sight. Stand by. Hey, I was expecting you like half a minute ago. Here you go. Every time. Onion 86 in the building. Eggplant 22 in sight.
anything stupid. Let's go, pal. Authorization. Good. Good. Access is good. Courtesy. Escort is good. Take us to it. Follow me. Hurry it up, Chubbs. How's things? Good. Yeah. Fine. How about the freeway? It's an absolute B*****CH today. Tell me when it isn't. And you gentlemen have to sit in those trucks, bored out of your minds, staring at more money than you know what to do with. Okay. Let's go. Now that's some kind of door. Hey. So, you know what to do? Uh-huh. Come on. Okay. John will do. Absolutely. We're just holding on to it from Chinese. No, we ever want to keep in the United States. Sure, take what you can carry. Hey, come on. We got a schedule. These are heavy. Yeah. So what's that worth? Gold trade net around 1,700 to 2,000 an ounce. 1,000 kilos of tons. That's $200 million or thereabouts. give me a C. Yep, that sounds good. Get many jobs after this. No. He's retiring. Exploring other opportunities. Hey, chance of an early death increases dramatically when you retire. Yeah, bear that in mind. My back. This much metal ain't normal, is it? Quite irregular. Order came down this morning, but the computer cleared it. Well, let's hope no one untoward gets word. That's with you and the rest of the security gets paid for it, isn't it? Cargo's in the loading bay. Get her on board. All right, come on. Let's not take up any more of this gentleman's time than we have to. That's it. Let's go. Hey, I'm not feeling so good. Hey, come on, Casey. Suck it up. Can't handle the hangover, Case. Do not overindulge. That's right. This man right here will teach you a little something about
Moderation. Don't worry, Case. You move this mental admissions route, and you're all done. Control. Pickup was good. How's it looking up there? Not good, man. Mary wasn't know we took the UD. They out there looking for you. Shit. Okay. What can you do? We got this signal I had. I can use it to keep you away from the clouds. Fuck. I hope you got a solution for this problem. Yeah, dog, we on. Okay. The link's active. Now you can control the traffic lights. Let's go. Good luck. Hey, we got it. Hey, this shit's so easy now. Okay, we in. We got a clean link up. There won't be any lag on your changes. Denmark, heading south. I'm across. Hey, Merck's coming from the east, man. Okay, I gotta go east here. Done. There, leaving us through. Make a left, okay? Oh shit, more Mercs coming from the northwest. Control, I'm stuck at the junction. Now, this is a right, okay? Light is green. You're good. Now don't turn, keep going. Hey man, it's Mercs just to the left of us. Here we go. I got you a clean connection. Shouldn't be any lag on switches. Boom. Hey, on the east side, man, heavies, watch out. We gotta head east at this junction. We're all near. Switched. Hey, look, you gotta go left. There you go. Hey, I picked up more Merriweather northwest of your position. Now you gotta make a right here. Control, we are stopped. Now, over this junction. Green light ahead. Now, go right at this turn. Change is in. Okay, I got more heavies to the west. Changed. Fuck, coming up in front of you, boys. Yeah, go right at this junction. Hey, Merriweather spotted on the south. We got a green light. Top of the grid, man. Shit, more Merriweather. This one looks good. Now far left. This one's clear. Muscle up. You guys, redistribute the weight. Here they are. Hey, good work, Captain. Damn, I can't believe we got the map. All right, hold out fire in the floor. Don't forget our pace here, huh? To let... ये तीन जो टीमें हैं इनमें एक कैरेक्टर है न्यूजीलैंड इंग्लैंड और इसमें ऑस्ट्रेलिया में इनके दो आउट भी हो जाए घबराते नहीं ये अपने गेम फिर भी चलाते रहते साडा मसला ये है कि असं जो दो आउट अंदर थे ना तो साढ़े हाथ खड़े हुए तो साड़ी पेटा छोड़
don't have him. Tell him something that ain't on the news. This whole thing is your idea. Yeah, I understand. Not a word. Exactly. I was shocked. I never saw a thing. Go! Fucking going as soft as that old flaccid boy in your pants. This divorce couldn't come soon enough. Fucking A! Yeah! Oh, man, look! Work first, pick her later, man, right? Oh, shit, Merriweather! Mercenary motherfuckers! You, keep loading. We'll deal with this. Merriweather! There's more coming! Die, you pricks! That ain't even fair! Look out! On the left! I'm a hold. To the front! You do... Take the side! Just in time for the action to start! We deal with the mercs!
Someone's home, you animals! There'll be more coming! Hold them down! Watch the metal! Hey, they ain't getting the score! It was going so sweet! Just fuck off already! So I guess we're shooting our way out of here. Close them down! Fucking mercenaries! How many dudes they got in this private army? That ain't even fair! Ride it up, assholes! Hey man, these guys are every fucking where! We deal with the mercs, we get out! If you're gonna kill anyone, kill the fat one! Fuck off already! There'll be more coming! Paycheck's no good when you're dead, you ass! Just in time for the action to start! Hold them down! I don't feel sorry for you! And they ain't gonna catch the whips! We punch through, we get clear! Come on! Who else will be fucking this up? I think that's it! That's the last of them! So much for the bloodless revolution! And we always get fucked with. You, hold the perimeter. Everyone else, in your cars. Leave while we can. Hey, what's stopping me from riding off into the sunset, huh? With these saddlebags of old? Lester's the only guy who can flip metal without making a noise, dipshit. You wanna try? Be my guest. Alright, lead the way. Push you off the road. Keep going straight through here.
driver sucks, man. Fucking trucks all over the road. We can't even afford a fucking driver to keep the truck going straight.
sucks, man. I don't see the vehicles. Okay, seal the tunnel and get a ground team in there stat. Great. All right. Those guys will take care of the metal. Buster's meeting us at my place. Hey, hey! Hang on. We're just leaving the goal. Yepper. Hundreds of millions of dollars worth of gold. Hey, T, have a little faith. Faith? In you, buddy? All right, in Lester, in the process. Come on. We've been through it a million times. Any fool can take a score. It's getting away clean that makes the difference between those who walk free and those who do not. Man, I wouldn't know what to do with that shit. I'm guessing you wouldn't either, man. I'm sorry. I just have some trusting issues right now, Franklin. If we get away with this, and it's a big if, man, then I can finally really retire. Watch it, Frank. Michael likes to retire with a very interesting exit strategy. Come on, man. I mean, we just took the biggest score in the history of scores. And you bitches just want to moan. My mama never loved me. My friends never loved me. I'm mad because I'm rich. I'm sad because I'm successful. Man, this shit is pathetic. Both of you. Oh, I am so sorry. Hey, we did it, assholes. We did it. Gentlemen, Lester, we have just made history. I don't want to ask a dumb question here, but where's the metal? We got it on lockdown for a few days while I'm waiting for the go-ahead to melt it and remove it. Where? Where? Exactly. Where is just the point. Let's say somebody gets pinched, well then where is the evidence? Or if anyone gets any silly ideas, then they'll just be futile. We can take it easy. Knowing that it's going to be a few
Judas here shows his true colors. Really? Now? Yeah, now, sugar. Why don't you take a moment while you're sitting on that big fat pile of cash to chill the fuck out and realize what's done is done. Whatever you say. Well, this is a good time. See this fella? Fuck you, man! Hey! For a couple of Midwest stick-up artists, you guys sure have become a pair of whiny West Coast douchebags. What the fuck is wrong with the West Coast? Oh, nothing. I love it here. Everyone's so numbed by the sun that if you use a 3-syllable word, they think you're a professor. Man, fuck you. Yeah, fuck you, you high and mighty weasel! And you, don't talk down to these fucking idiots! Hey, leave Lester alone. Oh, you and Lester together? Oh, now that makes fucking sense! Oh, for fuck's sake, man. You all an asshole. Man, I gotta go calm down, homie. This shit was real illuminating. Franklin, sorry. Go on back, have a beer or something. Terra. É que deve como que era. E خلاص हमारा माइंडसेट ये जो विकी डाटा की बात कर रहे हैं जब 96 में आई थिंक मेरा साउथ अफ्रीका से जो ट्रायल सीरीज थी समथिंग इन केनिया और चैंपियंस ट्रॉफी थी 98 में तो बॉब वुलमर उनका कोच था साउथ अफ्रीका का उसने कंप्यूटर 3-4 रखे हुए हैं सामने 2 बंदे बैठे हुए हैं एंड वी यूज्ड टू मेक फन ऑफ दैट उस वक्त माइंडसेट ऐसा था ऑब्वियसली यार कंप्यूटर से थोड़ी गेम होती है रिमेंबर दैट and now imagine is exactly I wanted to bring this point अभी जो मैं बात करना चाह रहा था वसीम क्योंकि उस दिन जब behind the scenes आप लोग गुफ्तगू कर रहे थे और आपने बड़ी अच्छी बात की थी सादा डाटा बैंक यही होता है वीडियो को पूछ रहे थे की करा हुआ है आगे करा हुआ है पीछे करा that was all the information available to you हम जरा काउंटी खेले तो हमें बाकी इंग्लैंड के प्लेयरों का पता था जो वो चीज़ बाकी दुनिया के खेलते थे उनका पता लग गया तो उसी पे मीटिंग जब होती थी कि यही बात होती थी या मेरे ख्याल में इसको यहाँ पे करो इसको यहाँ से करो फिर उसको डेटा हम फ़खर ज़्यादातर ना अपनी स्ट्रेंथ्स की बात करते थे कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है वसीम भाई की क्या स्ट्रेंथ है इंजमान की क्या स्ट्रेंथ है लेट्स प्ले ऑन लेट्स वर्क सो हार्ड ऑन दैट कि आपको उनकी वीकनेस पे काम करने की इतनी ज़रूरत ना पड़े That's a very positive approach to that. With that, दोस्तों हम लेते हैं एक और वक्फा right here on the Pavilion. It's a big day. Semi-final number 1, England versus New Zealand. More talk on the other side. Keep watching A Sports and 10 Sports. Welcome back to the Pavilion. मैं फखर आलम आप देख रहे हैं A Sports and 10 Sports. And today is a big day at the ICC Men's T20 World Cup. It's the first semi-final, England versus New Zealand. With me in the Pavilion, Pakistani legends and superstars Wasim Akram, Waqar Yunus, Misbah ul Haq and Wahab Riaz. ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर हमने स्लो वंस की बात की आपने कहा इतनी ज़्यादा नहीं होती डेटा की बात की कि उतना डेटा अवेलेबल नहीं होता था पता ही नहीं था एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सारा जो है हमने साउथ अफ्रीका को देखा सबसे पहले साउथ अफ्रीकन टीम बॉब वुलमर क्रेडिट टू हिम उसने इंट्रोड्यूस कराया ये सिस्टम लैपटॉप्स एंड डाटा Wahab, let me ask you play modern cricket. The legends have spoken, but आप जरा ये बताएं कि क्या आप जब अंदर क्रिकेट के मैदान में खेल रहे होते हैं अब इस तरह के सेमीफाइनल मेजर गेम नॉकआउट स्टेज क्या आपके दिमाग में डेटा प्ले अप कर रहा होता है या इट्स स्टिल द इंस्टिंक्ट ऑफ अ क्रिकेटर
you know कि यार मुझे लग रहा है इसके पाँव फंस रहे हैं, and all of a sudden data goes on the secondary and your instinct comes into play. देखिए सबसे पहले तो ये बता दूं कि जब हम लोग मैच से पहले खेलना प्लान करते हैं तो उसमें हम लोग किसी तरीके से बोर्ड बना होता है और हम लोग अपना प्लान शेयर करते हैं, और जो हमें हमारे एनालिस्ट होते हैं कोचेस के साथ बैठ के दे टेल अस ईच एंड एवरीथिंग कि कौन सा बंदा कहाँ पे मुश्किल में पड़ता है, इवन दो कि हमने देखा होता है, बट इट इज़ जस्ट फॉर द रिमाइंडर। जब आप मैच खेलने जाते हैं तो उसमें सिनेरियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एट टाइम्स क्या होता है कि जब आपको पता होता है कि आपकी एग्जीक्यूशन, आपको एग्जीक्यूट क्या करना है, लेकिन कभी प्रेशर में और कभी ऐसा होता है कि आप एग्जीक्यूट करने जाते हैं, आप उस तरीके से उसको कर नहीं पाते। देन यू ऑलवेज हैव टू हैव अ प्लान बी कि आपको उस वक्त क्या चीज़ आपके लिए काम कर रही है। हो सकता है जिस दिन मुझे ये हो कि मेरे यॉर्कर्स काम नहीं करे, उस दिन आई हैव टू स्टिक ऑन माई स्लो वन मोस्ट बिकॉज यॉर्कर्स कैन बी गेटिंग आउट फॉर रन। फिर उसमें यह है कि अगर एयर टाइम ऐसा होता है कि आप अच्छा लेंथ बॉल कर रहे होते हैं और वो विकेट से ऐसा किक होता है क्योंकि वो आपके रिदम पे बात चल रही होती है कि उस पर आप बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब आपको सक्सेस मिल रही होती है। सो एट टाइम्स मोस्टली ये होता है कि जब आपके प्लान एग्जीक्यूशन नहीं होती और आप अंडर प्रेशर होते हो, तो मोस्ट प्रॉबेबली फिर आप ये कोशिश करते हो कि इधर क्या चीज़ आपकी वर्क कर रही है, फिर यू ट्राई टू सेट द फील्ड अकॉर्डिंगली और फिर आप उसमें बॉल करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जब हम जाते हैं तो हमारे मैच में हमें सक्सेस मिलेगी, प्लान्स होते हैं, हर एक चीज़ होती है, लेकिन ये होता है कि कभी कभी हम लोग से वो डिलीवर नहीं हो रहा होता, सो हमें मोस्टली मार भी पड़ती है। इस जो प्लान हमने बताया बटलर के बारे में, इसमें मुझे मार भी पड़ी है। राइट, डाटा जो है वो कितने % हेल्प करता है लॉन्ग टर्म? मोस्टली कास्ट recognition from
Slick, it's me. What the fuck do you want? You got my money, punk? But Hey, you got some coconut water or something? I need some electric. Damn, it's kind of warm. Hey, you got a death wish or something. Am I supposed to kill you now? Oh, no. Not me. No. Oh, yeah. Well, that's my boy. That's my boy. He has betrayed everyone he's ever known. He's got you involved with the federal government, and he's messed up several business ventures of mine. He has got to go. And you know what? I'd like to say that this isn't personal, but it is personal. But the feds, man, the feds have told me to kill Trevor, and I obviously can't kill them both. Feds, Steve Haynes, Dave Norton, I own shotguns on how to deploy those two clowns. And I made one phone call, their careers, they are over. So you're gonna A, listen to some 50 grand a year pension owner, or B, $1 billion. Or even the president that's figuring twice. Or C, try and be really stupid and save those two idiot mentors of yours and have everybody in the goddamn state crawling up your ass. A, B, or C. Time's ticking, pal. Beep, beep, beep. And your answer is... You know what? Man, fuck you. Genius answer. Total genius when time is right. You think about me, I got a triathlon. I am in deep training. Why? Fuck you. but Franklin? Let's talk. Man, we need to talk. I got a problem I need your help with. Man, actually, fuck it. Man, we all got a problem you can help us with. Calm down, all right? Come to my house. All right, I'm coming.
imagine a fucking scenario that would fuck things up the worst. Boy, my mind is just racing. No, I don't want to say something that's really exciting, and then you have to act all inflated and say, no, it's just something got the same tattoo I got. So why don't you just go ahead and tell me? Some motherfucker wants me to kill Mike. Some other motherfucker wants me to kill Trevor. I feel I can't kill both of them. Man, I'm fucked, man. I don't know what the fuck to do right now. I can see that. Who are the motherfuckers? Steve Haynes, this angry motherfucker from the FIB. Devin Weston, man, you know, that big rich fucker. Exactly. Right. I say, Michael. Are you for real? Fuck, I don't know. You know everything, dog. I know, okay, but I'm sorry. I guess this is it. You know, I'm doing my best, man. I don't know if you can deal with both of us. I know, man. Fucked. You seem like one of us is fucked. Unless... Steve Haynes was under a lot of heat for shootings in the center. Devin Weston's A, known for a major asshole. B, known to be friendly. Don Percival runs Merriweather. I think actually Weston owns a piece of Merriweather. Right, 11%. Pretty good for sewer liberty. So, they were both wild activity involved in capturing the bullion that we just lifted. Tell them both. You boys are at the foundry in Marietta Heights, melting it down, and maybe, both of them visit. Bam! We turn it into a bust. I ain't got no better idea. Right. I'm gonna get in touch with Michael and Trevor. You go to the foundry, get yourself set. Gotcha. What's up, man? Things are kind of fucked up right now, dawg. It's all good, nigga. Who better to have in a fucked up situation than a fucked up fool like me? Man, that's what the fuck I wanted to hear. Hey, look, I'm coming to your crib to get your ass. I'm here. To the foundry place. Hey, look, hear me out, man. If it's too heavy for you, you can back out, no drama. Hit me with it. Man, we got a real problem, bro. My boys, man. Well, we trying to save them. You actually doing something for your homies for a change? Hell yeah, I'm in. Who wanna clap your homies? Who don't, nigga? These Chinese dudes, some FIB cats, the rich white asshole who scammed us on them cars. Devin Weston? That punk bitch? Why didn't you say we was creeping on him? We ain't creeping on him, nigga. At least I don't think he gonna be there. We gotta take all the heat he can throw at us before we worry about how we coming back on his ass. But you is coming back, right? Oh, hell yeah, we creeping on that fool. Oh, so you ain't the mercurial motherfucker you frontin' as, huh? Man, I'm just trying to make something out of myself, dawg. That don't change who my homies are, nigga. It don't change my family. Shit, nigga, you get me all emotional now. Nigga might have to stop you from sucking your dick, nigga. Oh, please, nigga, fuck off. Man, every fool in this town got somebody who wanna clap. Yeah, but that applies to some fools more than others. Heard that. Nigga, I'm talking about you. Everybody in this town wanna take a pop at your ass. He's lining up, capping and shit, trying to take a shot at the big shit. Ain't
pissed off as many motherfuckers as Michael and Trevor, dog. Shit, nigga, you play big, you stand alone. Yeah, ain't that the truth? Look, man, Michael and Trevor, they should be inside. Can you stay out here and let us know when the bad dudes is coming? I got it, man. I'll holler at you. Hey, they here? I know when I see them, homie. They creep. All right, good. Y'all hear that? If we're doing this shit, man, it's either now or never. Come on, Trevor. Fuck it! Go over there. Where you want me? You hold your position right quick. Okay. I'm gonna go over there. Watch your step. Chill. Wait. Okay, they're mine. Oh, thanks for coming, you prick! Over here, you asshole! Oh, you shouldn't have come here! You know what
save your ass just once. Save me? Nigga, I just want some company. You trying to clap my homie? Team, come in. Frank, I think T's in trouble. There's an FIB team where I last saw him and he ain't responding. Man, I gotta stay out here with Lamar. Can you get to him? Shit. All right, I'm looking for him. Can you stop being an asshole, please? It's getting heavy out here, dudes. Say something! Trevor! There's some serious shit going on down here where I'm at. There you are, you dick! What was the problem? I took a knock. Was sitting out a few rounds. It's good to know you care. Next time I'll leave you to it. Watch out! Another FIB team on the way! They keep on coming out here. It's war zone outside, homies. Are we clear? Yeah, all clear, Frank. We're clear inside. Moving to the exits. I can't take too much more of this. They coming for me. Dude, this is getting heavy. Man, I'm really feeling it. I'm getting mashed here. What the fuck is going on out here? We keep putting them down until they start pulling up. I'm in the shit, man. I'm putting him down! I can't take too much more of this. There's no metal here!
Just gotta silence a few noises. What the hell? Let me see there, son. Steve Haynes. Dave Gordon. No, he ain't never lied. Why? Because nobody fucks with us afterwards. What about that triad motherfucker? The one that think you two boys is dating? Shit, you know he bound to come back. Yep, who's that? Well, who's the guy who's... Stretch, you wanna throw him in? Trevor would throw anyone just to satisfy his blood lust. Whoa! Hey! It's called a fucking loose end, all right? Now, if we're gonna be men of peace and tranquility, we tie up loose ends. Stretch has been a liability. Then we're gonna have to take care of our old pals Devin Weston and Steve Haynes. Fuck, what a mess, man. Well, let's get it cleaned up. How about you get less trouble? Hey, it's me, dog. Nah. Look, I got you on speakerphone. Yeah, I'm here. Put the ground wheels. No, we got some more. Can you get us some whereabouts? Steve Haynes to start. Devin Weston's ass. The Waiting. W-E-I-C-H-E-N-G. Waiting. That's Franklin's spell. Stretch. Yeah, man, look, his real name is Harold Joseph.
Oh my God. I'm clear. Your pal Stretch? He ain't a problem no more, Frank. Shit, he wasn't my pal. He was a dude who attacked us, homie. Thanks. That's all we got, man. We got William Chang and Agent Haynes on the list. Moving on Haynes. Les, see if you can patch me into his radio mic. I want a last reminder of what an annoying prick he is. Los Santos. A city of saints. A city of sinners. And nothing in between but the FIB. Cut! Oh, this is crap. Who writes this bullshit anyway? Okay, alright. You got this framed right? Yeah, looking great. This is the chin. How's the chin? Shut up. The audio's clean? Say something. Check. Yeah, it's great. Okay, fine. We're on. I'm ready. You ready? Speed. All right, let's do this, people. I'm a professional. Let's go. Lloyd, a city of scumbags. The last great American melting pot. 2 parts diluted fantasy, 1 part degenerate reality. Mix. This is the result. Throw in a senior FIB agent, and you've got a
with Haynes. You got a location on Devin Weston yet? Yeah, I do. Merriweather team was dispatched to protect him in his house in the Tonga Hills. I say house, it's more of a... Whatever. Go up there and get him. Who's next? I hit the boy Jane. Don't worry, I'm on it. He's leaving the Beast Club. I'ma do it now.
like his gem was lost again. Hey, the old man's here. He's leaving the Beast Club. I'ma do it now. ज़्यादा बेसिकली डाटा इज़ एन आइडिया गिवन टू यू. डाटा इज़ एन आइडिया विच इज़ गिवन टू यू कि यार ये लड़का ये करता है, ये लड़का ये करता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि एज अ बॉलर जो मेरी स्ट्रेंथ है मैं उसको भूल जाऊँ. मुझे एज अ बॉलर सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है. क्या आज जब मैं ग्राउंड में उतरूँ मैं अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक बॉलिंग कर रहा हूँ. अगर कोई बंदा अच्छा यॉर्कर खेलता है और मेरा यॉर्कर अच्छा एग्जीक्यूट हो रहा है तो आई विल स्टिल कीप डूइंग दैट बिकॉज आई एम गेटिंग सक्सेस ऑन दैट. So data is basically an idea, but as a bowler, जो successful bowlers है, they go with their strength, knowing that कि उनके plans क्या हैं. डाटा का ये भी होता है कि डाटा को समझने के लिए, ये सारी इंफॉर्मेशन समझने के लिए भी आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है. अगर आप बिल्कुल यंग लड़के को या यंग बच्चे को ओवरलोड कर देंगे सारी इंफॉर्मेशन के साथ कि अच्छा तू ऐ नहीं करना है, ऐ करना है, तुझे तू बता ना मुझे, मैं यंग बच्चा हूँ, मुझे बता. अच्छा देखो वसीम, देखिए बॉल जब होगा ना, जब रिवर्स स्विंग हो रहा हो तो कोशिश करना कि जो अंदर लाना, बाहर ना निकालना, क्योंकि ये वजह अंदर से एक्स्ट्रा कवर खेल देता है और फिर कई दफ़ा ऑन के ऊपर से भी खेल देता है. तो सारा कुछ देख लेना. ये देखो, ये तो मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो ये नंबर्स हैं और ये देखो ये सारा ऐसे वीडियोज़ भी दिखा दिए. ये ओके ना? आपको ना इसकी एक और छोटी सी रीजन बताइए. हम इंग्लैंड में बैठे हुए थे तो तला भाई हमारे यहाँ बकार भाई भी थे, मिसबा भाई भी थे, चार्ट इस तरह लगा हुआ था. तो उन्होंने ना तला भाई ने ना बॉल निकाले कि यार ये फलाना बैट्समैन है, बिल साइज बट ले रहा है जो बैट्समैन है. ऑफ स्टम्प के बाहर इसका 125 का स्ट्राइक रेट है, ऑफ स्टम्प के अंदर इसका 150 का स्ट्राइक रेट है, टांग पे 250 का स्ट्राइक रेट है और आगे करोगे तो ये स्ट्राइक रेट है. तो एटलीस्ट हम भी बैठे हुए बैट्समैन से पूछते हैं अगर ये सारी जगह पे अच्छा तो हमने किधर बॉल करना. अच्छा सुने, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो मैच है we're going to have to talk about the New Zealand and semi-final. And now आपको हम लेकर जा रहे हैं इस वक्त बराह रास्त अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पे डैनी मॉरिसन और नासिर हुसैन पिच रिपोर्ट के साथ तैयार हैं. There you have the pitch and the weather report. Misbah saying one of the best batting surfaces out there. Nobody is speaking about the view factor today. I think व्यू फैक्टर तो होता है वहाँ पे, किसी दिन नहीं होता, कम होता है, लेकिन नॉर्मली हमने देखा है कि व्यू फैक्टर कम्स इनटू प्ले.
Obviously, the way he was explaining, आदिल रशीद का भी कि यहाँ पे फुल नहीं जाते, उसकी वो रीज़न बता रहे हैं कि सामने छोटी बाउंड्री है और थोड़ा स्टेयर ऑफ द विकेट, मिड विकेट स्टेयर पे बाउंड्री बड़ी है, इसलिए थोड़ा सा बैकअप लेंथ करते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो इसकी सबसे बड़ी रीज़न है, अबू धाबी में खेलते हुए बॉल जो है थोड़ा सा स्लाइड करता है आगे। अगर आप पिच करते हैं तो वो बहुत अच्छा आपके बल्ले पे आता है। वही जब एज अ स्पिनर आप थोड़ा सा बैकअप लेंथ करते हैं तो बैट्समैन के पास टाइम कम मिलता है, उसको बॉल जल्दी उस तक आता है। आपके लिए इतना आसान नहीं है कि आप इधर पे हिट लगाएं, और जब टांग रख के आप क्रॉस मारना चाहते हैं क्योंकि बॉल थोड़ा स्लाइड करता है, लेग बिफोर बॉल जो है वो गेम में आ जाते हैं। तो दैट्स आई थिंक द रीज़न अबू धाबी में खेलते हुए स्पिनर्स और फास्ट बॉलर भी जब फुलर गेम करते हैं तो नेचर ऑफ द पिच, क्योंकि पिच बहुत अच्छा है, सामने हिट बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा बल्ले की बॉल है। तो दैट्स व्हाई द शॉर्ट लेंथ ताकि कट हो, फुल हो, सीधी ड्राइव ना लगे, ओवर ना करे। जो पिच अभी आपको नजर आई है वहाँ यू हैव प्लेड है और बहुत जल्द आप यहाँ पे दोबारा खेलने के लिए जा रहे हैं, आई थिंक फ्यू डेज टाइम। इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें विन द टॉस एंड डू व्हाट? देखिए, विन द टॉस एंड एवरी टीम विल ट्राई टू होल्ड फर्स्ट। उसकी वजह ये है कि न्यू फैक्टर इज ऑलवेज देयर और यू नेवर नो कि न्यू आती है या नहीं आती, बट इट इज़ मोर ईजियर फॉर द टीम जो टारगेट फेस कर रही है। प्लस इस टाइम पे बॉल जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्विंग भी होता है, सो दैट इज़ एन एक्स्ट्रा हेल्प फॉर द फास्ट बॉलर। और इस ग्राउंड में सो फार ये वर्ल्ड कप में 12 मैचों में से आई थिंक जो टीमें 4 दफ़ा टीमें बैटिंग पहले करके भी जीती आउट ऑफ, एंड बाकी 6 ऐसे ही है। लेकिन मोस्टली जो है वो वसीम भाई चेज इसलिए करना चाहते हैं कि विकेट जो है सेकंड टाइम दैट अंडरलाइट कम्स ऑन टू द बैट मोर नाइसली। नॉकआउट में रन ऑन द बोर्ड इज ऑलवेज गुड, बट हर एक को ये पता है कि यू फैक्टर विल बी देयर। प्लस दिस इज गोइंग टू बी अ हाई स्कोरिंग गेम एज नासिर हुसैन सेड। ये कंसेप्ट चेंज हो गया वसीम भाई। हमारे ज़माने में था ना कि बड़ा मैच है, मेजर मैच है, डिसाइडर है, रन ऑन द बोर्ड विल बी डिफिकल्ट, सेकंड टाइम हाथ पैर कांपेंगे आप ऑलमोस्ट। आई थिंक इससे इवन इन वन डेज भी अब टीमें कोशिश करती हैं कि आप टॉस जीतो, अगले को अंदर डालो, गेट द टारगेट एंड वी नो हाउ टू गेट दैट। तो सर भी ये भी वजह है शायद के रिसोर्सेज ऐसे हैं टीमों के बैटिंग। 10वें नंबर तक पहले ये होता था कि आप यू ट्राइंग टू से दैट 6 मुझे बैटिंग नहीं आती थी। आप वो बात सुना ना, बट ओवरऑल बेस्ट रिस्पॉन्स टू व्हाट मकाम ने सेड वाज द सीरीज। अगर क्लोज अप दोबारा बच्चों से कहेंगे ना आप क्या कहना मुझे बैटिंग नहीं आती थी। यार मैं फिर आगा बैठा बन जाएंगे, मैं आपको फिर लॉर्ड्स ले जाऊंगा, फिर आप कहेंगे नहीं आप मेलबर्न ले जाना, मेलबर्न ले जा सकता हूँ। मेलबर्न बताया ना वीकेंड पूरा 2 मैचेस इंडिया के गेम्स ऑस्ट्रेलिया के, बैटिंग से तो आए, बॉलिंग तो मैं भूल भाल गया मैं क्या हुआ था, बैटिंग तो मुझे भी याद है। क्या बात है वो बताया ना जो नाम नहीं आपके पास अभी मेरा टॉप का टाइम पोस्ट मैच में इसके ऊपर ये अच्छा बात ही याद रखना, पोस्ट मैच के ऊपर इसके ऊपर जरूर बात की। I also have a very funny story about one of our cricketers, but I will share it after the post match we'll get it. इससे ये होगा कि लोग जो व्यूअर्स हैं ये जाएंगे नहीं कहीं, they'll come back. स्मार्ट थिंकिंग। ये आपने क्या कहा था आज नसीब, आपने कहा था the greatest of all great ideas, so the great idea is the history of great ideas. Yeah, and Waqar got another one earlier today as well. We were talking about that. You see, pressure, semi-final, knockout, and just अभी वकार ने कहा कि ये बहुत सारा mindset change हो गया. But do you, between the two teams, दोनों का तज़किया करते हुए, which team would be okay if they have to bat first and put up a big total? Between the two, I think दोनों टीमें काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, उनके कप्तान काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, तो प्रॉब्ली टीम मीटिंग में अपने लड़कों का होगा to don't bother about toss. If you win it, fair enough. If you don't, good, fair enough again. So वो टॉस अब आपकी वापस नहीं है. So as a captain आप सिर्फ उनको मोटिवेट कर सकते हो कि either way, चाहे बैटिंग आए चाहे बॉलिंग आए, we'll try to win this one. If we bat first, we'll try to get 15 to 20 run extra. And इस pitch पे हो सकते हैं जो नासिर ने रिपोर्ट दी, although this easily, if ICC is listening, this easily is
the worst pitch reports I've heard in the last 40 years. I don't want to know where the batsman is strong. I want to know how his pitch going to behave. He is separate the That makes sense. Now, Misbah, we've seen England, वो chase कर रहे हो या target put up कर रहे हो, वो 10 रन 10.5 रन की average पे खेलते हैं. उनको कोई tension नहीं है, कोई फिक्र नहीं है. And that makes the job for the New Zealand bowlers, it's been cut out. They know exactly. बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी के लिए मुश्किल है, बट आई थिंक न्यूजीलैंड बॉलर्स आर गुड इनफ, प्रोफेशनल हैं और बहुत जिस तरह पहले में डिसिप्लिन बॉलिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान. सो आई थिंक टफ टाइम दे सकते हैं इंग्लैंड. दे कैन गिव टफ टाइम. अब हमें पता चल जाएगा कि कौन पहले क्या करेगा, क्योंकि हम आपको लेके जा रहे हैं बराह रास्त अबू धाबी, जहाँ दोनों कप्तान तैयार हैं. एंड इट्स टाइम फॉर द टॉस. जी हाँ दोस्तों, खबर अबू धाबी से है कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है और मैंने जो कहा था इसीलिए 15 में था. आप हारने को बाद में इतनी जब इंजर्ड हुआ है, हारने को आप हार नहीं सकते. इंग्लैंड में लाया होता है वहाँ पे क्वेश्चन किया ये मेरे टीमों में नजर डालने से और पहले आ रही है आपकी टीम में. हमने बात ही नहीं की कि पीछे जो कुछ है वहाँ पर इंग्लैंड की टीम में लिविंगस्टन, बलान, इतने सारे बैट्समैन फील्डिंग और उनके ऊपर कैसे टैक करते बात ही नहीं. बड़े अच्छे तक नंबर 1 बैट्समैन रहा है. मॉर्गन, इसके बारे में हमने थोड़ी बात की. थोड़ा बहुत प्रेशर आता है. लीज 1 बैट्समैन जो बड़े मौकों पर आके जबरदस्त इनिंग्स खेलता है, टेस्ट करता है. जैसे रॉय के गाने से तीन नहीं लगी उनकी बैटिंग बैटिंग. आई नो दैट स्टिल वेरी लो, बट ऐसा लगता है दैट्स अ बिग इम्पैक्ट ऊपर से. आई थिंक इस तरह नीचे उनकी जो डेथ देते हैं नीचे तक उनके पास वो पावर है ऐसे बैट्समैन न्यूजीलैंड पे आ जाते हैं. न्यूजीलैंड आज की एक कॉम्बिनेशन सबसे अच्छी चीज़ न्यूजीलैंड की है कि उन्होंने जितनी भी यहाँ पे कंडीशन थी उनको लॉक बहुत अच्छा किया. प्लानिंग की टीचिंग बहुत अच्छी है. एंड अगेन मार्टिन गुप्टिल और जो मिचेल हैं दे विल बी द की फॉर देम. और उसके बाद केन विलियम्स का हमेशा एक एंकर रोल प्ले करते हैं बिग मैच में. प्रेशर ऑन हिम. फॉर्म में अभी तक हमें जो फॉर्म में देखा है फिलिप्स और न्यूटन को लास्ट मैच जिस तरीके से उन्होंने खेला दे हैव सम कॉन्फिडेंस. Plus they had four Saudi Saudi sandmen. So they are very fine team, and they will try to restrict England under something about and they have that capacity. And it's going to be especially this game is for me. England to batting versus New Zealand. But this one, what kind of tools do they have now that they both batting from there? I think England trying to at least 180 something. Because हमने पहले भी देखा है कि इंग्लैंड का ये कपल जोन उनकी बॉलिंग कंसीड करती है. आप यहाँ पे देखा कि उन्होंने लास्ट 4 ओवर 10 रन से ऊपर उनको होते हैं नॉर्मल. That is something which they are worried about. They are happy to show अब थोड़ा सा वो कंफर्ट जोन के बारे में. और मेरे ख्याल में ये मैच या 2 डिफरेंट डिसिप्लिन की वजह से बन गई.
All right, the discipline from one side, aggression from the other. With that, we take you to the game. We will see you on the other side of the game. Keep watching the pavilion. Welcome to the pavilion. मैं हूं कप्तान आप देख रहे हैं ये स्पोर्ट्स एंड टेन को और साथ कंटिन्यू कवरेज ऑफ आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप और अबू धाबी से खबर ये है कि टीवी से न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल जीत लिया है। इंग्लैंड अब वापस हीथ्रो या gatwick की तरफ रवाना और न्यूजीलैंड prepares itself for a final clash इसका सबसे पहला टी20 का फाइनल की तारीख में। Congratulations to the New Zealand fans and the New Zealand team। ये जरा मैच समझ कर नजर डालते हैं कि किस तरह ये मैच हुआ आज का। इंग्लैंड ने आज पहले बैटिंग की न्यूजीलैंड के लिए टॉस जीतकर इंग्लैंड को बैटिंग की दावत दी। 164 रन 4 विकेटों के नुकसान पर और लग रहा था कि मुश्किल में होगा नईम अली की बेहतरीन शानदार इनिंग्स 51 रन के दौरान 41 एंड there you have it. Nishan Talki winning so everybody contributing there and doing really well. जवाब में एक टाइम तक भी लग रहा था बल्कि कुछ क्रिकेट के बड़े पंडित का कहना यह था 2 विकेटों के गिरने के बाद मैच तकरीबन खत्म हो गया है लेकिन ये जवाब ना दे सके कि किसके हक में खत्म हुआ है। गोल से शुरू में 13 रन की गिरने मिचेल देयर 72 on they also produced a special innings and then Neesham bringing it home with those big shots. Now, of course, Livingston goes to Russell also taking a wicket, but it was Chris Jordan's over. Go over to England का सबसे महंगा ओवर रहा है इस टी20 वर्ल्ड कप में। 23 रन लिए जहाँ मुझे लगता है कि मैच का फैसला हुआ था दोस्तों। ये सूरत हाल न्यूजीलैंड क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, their first ever T20 finals. The pain of Lords must be diminishing as the fans and the team celebrate. Congratulations. With me in the pavilion to talk about this fantastic win for New Zealand, our Pakistani legend and superstar, the Sultan of Swing, the mighty miracle man himself, Wasim Akram. The outstanding, nerve-wracking, toe-crushing Waqar Younis. The cool, the calm, the composed, and with a very unique sense of humor, Dinesh Paula. And the young and dashing Bahamas. Well, gentlemen, what a game of cricket. You were especially told 30 to 2 game बड़ा बच्चा हो गया वो मैच खत्म हो गया। संडे को जब स्कोर कार्ड चल रहा था तो आप मेरी तरफ देख सकते हैं। आपने आप ऐसे को पहले तो आपने कहा कि आपको किसी ने शायद नहीं पता कि किसी ने आपको बोला है 13 पे 2 मैच खत्म हो गया। बड़े क्रिकेट में बहुत बड़े मैंने सुना आपको सुना आपने congratulations. Yeah, I'm so happy for New Zealand, man. What a game, what a win. Obviously, lost started a bit. Trying to keep down, bowling की और पाकिस्तान को जबरदस्त bowling की मतलब ने सिर्फ 24 गेंदों को वापस किया है and then बेस को ओपन कराया मिडिल ऑर्डर में सैम करने को लेके आए। ओवरऑल आई थिंक इट्स karma also very good karma. इंग्लैंड के साथ ठीक हुआ तो पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए बहुत चाहते हैं जैसे आउट बॉलिंग न्यूजीलैंड ने भी किया है बट आई वांट न्यूजीलैंड टू डू दिस रात का तो जाते हैं बट क्या है न्यूजीलैंड को भेज देगा क्यों आई हैव नो आईडिया इट वाज जस्ट अ गट फील आई थिंक गुड वर्क आई थिंक दो बच्चे भी न्यूजीलैंड की होनी और
होने के बावजूद जो पार्टनरशिप लगी है उन दोनों की what
okay. I got out clean. You dudes ain't gonna have no more triads coming after me. We ain't gonna have anyone to sell super weapons to either, but hey-ho! Who's next? I'm picking up Devin Weston so we can have some fun with him. Now don't worry, I won't get started till we're all together. Not properly, at least. Hey, unless you got news from the Foundry team, I don't want to be disturbed. Did you not fucking see me? Enemy operative in the vicinity! Come out! Don't let him get to DW! I'm here for you! I'll find you! Where are you? Damn it! Damn it! You bleed like humans, but I know you're a reptile. Lay down cover fire!
down half your outfit back in town. Take it down. Come out! How much is asshole paying you? I hope it was worth it. Thompson, I'm a walk-in combat situation, assholes. You bleed like humans, but I know you're a reptile. I'm getting kinda bored of killing you, pricks. I'm the definition of SP. I'm the most suspicious person you'll meet. I'm here for you. I'll find you. We got a combat situation. Guard DW. I just put down half your outfit back in town. How much is asshole paying you? I hope it was worth it. Thompson, I'm a walk-in combat situation. Assholes. Damn it! You bleed like humans, but I know you're a reptile. I'm getting kinda bored of killing you, pricks. I'm the definition of SP. I'm the most suspicious person you'll meet. I just put down half your outfit back in town. Damn it! How much is asshole paying you? I hope it was worth it. Hold your lines. Don't let him near DW. Thompson, I'm a walk-in combat situation, asshole.